पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। और अब इस सत्र की और गहराई से समझ पाने के लिए मैं मेरी टेक्निकल टीम को विनती करता हूं कि वे कर्टन रेजर वीडियो हम सबको दिखाएं। May I request technical team to kindly relay the curtain raiser video, please. On religious scriptures, which are true life-guiding scriptures, Ekam Sat Vruddha Bahutavatanti. The scriptures of the world's religions have provided humanity with some of the most sublime and profound insights, spiritual ideals and values that have shaped the moral and spiritual development of humankind. The impact of these scriptures on world cultures is immeasurable. They have shaped the identity of entire communities, provided content to the legal codes, offered them meaning of life, and explained the purpose and destination of life's journey to their countless followers. Today's ready availability of scriptures of every faith and tradition will nurture mutual understanding and respect for the value of all religions. In this session, we will discuss the impact of religious scriptures on our culture and day-to-day life. Thank you very much. And with this, I would now like to request revered Professor Dr. Vishwanath sir to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. I request sir to kindly felicitate and welcome Pandit Vasantrao Gadgil ji. I now request sir to kindly felicitate Dr. S.N. Pathan. Dr. S.N. Pathan sir is being felicitated at the hands of revered Professor Dr. Vishwanath sir. I now request sir to kindly felicitate and welcome Dr. Rahul Bhante Bodhi ji, eminent scholar and thinker and Buddhist monk. A big round of applause, my friends, for Honorable Dr. Rahul Bhante Bodhi ji. I now request sir to kindly felicitate and welcome Honorable Lesson Azadi ji. Thank you very much. I now request sir to kindly felicitate and welcome Honorable Archbishop Felix Machado ji. A big round of applause, my friends, for Honorable Archbishop Felix Machado, Bishop of Vasai. Thank you very much. Thank you very much. I request everyone to kindly accept the chairs. और मित्रों, आइए इस सत्र की शुरुआत मंगल ध्वनि शंख ध्वनि से करते हैं। मैं मेरी टीम को विनती करूंगा कि वे शंख ध्वनि हम सभी को सुनाएं।
Thank you very much. My friends, it's now time when we receive the blessings of all the religious scholars, those who are present on the dais. I would like to request all the scholars, all the dignitaries to kindly give your blessings. We have limited amount of time, so I would like to request all of you to kindly adhere to the time and give your blessings to this noble cause. First and foremost, I would like to request the eminent Sanskrit scholar and founder of Sharada Gyan Peetham, Pandit Vasantrao Gadgeji. Let us put our hands together and welcome with a round of applause Pandit Vasantrao Gadgeji. नमः शिवाय पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कीर्तितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः विश्ववन्द्या विश्वैक्य विश्वकल्याणकारिणी सहस्र वर्षापूर्वी कुरुक्षेत्राच्या धर्मक्षेत्रावर प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला म्हणजे मानवतेला दिलेली 18 अध्याय 700 श्लोकांची भगवद्गीता, त्या भगवद्गीतेपासून महाभारत कालापासून आजपर्यंत भगवान वेदव्यास, सगळे वैदिक ऋषी, भगवान श्रीकृष्ण, ज्ञानेश्वर, आदिशंकराचार्य, गौतम बुद्ध, तुकाराम महाराज आणि तेव्हापासून आजपर्यंत विश्वनाथ कराड, विश्वशांती विश्वविद्यालयाचे संस्थापक, या सर्व विश्वधर्मी महापुरुषांनी जगाला एकच संदेश दिलेला आहे आणि तो आहे सर्वत्र सुखिनः सन्तु. हिंदू धर्मीय, मुसलमान धर्मीय, ख्रिश्चन धर्मीय, सर्व जगातले जे विश्व लोक आहेत त्या सगळ्या विश्वाकरता प्रार्थना आहे सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. जगात कोणी दुःखी असता कामा नये. विश्वैक्य पाहिजे, विश्व धर्माचा झेंडा जगात फडकला पाहिजे, विश्व शांती पाहिजे आणि विश्व कल्याण पाहिजे. ओम शांती शांती शांती. ओम नमः शिवाय. गो शांती पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोधनयः शान्तिः पारसमतयः शान्तिर्विश्ववेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं गो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जगो यथा समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः पुरपरयाज्ञो गायन्नः पशुमियः विषवानिरेव सविदर्दुरिता निपना शुभा यद्भदरान्नन्न अशुभा. ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु. Thank you very much. I now request the Islamic scholar, Professor Dr. S.N. Pathan sir, to kindly give his blessings.
अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब ये है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, और ये काम पूरा करने वाला अल्लाह ही है, क्योंकि वो बहुत रहमत वाला है। हमारे आदरणीय विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, सभी धर्म के स्कॉलर्स, जिसे हम कहेंगे कि भाई रिलीजियस लीडर्स, हमारे आज़ादी साहब है, भावी धर्म के बंते साहब है, राहुल बंती जी, पंडित वसंतराव गाडगिरी साहब है हिंदू धर्म के, और हमारे मचाड़ो साहब है जू धर्म के। मुझे आज बहुत खुशी होती है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पे अपने अपनी जो किताब है धर्म की, उस किताब पढ़कर ये प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ साहब ने जो विश्व शांति का यज्ञ यानी काम, विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ साहब ने जो काम किया, उसको दुआ देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ऐतिहासिक घटना है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बात अल्लाह के तरफ से है, और अल्लाह जो चाहते वही होता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 1400 साल पहले सऊदी अरेबिया के धरती पर जो अनाचार हुआ, मानवता की जो हत्या होने लगी, यानी यहाँ तक कि लोग लड़की को जिंदा गाड़ने लगे, 24 घंटे शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, और कभी कभी तो अपनी बीबी को भी जुए में लगा देते, और फिर जो मालिक होता था वो उसके बीबी को लेके उसके सामने लेकर ऐसा खींचते लेकर जाता था। इतनी बुरी हालत मानवता की हो गई थी वहां पे। लोग दिन रात ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो वहां पे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब वहां के खासकर लड़कियों को लेकर नाचते थे, क्या क्या करते थे। तो जैसे लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में कि जब जब धरती पे अनाचार होता है तो ईश्वर अवतार लेता है, तद्युत्थानाय संभवामि युगे युगे, या किसी के जरिए मैसेज देता है, संदेश देता है। तो ये सब हालात देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बेचैन होते थे, दुखी होते थे, और वो फिर वहां पे जो एक केव है, गुहा हीरा पर्वत नाम की, मुझे सौभाग्य मिला उस गुहा में जाके देखने का। वो प्रोफेट मोहम्मद वो वहाँ पे जाते थे, और जिसे हम कहते हैं नामस्मरण, यानी जिक्र, अल्लाह का जिक्र करते थे, जप करते थे, दिन रात करते थे। कब रात होती थी पता नहीं है, 2-2 दिन वहाँ पे बैठते थे और अल्लाह से दुआ मांगते थे कि अल्लाह ये क्या चल रहा है, ये हम देख नहीं सकते। और इसी वक्त फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इन्होंने एक मैसेज लाया और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, मैं अल्लाह ने भेजा हुआ मैसेज आपको देना चाहता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपने लगे। वो बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो थोड़ा अनानियत में हूँ, लेकिन ये तो अल्लाह बोल रहे हैं। और फिर वो जो उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो बात की, उसका नाम है पवित्र कुरान मजीद, या ये कुरान मजहब। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में इतनी तकलीफ उठा के ये इस्लाम को आम किया। मैं सिर्फ इस्लाम की 5 इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल्स है जिस पर इस्लाम खड़ा है वही बात करता हूँ। पहले तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ईश्वर एक है, अद्वैत जिसे हम कहते हैं, वही अंतिम सत्य अल्लाह है, और वही अल्लाह की अपने इबादत करना चाहिए। तो दूसरा तत्व है कि नमाज, मैं बाद में कहूँगा, प्रोफेसर कराड़ साहब के इजाजत से, अभी नहीं है। नमाज यानी जब पैगंबर साहब को मेराज हो गई, तो पैगंबर साहब जब धरती पे आने लगे, तो पैगंबर साहब ने अल्लाह से कहा कि मेरे भाइयों को कुछ ना कुछ मुझे लेके जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ दे दो।
तो अल्लाह ने आवाज आ गई कि आप लेकर जाओ नमाज और ये 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। मेरे भाइयों, यहाँ बैठे स्कॉलर, आप मैं नमाज के बारे में बाद में बोलूँगा। नमाज ये जो 1400 साल पहले धरती में मुसलमानों को मिली, उसके पहले 3500 साल पहले योगा के रूप से ये धरती पे आई है। वही नमाज का सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं 5 वक्त। और उसके बाद में रोजा, यानी हर मजहब में रोजा है। महीने में एक महीना, साल में तुम 11 महीने अपने जिंदगी के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन 1 महीना ये ईश्वर की इबादत, अल्लाह की इबादत करने के लिए खर्च करो, उसे कहते हैं रोजा। और तीसरा है जकात। और जकात यानी जो आपके पास जो अल्लाह ने दिया है वो सब अल्लाह का है, उसमें से कम 2.5% रकम दान करके लोगों को दे दो। और 5वां है हज। हज यानी जो इंटरनेशनल पिलग्रिमेज है काबा, जैसे कि हम लोग हिंदू लोग भाई मानते हैं कि काशी है, वैसा हज यानी आप काबा में जाओ और वहाँ जो काबा जो अल्लाह का घर है उसको तवाफ यानी प्रदक्षिणा करो। यही इस्लाम की 5 तत्व है। और यही बात काशी में भी हो रही है। यहाँ भी हिंदू भाई समझते हैं कि भाई ये और इसीलिए तो प्रोफेसर कराड़ साहब यहाँ पे आए और यहाँ से ये मैसेज दिया जा रहा है। और इसका यही मतलब है कि एक ही सत्य है, ईश्वर है, और उसको लोगों ने नाम अलग अलग दिए हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, परब्रह्म कहता है, राम कहता है, रहीम कहता है। तो मेरे भाइयों, ये जो किताब है, पवित्र किताब कुरान, ये पूरी दुनिया में एक ही किताब है। हो गया 1 मिनट में, मुझे पढ़ना है। उसमें जेर जबर का कोई फर्क नहीं है। आप कहाँ भी जाओ धरती पे, कोई भी जगह पे कुरान में एक भी लफ्ज का फर्क नहीं किसने किया और नहीं कर सकता। और लाखों लोगों के वो मुंह ज़बान है, जिसे हाफिज कहते हैं। मैं बस ज़्यादा बोल दिया। पहले मैं एक आपके लिए, कराड़ साहब के लिए और ये प्रोग्राम के लिए एक कुरान शरीफ का मैं सूरा पढ़ता हूँ। वो पहला सूरा है और उसका थोड़ा सा मीनिंग बता के 1-2 मिनट में दुआ करूँगा, बात खत्म हो गई। वो पहला सूरा है, उसे कहते हैं सूरे फातिहा। अब कुरान शरीफ खोलने के बाद में आपको पहला सूरा दिखेगा, सूरे फातिहा, जो इस आयत मक्के में वही बोलते हैं उसे कि वो अल्लाह की तरफ से आ गई। हाँ, ये सूरा मैं पढ़ रहा हूँ अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। भाइयों, इसका मतलब ऐसा है कि मैं ये अल्लाह, मैं तू सबसे बड़ा रहमत वाला है और सब खुफियों का तू मालिक है, सारे जहान का मालिक है, बहुत रहमत वाला है। तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता मुझे भी नहीं, सब लोगों को, दुनिया के सब लोगों को तू सीधा रास्ता दिखा। तू मुझ पे रहमत कर, सिर्फ मुझ पर नहीं, तू दुनिया के जितने भी लोग हैं उन पर, सब पर तू रहमत कर। और यही मैसेज मैं समझता हूँ कि हमारा जो पसायदा ने ज्ञानेश्वर मौली का, उसमें यही दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान शरीफ का पहला जो सूरा है, सूरे फातिहा, ये पसायदाना और ये एक ही है, मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। थैंक यू, मैं 1 मिनट में थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह प्रोफेसर, मैं बोलूँगा, उसके पीछे आप आमीन बोलो, बस हो गया। क्योंकि सामुदायिक दुआ अल्लाह को मंजूर हो जाती है, अल्लाह मंजूर कर देते हैं। हाँ, तो आप आमीन बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, यहाँ पे जो काम कराड़ साहब ने ये विश्व शांति केंद्र के जरिए शुरू किया है कि सारे अमन में, दुनिया में शांति हो, भाईचारा हो, मानवता की हत्या न हो और लोग एक दूसरे से भाईचारे से रहे, उसको ये दुनिया में तू फैला दे अल्लाह। आमीन बोलो आप। या अल्लाह, ये जो काम कराड़ साहब कर रहे हैं उसमें बरकत अता फरमा, उनको लंबी उम्र अता फरमा, उनके जरिए ये जो भारत का संदेश पूरे दुनिया में जाने दे और भारत विश्वगुरु करके भारत का नाम पूरे दुनिया में होने दो। आमीन। बस मैं यहाँ पे मेरी बात खत्म। Thank you very much. I now request the
Honorable Archbishop Felix Machado to kindly give his blessings. चलो विश्वशांतीचा प्रदाता परमेश्वर याला मी नमन करतो, वंदन करतो आणि विश्वशांतीचे प्रणेते आमचे आदरणीय डॉक्टर कराड यांना मी नमस्कार करतो. बंधूंनो, मी 2 मिनिटं इंग्लिशमध्ये बोलतो आणि मग खाली बसतो. Cultivation of inner peace is indispensable to building world peace. Let us not forget that peace is born in the heart of a person. One can hardly bring peace in society, in the world, if there is no peace within oneself. Cultivation of inner peace is indispensable if there is to be peace around. Second point, peace seeks the good of one and all. Unless you seek the good of one and all, peace is placed in jeopardy. Respect for rights of every human person is the foundation of peace. The challenge before us is to ensure a globalization in solidarity and a globalization without marginalization. And last point, to build peace in the world needs cooperation of all religions. Peace is not only the result of skillful political and diplomatic negotiations or a compromise between economic interests, but peace depends in a fundamental way upon the one who is absolute God and knows human hearts and guides and directs the steps of all humanity. So religions have an important role to play in establishing lasting peace in society. Religious leaders need to motivate their respective co-religionists in understanding the tenets of their own religious tradition. Religious believers are messengers and artisans of peace, and the human longing for peace is expressed in every religion. If that longing is fundamental and essential to being human, then believers of every religion should support it. That is what we are here for. The absolute God is the source of all peace. May God shower His blessings upon each one of us and all of us as we continue our meeting. Thank you. Thank you very much. I now request the eminent scholar and thinker and Buddhist monk, Honorable Dr. Rahul Bhante Bhotiji, to give his blessings. नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. Today we are gathered here to celebrate and start the prayer, word prayer. May peace, harmony and happiness prevail on over this mother earth. हम यहाँ पर आज जो इकट्ठे हुए, वर्ल्ड पीस कैसी हमारे इस पृथ्वी पर, विश्व में कैसे वो सदा के लिए, हमेशा के लिए बरकरार रहे। आज इस कार्यक्रम के प्रणेता जो डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ जी, इन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी, ऐसी बड़े प्रेस्टिजियस, बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह पर कराड़ सर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ से, इस काशी से, इस वाराणसी से बड़े बड़े महत्वपूर्ण संदेश लोगों के हित, सुख और कल्याण के लिए गए हैं। तथागत भगवान बुद्ध को जो ज्ञान भी मिला, वो वाराणसी के नजदीकी सारनाथ है,
यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पर आता है। वहां पर तथागत भगवान बुद्ध को जो बुद्ध गया में ज्ञान मिला, ज्ञान बुद्ध गया में मिला उन्हें, लेकिन उन्होंने पहला धम्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध यानी धम्म देशना की शुरुआत उन्होंने इस वाराणसी से, यानी वाराणसी काशी उसको लगकर ही सारनाथ है मृगदाय वन, वहां से उन्होंने धम्म देशना की शुरुआत 2650 साल पहले की। और उन दिनों 2650 साल पहले उन्होंने संदेश दिया मानवता को कि आप अपने हृदय के शक्ति को जानो, आप ह्यूमन बीइंग करके पैदा हुए हो, बहुत बड़ी टैलेंट है, बहुत बड़ी शक्ति आप में है, उसे पहचानो, जानो, उसे विकसित करो और विकसित करके उसमें पॉजिटिवनेस जगाकर हर एक व्यक्ति कैसा सुखमय बने, शांतिमय बने, वो अपने आप नहीं बनेगा। हम केवल कहते रहे कि तुम सुखी बनो, ऐसा नहीं होने वाला है। हमें सुख को भी निर्माण करने की शक्ति हम इंसान में है, दुख को भी निर्माण करने की जो कृति इंसान में है। तो ये इंसान जो है यदि वो समझदार हो जाए, अपने ज्ञान को पहचाने, जाने, ज्ञानी बने, तो ज्ञान की वजह से बहुत ऊंचाई तक वो पहुंच सकता है। ज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है। जो बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, बुद्ध का मतलब है ज्ञान। मैं ज्ञान को शरण जाता हूँ, बोधि को शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि जो हम कहते हैं, धम्म का मतलब है द लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉ विच इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीवन। All persons are governed by the universal law. The law is always there. Before our birth, it was there. Now we are living, it is also there. And when we die, after that also the law will be there. But law is everlasting. हम इंसान जो जन्म लेते हैं, कुछ अपने उम्र तक जीते हैं, कुछ समय तक हम जीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन के पहले भी, हमारे जन्म के पहले भी यहाँ पर विश्व का नियम अस्तित्व में रहता है। हमारे जीते जी भी है, जाने के बाद भी है। तथागत भगवान बुद्ध ने विश्व शांति के लिए, सभी के सुख शांति के लिए पंचशील बताया है। क्या है पंचशील का मतलब? मैं उसकी पाली भाषा में कहूंगा, मराठी आपको हिंदी में बताऊंगा। पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसी शपथ लेता हूँ कि मेरे हाथ से किसी भी पशु पक्षी की, प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। ऐसी मैं शपथ लेता हूँ, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। दूसरा है अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। अदिन्न दाना का मतलब मैं किसी की चीज को नहीं चुराऊंगा, जो मेरी नहीं है उसे मैं नहीं ले जाऊंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी से अलिप्त रहूंगा। दूसरे की चीजों की मैं हिफाजत करूंगा, चोरी नहीं, उठा के भगा के नहीं ले जाऊंगा। कितना अच्छा शील है। उसी प्रकार कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी मैं पराई स्त्री को मेरे माता के समान मानूंगा। जो मेरी पत्नी छोड़कर पराई पत्नी है, वो मेरे माता की तरह है, वो मेरे बहन की तरह है, मेरी बेटी की तरह है। मैं उनका सम्मान करूंगा, उनकी इज्जत करूंगा। कोई बलात्कार नहीं करूंगा किसी पर, मैं उसका पालन करूंगा, उन्हें पूरा मैं सुरक्षा संरक्षण दूंगा पराई स्त्री को। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए है कि जो पराया पुरुष है, वो पराया पुरुष मेरे पिता जैसा है, मेरे लड़के जैसा है, मेरे भाई जैसा है, मैं कभी बुरी नजर से उसे नहीं देखूंगी। तो ये है तीसरा शील। चौथा मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मेरे वाणी से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे वाणी से किसी की निंदा टीका नहीं करूंगा, मैं कभी मेरे वाणी से गाली गलौच नहीं करूंगा, मेरे वाणी से मैं सुख शांति निर्माण हो ऐसी ही बात मैं करूंगा। मेरे वाणी का दुरुपयोग नहीं करूंगा, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई किसी की टीका नहीं। तो मेरे वाणी के प्रति मैं संयम बरतूंगा, शील का पालन करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा यानी बौद्ध प्रार्थना है। और बाद में है सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा, नशीले पदार्थों का मैं सेवन नहीं करूंगा। गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स आदि नशीली पदार्थ जो हमें हमारे मन को बहका देती है, भ्रमा देती है। और इसी उसके बाद यदि कोई नशा करने वाला आदमी झूठ भी बोलने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, क्योंकि नशे में समझता नहीं हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि नशा करने से दूर रहो,
उससे अलिप्त रहो, हमेशा अपने मन को जानो और हमेशा लोगों का कल्याण हो ऐसा काम करो। तो ये जो पंचशील है, जो कोई पंचशील का पालन करता है उसे सुख शांति यश वैभव वर्तमान जीवन में मिलता है, भावी जीवन में। और जो कोई तोड़ता है, किसी ने तोड़ दिया, कोई झूठ बोलने लगा, मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा, तो उसका परिणाम उस आदमी को दुख भोगने पड़ता है, उसके परिवार को, उस आदमी को, उस समाज को दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले और पंचशील, यानी ये जो पंचशील है जो मैंने अभी बताया, हमेशा ये पंचशील को याद किया जाता है कि मैं इसका कड़ाई से पालन करूंगा, क्योंकि हम पालन करेंगे तो सुख शांति आएंगी। हम तोड़ेंगे, मारेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, फिर मतलब बकवास करेंगे, गाली गलौज करेंगे, कहाँ शांति रहेगी? कौन शांति लाएगा फिर? तो शांति हमारे अपने हाथ में है। मैं हमारे विश्वनाथ कराड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इन्होंने मौका सभी को दिया। हमेशा इनका हृदय, मैं तो कहता हूँ मामूली ज्ञानेश्वर जैसा इनका हृदय है कि वो सभी के लिए वो सोचते रहते हैं। और यही एक शक्ति है आप में कि आप सभी को जो मिलाने का जो काम करते हैं, और ये आपका संदेश विश्व में जाएगा। हम सभी लोग उसको विश्व गुरु के नाते जाएगा। आज यहाँ गाडगिल जी बैठते हैं, पठान जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे यहाँ पर कृष्ण धर्म गुरु आर्च बिशप नाकोडो बैठते हैं, और पठान जी हैं वहाँ पर, लोकेश्वरी जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे मित्र लोकेश्वरी जी। और तो मैं सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। Thank you very much. First of all, we now have presence of Acharya Lokesh Muniji and Binni Salinji on stage. I request Revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir to kindly felicitate founder of Ahimsa Vishwabharati, Honorable Acharya Lokesh Muniji. A big round of applause, my friends, for Honorable Acharya Lokesh Muniji. I also request sir to kindly felicitate and welcome Raja Yogini, Dr. Binni Salinji. Madam. Thank you. I request everyone to kindly accept the chairs. And I also request the founder of Ahimsa Vishwabharati, Honorable Acharya Lokesh Muniji, to give his blessings. MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा ये आयोजित आज का वैश्विक कार्यक्रम 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी टू प्रमोट कल्चर ऑफ पीस इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द एर्थ ऑफ G20 वसुधैव कुटुंबकम। सबसे पहले तो मैं हम सबके प्रेरक भाई विश्वनाथ कराड़ जी को इस बात के लिए उनको साधुवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा
जिस समय हमारा महान भारत देश अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और वह देश अब G20 की अध्यक्षता कर रहा है और साथ ही साथ ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। और ऐसे समय में दिव्य काशी, भव्य काशी के इस पवित्र प्रांगण के अंदर ये वैश्विक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, और वह कॉन्फ्रेंस भी जब एक और आज ही उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय बिजनेस समिट शुरू हो रही है, जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं, और दूसरी ओर MIT टीच यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मैं समझता हूं शांति और समृद्धि का बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इसलिए करण साहब एक और बिजनेस समिट हो रही है और दूसरी ओर आपने वसुधैव कुटुंबकम की भावना आधारित ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की इस काशी की पवित्र नगरी में आयोजित किया है। बंधु और बहनों, अभी हमारे मित्र बदंत राहुल मोदी जी ने बहुत सुंदर ढंग से पंचशील की व्याख्या की। मैं समझता हूं सभी धर्मों का सार जो है, मैं जैन दर्शन की ओर से 5 महाव्रत की चर्चा करूं या 12 अनुव्रत की चर्चा करूं, मुझे लगता है हम सबका गोल एक है, केवल रास्ते अलग अलग हैं। और बंधुओं, वास्तविकता तो यह है कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और इसका शुभारंभ के लिए हमें अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का, भावनाओं का आदर करना चाहिए। और जैन दर्शन का यह अनेकांत दर्शन यही बात सिखाता है। मैं समझता हूं अधिक लंबा समय लिए बगैर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं। और रिलीजन एंड फिलोसॉफी, धर्म का अर्थ केवल उपासना ही नहीं है। धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई यह है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। अपेक्षा इस बात की है कि हमारे जीवन के अंदर दूसरा आयाम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म का अवतरण होता है, जब भेद विज्ञान की अनुभूति होती है, तब स्व और पर के बीच की भेद रेखा भी खत्म हो जाती है। और इसलिए हमें धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझेंगे तो मैं समझता हूं उसका तेजस्वी स्वरूप समाज में दिखाई देगा। और अंत में फिलोसॉफी, दर्शन की बात है। दर्शन केवल किताबी दार्शनिक बात ही नहीं, वो हमारे जीवन व्यवहार का हिस्सा बने, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। और ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार होती है। मैं पुनः MIT यूनिवर्सिटी को, यूनेस्को को और आप सबको बहुत बहुत और भाई विश्वनाथ जी करार का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए कि निश्चित रूप से उनके इन प्रयासों वो निरंतर कार्य करते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी जितनी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, हमें तो लगता है कि उनके पास आकर के बैठने से हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। तो सचमुच में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you very much. I now request Rajyogini Dr. Vinny Sari Madam to kindly say a few words and give her blessings. मेरी आंखें भाई राहुल करार को खोज रही है कि विश्वनाथ जी करार खुद ही नहीं, भावी पीढ़ी को भी इतना समर्थ तैयार कर दिया है। जब जब भी राहुल से मैं मिलता हूँ
अभी कुछ दिनों पहले आश्रम आया था, मैं कह सकता हूं कि आपने इतना अद्भुत एक हीरा, एक कोहिनूर तैयार किया है जो आने वाले वर्षों में समाज को और देश को बहुत कुछ देगा। ये मेरी Thank you very much. I now request the Director of Baha'i Academy, Panchani, Honorable Dr. Darshan Azadi ji, to kindly give his blessings. Respected Professor Bharat sir, all the dignitaries and the dais, all the dear friends. Baha'u'llah, the founder of the Baha'i faith, he said, the purpose of religion is to create love and unity. Do not make it the cause of enmity and discord. So when we look at the purpose for which God has sent religion from time to time, we see there is only one underlying principle, and that is love and unity. And I'd like to really congratulate Professor Bharat from the bottom of my heart that he creates such a forum where all the religions come together and discuss how world peace is possible. Baha'u'llah says in his writings that the whole earth is but one country, and mankind its citizens. So we are all the citizens of one country. Language does not make a difference. Religion does not matter. Baha'u'llah was born in 1817, that is 206 years ago. And his teachings focus on how the prophecy of Vasudeva Kutumbakam should be fulfilled in this age. Whereas it was a great thought thousands of years ago and set the road, the map for achieving it, Baha'u'llah says this is the day to achieve it. Therefore, in his holy writings, which are over 100 volumes of books, he wrote them in prison because he was persecuted by the clergy and the politicians of his time in Persia. He has set the details of how the world peace and unity of mankind can be achieved. So universal peace is now a main principle of the coming of Baha'u'llah. He said religion is progressive, it is not static. Right from the time of Lord Krishna to Buddha, to Jesus Christ, to Prophet Muhammad, to the Bab, Baha'u'llah, Zoroaster, these are all parts of a process of unfoldment of divine knowledge for humanity. And all of them have contributed to advancement of civilization. Therefore, for today, Baha'u'llah has brought the message. He says that men and women are equal. This is part of his teachings. He has brought the spiritual solution for economic problems. Baha'u'llah has brought the principle of universal education. We are so delighted that MIT is promoting universal education. And his teachings all are on the direction of achieving global peace. I say one short prayer at the end so that we know exactly. This is the summary of the teachings of Baha'u'llah. Abdul Baha says, oh my God, unite the hearts of thy servants. So we have to unite our hearts with each other. And reveal to them thy great purpose. We understand what is the purpose of God in our creation. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them a strength to serve thee. Service to mankind, service to God. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. The love of God. The role of religion is to create the love of God in the hearts of the people. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. And we now have the presence of Kashi Jathedar and President of Gurudwara Community Varanasi, Honorable Karan Singh Chabrwal ji. I request Revered Pastor Dr. Vishwanath Karat sir to kindly felicitate and welcome him.
Thank you very much. I now request Honorable Karan Singh Chabrawal ji to kindly give his blessings, his message, his blessings. मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। वायर लपेट के आओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सभी विश्व शांति के लिए जहां विश्वनाथ मंदिर में एकत्रित हुए हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाराणसी की ओर से मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि ज्यादातर मनुष्य अपने बारे में सोचता है, लेकिन धर्म क्या सिखाता है कि अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचो। क्योंकि अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन असल में वही मनुष्य है जो अपने साथ दूसरे के बारे में भी सोचे। हमारे सिख धर्म के संस्थापक धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी, उनके बड़े प्यारे वचन थे। अगर उन वचनों को भी, क्योंकि जितने भी हमारे पीर, पैगंबर, अवतार, औलिये संसार में आए हैं, सभी ने विश्व में शांति बनाने के लिए बहुत बड़े यत्न किए हैं। समय समय से जो भी उनकी भूमिका थी उन्होंने निभाया है। और जब गुरु नानक देव महाराज जी आए, उन्होंने भी हमारे समाज को देखा, हमारे देश को देखा। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने समूचे जगत को एक संदेश दिया था। मेरे ख्याल में जेकर उस संदेश को भी हम जेहन में बिठा ले तो बहुत बड़ी मात्रा में विश्व में शांति बन सकती है। क्योंकि अशांति क्यों होती है? जहाँ रोजगार नहीं मिलता, जहाँ मनुष्य भूख से पीड़ित होता है, मकान नहीं मिलता। पर गुरु नानक देव महाराज जी के 3 वर्ड थे। गुरु नानक देव महाराज जी जहां भी जाते थे ना, वो 3 शब्दों का उपयोग जरूर करते थे। पहला वो कहते थे कि किरत करो, क्योंकि आप संसार में आए हो, परमात्मा ने आपको भेजा है, परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, हाथ पांव दिए हैं। तो गुरु नानक देव महाराज जी कहते थे कि आप जहां भी रहते हो आप किरत जरूर करो। किरत बोलते हैं काम को, कि किरत करो, कोई भी किरत करो, क्योंकि किरत कोई भी बड़ी या छोटी नहीं होती। किरत किरत होती है, काम काम होता है। देख लेना करो, जेकर हर मनुष्य किरत करेगा, काम करेगा, तो कभी भी भूख से पीड़ित नहीं हो सकता। क्योंकि देख लेना करो, जो भी समाज में किरत करते हैं, आपने उनको कभी मांगते नहीं देखा होगा। क्योंकि जी गुरु नानक देव महाराज जी का उद्देश्य था कि किरत करो। किरत करने के साथ बोले, दूसरा वचन था उनका नाम जपो। क्योंकि जैसे हम किरत करते हैं, काम करते हैं, परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, ये परमात्मा का दिया हुआ सुख आराम हम संसार में भोगते हैं। इसलिए जितना भी समय मिलता है परमात्मा का नाम जपना चाहिए। क्योंकि शरीर का बल आपको दुनियावी खुराक से मिलेगा, लेकिन जो आत्मिक बल है वो आपको परमात्मा के नाम से मिलेगा। इसलिए गुरु नानक देव महाराज जी बोले थे कि परमात्मा का नाम जपो, जितना भी समय मिलता है परमात्मा का सिमरन करो। और तीसरा उनका वचन था कि बांट सको। क्योंकि जो बांट सकने की प्रथा आप देखते हैं ना, गुरुद्वारों में या और कहीं भी जहाँ लंगर चलते, भंडारे चलते, क्यों चलते हैं? क्योंकि बांट सकने से मनुष्य में प्रेम बढ़ता है। और गुरु नानक देव महाराज जी बोले थे कि आप जो भी कमाते हो उसमें से 10 निकालो और बांट कर सको। इसलिए आप कभी भी जिंदगी में गुरुद्वारे में जाते हो, आप देखते हो कि जहाँ गुरबानी का शब्द चलता है, जहाँ गुरबानी का पाठ होता है, वहाँ साथ साथ
लंगर भी चलता है। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज विश्वनाथ मंदिर में आप विश्व शांति के लिए एकत्रित हुए हैं। सतगुरु साहब महाराज जी अकाल पुरख परमात्मा कृपा करे कि पूरे संसार में शांति बनी रहे, क्योंकि हम सब एक अकाल पुरख परमात्मा के बच्चे हैं। गुरबानी में एक वचन है, उसी के साथ मैं समाप्ति करता हूँ कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन परे को मंदे, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। मैं अपने बचनों के साथ समाप्ति करता हूँ। सभी बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you very much, Honorable Karan Singh Sobrawal ji. I now request Raj Yogini, Dr. Bini Sari Madam, to kindly give her blessings. Sure. Hello, check. नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के इस बहुत विशेष उत्सव पर बहुत सुंदर सा संगम देख रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बहुत ऊंचे लक्ष्य से हमारे आदरणीय भ्राता विश्वनाथ कराट जी ने जो एक कितना सुंदर संगम लिया है, इसमें साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी का इतना सुंदर इंटीग्रेशन देने के लिए कल्चर ऑफ पीस, उसको जो लिया है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा माध्यम बनाया। उसके लिए मल्टी मिलियन कॉन्ग्रेचुलेशंस हम आदरणीय भ्राता विश्वनाथ जी को और उनकी टीम को देना चाहेंगे। ईश्वर ने इतना सुंदर संगम बनाया है। विश्वनाथ कॉरिडोर में भ्राता विश्वनाथ कराट जी ने परमपिता परमात्मा विश्व रक्षक की प्रेरणा से विश्व गुरुओं को मंच पर पधारे हैं और उनकी शोभा बढ़ाइए। क्या चार बातों का सुंदर संगम बना है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय माउंट आबू के हेडक्वार्टर से हमारे 140 कंट्रीज की तरफ से हमारी मुख्य प्रशासिका की ओर से विशेष रूप से आज के दिन पर आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे इस कार्यक्रम में आने का जो मौका मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। Thank you very much all these religious scholars. I request you to kindly accept the chairs in the front. सभी से विनती है कि आगे आके बैठ जाएं। आचार्य लोकेश मुनि जी, everyone is requested to please be seated in the front. I request the stage committee to immediately change the stage and make it ready for the governor's arrival. My friends, in few moments from now we would be witnessing the religious scripture, the true life guiding scriptures, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti, the session 4 of 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. But till the time we receive the Honorable Governor of the state of Kerala, Honorable Shri Arif Mohammad Khan Sahab, तो क्षणी येईपर्यंत मी सर्व वारकऱ्यांना विनंती करतो की ते ज्या ठिकाणी बसलेले आहेत तिथूनच त्यांनी आम्हाला आस्वाद द्यावा।
जागा सोडू नका, जिथे बसले आहात तिथेच बसा, जागा सोडू नका. हा, ओके 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 ओके. रुईकर, आवाज वाढवा. स्टैंड लेके ना खाली यही कवर होगा। फिर अगर अंदर जाएंगे तो बस यही खाली हाउल कवर होगा। इसके बाद फिर आगे से वो दूसरा कैमरा कवर कराना पड़ेगा। तो अंदर से हाँ फ्रंट में लेके गई यहाँ बैक होगा ना। हाँ यहाँ से बैक छोड़ देगा तो
बैक करवा दो। बताइए देख के वहाँ बस हमारी यहाँ से एंट्री हुई है। किधर किधर? अच्छा ठीक है। मंदिर शिवलिंग वाले गर्भ गृह में ना घुसते हैं ना, बाकी चोंगा लगल रहला। request everyone to rise in their seats. मैं सभी से विनती करूंगा कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब पधार रहे हैं। भैया 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 तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करेंगे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ दिस सेशन ऑनरेबल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ केरला, हिज एक्सेलेंसी आवाज असा सुरू राहू द्या। I request all the dignitaries to join hands for the puja.
request His Excellency to kindly proceed for the pujan of all religious scriptures. मंत्र पाठ और पूजन के लिए व्यक्ति आगे आ जाएं। शंख वादन के लिए आगे आगे। तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट शुरू रहे। Thank you very much. I request everyone to rise in their seats for national anthem. मैं सभी से विनती करूंगा कि वे राष्ट्रगीत के लिए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। I request my technical team for national anthem, please. I request everyone to please keep standing. Please keep standing for World Peace Prayer. I request everyone to please fold their hands, close their eyes. मैं सभी से विनती करूंगा कि वे अपने अपने हाथ जोड़ लें, आंखें मूंद लें और सहृदय वर्ल्ड पीस प्रेयर में सम्मिलित हो। ओम नमो
संवेद्या आत्मरूपा देवातूति गणेषु सकलार्थमति प्रकाशो मणेनुवृत्तिदासु अवधारि मोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you very much. I request everyone to kindly accept the chairs. My friends, in this very, very special occasion of 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy, with the theme to promote the culture of peace in the world, based on the ethos of G20, Vasudhaiva Kutumbakam, today we have gathered here for the 4th session of this World Parliament, which has a very, very important topic, which is religious scriptures are the true life-guiding scriptures. Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. And we are really, really honored that in this morning, when we had experienced the divine blessing ceremony, and now in the subsequent session, we have the presence of His Excellency, the Governor of the state of Kerala, Honorable Shri Arif Mohammad Khan Sahab. I request everyone to give a big round of applause to him once again for his august presence. And now, I would like to request revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir, the founder president of MIT World Peace University, to kindly propose the welcome address. Honorable Governor of Kerala, His Excellency, the most learned and scholarly person who has been occupying this very prestigious position, but who is more than that position, who has been a great scholar, thinker, philosopher, a man of science, man of spirituality. How many words I should use, I don't know. कोई पहले जन्म का नाता है। सारे आप जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ बड़े बड़े अधिकारी है सारे, राहुल जी है, हमारे बाकी महानुभाव है, तो मैं मेरे भाई का स्वागत करता हूँ यहाँ पे। मुझे पता है कि मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ पता नहीं, किसने बुलाया ये भी मालूम नहीं, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने तो इस भारतवर्ष में काशी विश्वनाथ के दरबार में ये काशी विश्वनाथ कॉर्नर बनाया, वो शायद हमेशा बुला रहा था ऐसे लगता है। तो इस काशी विश्वनाथ कॉर्नर में जिसे आज से हम बोलना चाहते हैं कि ये रियली व्हाट इट इज, ये ज्ञान का दालन है।
Kashi-Vishwanath Dham, knowledge god of the whole of the world, उसका उद्घाटन, उसका समापन, उसका संदेश to promote the culture of peace in the world, इस बात को पता नहीं ईश्वर की कृपा है, कोई मानता है नहीं मानता है। मेरे गुरु थे बारलिंगे साहब, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। सारे धर्मों का चिंतन इतना सुंदर था। वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, फिलॉसफी के, संस्कृत के, और मुझे हमेशा बोलते कि विश्वनाथ मेरे पीछे मत आओ, मैं ईश्वर को नहीं मानता। देखिए कैसी बात है कि ऐसे समारोह में मैं उनको बोलता कि आप देव न मानने वाले देव मानुष है, ईश्वर न मानने वाले ईश्वरीय मानुष है, कर्मयोगी है। उनकी याद आती है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मेरे भाई साहब जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, आई नो आई एम लिटिल बिट हेजिटेंट टू से एनीथिंग, बट प्रोटोकॉल पालना तो मेरा फर्ज है। मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है गवर्नर साहब से, लेकिन पहले जन्म का नाता है, इसलिए मैं ये बोला। ये एक ऐसी व्यक्ति है कि शायद आप आजकल सारे दूरदर्शन पे भगवत गीता का चिंतन आपने सुना होगा। अयोध्या में हो या किसी और जगह पे हो, तो धर्म ग्रंथ यानी जीवन ग्रंथ और जो गुम्मद बना उनके साक्षी है मेरे भाई। सिर्फ साक्षी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने चिंतन किया था कि इसका सूत्र क्या है, ध्येय क्या है, तो साहब ने मुझे बोला, जैसे एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, अंतिम सत्य एक है, ईश्वर एक है, उसके नाम अलग होंगे, राम, रहीम, जीसस जो भी होगा, लेकिन वो सुझाव देने वाले मेरे भाई, मैं प्रणाम करता हूँ भाई। आई थिंक आप बड़े जानकार लोग हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ। आप लोगों का चिंतन सुना। धर्म ग्रंथ, जीवन ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर लाइफ गाइडिंग स्क्रिप्चर्स, हाउ टू लिव एंड हाउ नॉट टू लिव। कल से हमारे सारे भाइयों ने जो चिंतन रखा, उसे दिल भर गया। और जैसे कि मेरा फर्ज पूरा करने के लिए संकेत मिला है, हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से बोलो, मेरी बड़ी बहन प्रयाग अक्का के माध्यम से बोलो, आप सब लोगों के आशीर्वाद से बोलो, जो भी 45 साल से काम चला, शायद यही संदेशा था। मेरे राहुल बनते मोदी और उनके हमारे दूसरे भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं एक एक को सुन के ऐसे लगता हूँ कि भेद किस बात का है। धर्म के नाम पे इतनी कत्ल और इतनी दुनिया में अभी क्या चालू है आपको ज़्यादा मालूम है। द chaos, confusion, bloodshed, massacre, terrorism is taking place in the name of religion, in the name of some trifle boundaries of nations and very trifle issues. And the most horrifying thing today, friends, remember, I still recollect that it was 25th of March, 2 साल के पहले की बात है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं। मैं लिख रहा था कुछ बैठ के, तो अचानक दूरदर्शन पे न्यूज़ आई, मेरे भारतवासियों, बड़ी महामारी आने वाली है, सावधान रहिएगा। वो डिस्टेंसिंग की बात हुई और घर से बाहर मत निकलना। यू रिमेंबर इट फ्रेंड्स, ऑल द टेम्पल, द चर्चेज, द मॉस्क और गुरुद्वारा जो भी है, सारे बंद हो गए। ऑल द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड and all the presidents and the prime ministers and every person was just behind the doors. क्या कारण है भाई? ये जो भयानक स्थिति हो गई 2 साल से, उसके अपन साक्षी है, including myself. I was hiding behind the doors, and on this background also there have been going on some wars and the conflicts. I don't want to name any nation, but you know it very well. क्या बात है भाई, किसकी घमंड है इसकी? Security Council members also hiding behind the doors, and no one is coming forward to take the responsibility. And they said something like war, where this coronavirus or COVID-19 was emerged, whether it is a man-made one or a natural one,
discussion will go on for hundreds of years. And we will have no answer at all. The chemical weapons, the biological weapons, the other weapons, hydrogen, neutrons, so many things, you know it very well. And we remind ourselves of this Hiroshima, Nagasaki. It is giving a clarion call to the whole world. Be careful, be patient, and be having some understanding of your responsibility of your own religion. Religion, as defined by Swami Vivekananda, has been my mission. You know it, friends, that when the Vivekananda said in 1893 on the 11th September, I repeat this, I don't have any other understanding, but some of these universal words of wisdom spoken by the greatest noble son of India, Mother India, Bharat Mata, गर्व नहीं, स्वाभिमान. धर्म का, बाकी सारी बातों का जिक्र है इसमें, सब याद आती है. अभी हमारे गुरु नानक भाई के नाते जो भाई बोले यहाँ पे, जो चिंतन है उसका, ये ईश्वर की कृपा होती है. बातों से ज्ञान नहीं मिलता, ध्यान करने से ईश्वर की कृपा होने से मिलता है. ये सारी बातें आप जानने वाले हैं, तो उसका चिंतन इस नॉलेज कॉरिडोर में ऐसे लगा कि सिर्फ इसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या धाम बोलने से अच्छा रहेगा कि इसको नॉलेज कॉरिडोर बने, क्योंकि भारत भूमि ज्ञान की भूमि है. ये सद्भाग्य से हुआ है. किसी देश को गलत कहना ठीक नहीं. It is America or China or Russia or Britain, any nation of the world, 192 or 190 nations. Everybody has a proud of their culture, the traditions, the philosophy, the education systems may be different. But the time-tested values, the universal values, the natural laws are common. It cannot differ. This we know it very well, and on this background, especially today, it fills my heart with a sense of pride and pleasure when I see my brother sitting in this most prestigious position. अधिकारी गवर्नर बोल के नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आपको, उनमें जो भाव है, चिंतन है, सारे विश्व के कल्याण की बात होती है. और जब उन्होंने कहा कि इस डोम जो इन नोन ह्यूमन हिस्ट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज इमर्ज्ड एज अ very unique dome in the name of philosopher Saint Dhaneshwar Tukaram, the biggest dome of peace, which is a spiritually oriented scientific laboratory है भाई वो. ध्यान में रखो, the modern science, modern technology, every possible, Google, Facebook, you take any name, any advancement. But what it indicates ultimately, the words of wisdom spoken by Sant Tukaram Maharaj, who says, Anu Renu Thukara, Tuka Akasha Yoda. I am the smallest of the small particle of the universe, but kaisa hai, which can encompass the entire universe, encompassing. वो ईश्वर का रूप है, और ईश्वर भेद नहीं करता. कौन सी धर्म के, कौन सी जाति के, कौन हो, बड़े हो, छोटे हो, किस धर्म के हो, किस जाति के हो, लेकिन संदेश देते हैं. मैंने राहुल जी से बोल रहा था कि possibly when the तथागत गौतम बुद्धा left his house, the palace, the beautiful palace, and the beautiful wife with a child on that occasion, and he speaks in the quest of the knowledge divine, but finally he gives a Panchasheel as his was said in the morning. And the Dhaneshwara's words of wisdom or the Presit, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो, जीसस क्राइस्ट की बात हो, ये सारे धर्म के जो निर्माता है, जिनके नाम पे ये बना, संदेश एक ही है ना, मानवीय जीवन को सुख, समाधान, शांति का मार्ग दिखाना. वो मार्ग शायद महाराष्ट्र ये ज्ञान भूमि है और ये विद्वत जनों की भूमि है. बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ सरस्वती मंदिर बना, वो देव भूमि बोला जाता है. ज्ञान पंडरी से लेके मैंने बोला आळंदी, अयोध्या, अमृतसर और यहाँ काशी में आना, ये संदेश है भाई. और आपको मिलना था और आशीर्वाद देने के लिए मेरे भाई यहाँ आने वाले थे. ये कार्यक्रम है, गर्व से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि अपन नहीं करते. वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर जस्ट हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बाय द ऑलमाइटी. And on this occasion, when we are declaring this as a Vishwa Guru, the Mother India has a role. It has the capacity, the Vedic wisdom, and the modern science. So that's why I said spiritually oriented scientific प्रयोगशाला है.
ये भी वही प्रयोगशाला, लेकिन भारत का एक दायित्व है. India has a duty to play and perform its own religion. Religion is nothing but to perform the duty of oneself. And then Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava, इसका संदेशा है. इसमें आप सब लोगों का साथ और दिशा, शायद नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसे सुझाव उनके मन में क्यों आया पता नहीं, लेकिन वही संदेशा है उनको भी. तो मेरे ख्याल से इस सोच के पीछे चलने का एक आज का मकसद है, इतिहास है, संकल्प है. और इस विश्वनाथ कॉरिडोर में ये संकल्प होना, आप जैसे सारे भाइयों के नाते आशीर्वाद लेना और काम करने की काबिलियत रखने का प्रयास है. हमारे मराठी में सत्य संकल्प का दाता नारायण होता है ऐसे बोला जाता है. वैष्णव परंपरा है. वैष्णव और शिव में भी भेद नहीं है. राम और रे में तो बिल्कुल भेद नहीं है. तथागत गौतम बुद्धा का वचन और ज्ञानेश्वर का चिंतन, 9 सीक्रेट्स प्रकट हुए बोले ऐसा विचार है. कितने सालों, 7 से 30 साल के पहले, 16 साल की उम्र है भाई, 16 साल की. और at that time the revelation of the philosophy of the Bhagavad Gita, again another religious book for the humanity. सारे ग्रंथ, कुरान हो, बाकी सारे हो, ये सभी ग्रंथों का चिंतन उसमें आया है सीधा. और उसके लिए आशीर्वाद की अपेक्षा है. आप आए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. और साहब का स्पेशली आपका भाषण सुनने के लिए आया. I have come here to listen to his views. Thank you so much, friends. Thank you, sir. Thank you very much. And now, as per the traditions, I request revered Dr. Vishwanath Karat, sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, of course, I would like to request sir to felicitate and welcome the Chief Guest of Honor, His Excellency, Honorable Shri Arif Mohammad Khan Sahab, the Governor of the State of Kerala. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause His Excellency, Honorable Shri Arif Mohammad Khan Sahab. I now request sir, a big round of applause, my friends. I request sir now to kindly felicitate and welcome Honorable Dr. Ram Narayan Tatha Shukradev Dwivedi ji. Secretary of Kashi-Vishwanath Parishad Varanasi. A big round of applause for Dr. Shukradev Dwivedi ji. I now request sir to kindly felicitate and welcome the President of Kashi-Vishwanath Parishad Varanasi, Honorable Professor Vasisht Tripathi ji. Vasisht Tripathi ji, the President of Kashi-Vishwanath Parishad. A big round of applause, my friends. I now request sir to kindly felicitate and welcome the eminent scientist, Kiran Kumar ji. A big round of applause, my friends, for Dr. Kiran Kumar ji. It is indeed our good fortune that we have a galaxy of scholars on the stage. Thank you very much. I now request my technical team to kindly relay the curtain raiser video. This session is based on religious scriptures which are true life-guiding scriptures. Ekam Sat Vibhra Bahutavatanti. Scriptures of the world's religions have provided humanity with some of the most sublime and profound insights, spiritual ideals and values that have shaped the moral and spiritual development of humankind. The impact of these scriptures on world cultures is immeasurable. They have shaped the identity of entire communities, provided content to the legal codes, offered them meaning of life, and explained the purpose and destination
of life journey to their countless followers. Today's ready availability of scriptures of every faith and tradition will nurture mutual understanding and respect for the value of all religions. In this session, we will discuss the impact of religious scriptures on our culture and day-to-day life. Thank you very much. And now to understand the views of the distinguished speakers of this session, I like to request the President of Kashi-Vishwanath Parishad, Varanasi, Honorable Professor Vishwashanti ji, to address the gathering. अग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति सम्मानित जानमज्जालयो यस्ते गिरिजापदां वदैव तत्सादभीष्टप्रदं परम सम्माननीय ज्ञानमूर्ति धर्मस्वरूप राज्यपाल महोदय, इस धर्म सभा के संचालक जी एवं मंचस्थ विद्वज्जन आदि, वस्तुतः आज का विषय आप ही के जैसा व्यक्ति है कि धर्म विषयक विचार भी सभा के माध्यम से स्थापित कर रहा है। वास्तविकता में यह धाम ही काशी विश्वनाथ धाम है, जो काली जोड़ पद से कहा जा रहा है। यह धाम है और काशी विश्वनाथ की पुरी भी है। काशी शब्द से आप समझते ही हैं कि वह ज्ञान ही है। काशते प्रकाशते विकासते इति काशी, अगर व्युत्पत्ति करें तो काशी शब्द विज्ञान का ही प्रतिपादन। ये विज्ञान की पुरी में धर्म स्वरूप का विचार होना अत्यधिक आवश्यक था। यह वस्तुतः यह विशेषतः राज्यपाल महोदय को इंगित करूंगा कि यह धर्म स्वरूप ही प्रतीक हुए। किसी भी धर्मों में अगर भेद के अभाव का दर्शन है तो केवल के राज्यपाल में ही देखता आया हूं कि धर्म सब एक है। वस्तुतः धर्म क्या है? धारयति धर्म। हम लोगों की प्रत्येक की अलग अलग उपासना ही है, वही धर्म है जैसा लोक में कहा जा रहा है, और उपलक्षणिक है। वास्तविक में यह धर्म नहीं है। हमारे ऋषियों में प्राचीनतम ऋषि वह कालाद महर्षि हैं, जिन्होंने धर्म की परिभाषा में लिखा, यह तो भ्युदय निश्रेयस सिद्धि धर्म, जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन का अभ्युदय हो, तरक्की होती रहे और अंतिम में सारे दुख का आत्यंतिक निवृत्ति होते हुए परम पुरुष पुरुषार्थ भगवान को प्राप्त कर। यह धर्म में कोई नहीं है कि काबा जाने वाले को धर्म मिलेगा, बद्रीनाथ ज्योतिष में जाने वाले जिसमें जिसकी भावना हो उसका दर्शन करे, उसको उसी प्रकार का धर्म होगा। धर्म में कोई चिन्हित नहीं है, अमुक कार्य ही धर्म है, ये तो विपरीत कार्य। अपितु जो शास्त्रों द्वारा परिचालित हो, चिन्हित हो, अपने अपने संप्रदाय के द्वारा अनुगत हो, वही संप्रदाय अनुकूल वास्तविक धर्म है, और उसी धर्म के ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति संभव है। वह अब यह जीता कहेंगे आपको। तो इस प्रकार से उस धर्म के लिए भी एक ईश्वर भी बंधुओं
सापेक्ष है। ईश्वर के बिना इस धर्म की कोई स्थिति नहीं होगी। अभी पूर्व में एक जगह आया कि बहुत बड़े विद्वान ने कहा ईश्वर तत्व ही नहीं है। वास्तविक में पत्र बहुत बहुत आभार। अब मैं विनती करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी वाराणसी के प्रांत संयोजक डॉक्टर शुभदेव त्रिपाठी जी को कि वे अपने विचार प्रकट करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस सभा के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय, जो अपने इस गुरुतर दायित्व के साथ ही इस राष्ट्र के राष्ट्रीय मनीषा में अपना अग्रणी स्थान रखते हैं। आपकी पहचान एक राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में भी है, जिसको संपूर्ण राष्ट्र, सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोग सहज भाव से आपको स्वीकार करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय मनीषी इस सभा के आयोजक, ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि देवादिदेव महादेव के इस विश्वनाथ धाम में उनके सबसे प्रिय पुत्र खुद विश्वनाथ कराड़ जी, जो इसके आयोजक है, आप हम सबके बीच में विद्यमान हैं। इस मंच पर पद्म भूषण महामहोपाध्याय आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, जो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जिनको अभी हमने सुना है, आप भी उपस्थित हैं। आप तमाम चिंतक और महामनीषी आज इस मंच पर हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस सभा कक्ष में सभी धर्मों के आचार्य, जो सबके लिए पूज्य है, मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और धर्मानुरागी जो प्रतिनिधि रूप में यहाँ अपनी सभा में लोग उपस्थित हैं, आपको भी मैं प्रणाम करते हुए आपका स्वागत, अभिनंदन सबका करते हुए बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है। इस राष्ट्र का भी एक चरित्र है, वो है आध्यात्म। अगर इस देश से आध्यात्म को इस राष्ट्र से अगर थोड़े दिन के लिए भी बाहर कर दे तो कुछ बचता ही नहीं, एकदम खोखला हो जाएगा। और वही आध्यात्म है जो तमाम मत, पंथ, धर्म के अनेकानेक माध्यमों के द्वारा ये प्रकट होता रहता है, वो चैतन्य करता रहता है इस राष्ट्र को। वही हमारी इस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति है। धर्म कोई हो, कोई मत हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, वो सब इस राष्ट्र के कल्याण के लिए ही विचार करते हैं। सनातन धर्म, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, चिर सनातन होते हुए भी नित्य नूतन है। आज से सहस्रों सहस्र वर्ष पूर्व जो बातें कही थी, आज भी लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो सभी बातें उसी रूप में हम स्वीकार करें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, कल्याणमयी बन सकता है, एक दूसरे का पोषक बन सकता है। हम सब आपस में परस्परावलंबी बनकर इस राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। इसी राष्ट्र के मनीषियों ने यह घोषणा की 700 वर्ष पूर्व
अयम नियः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये लघु चित्त वाले लोग इस पर विचार करते हैं। उदार चित्त वाले तो पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण सृष्टि को अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं और ऐसा मानकर व्यवहार करते हैं। ये सनातन की पहचान है। हम सभी भिन्न भिन्न माध्यमों से उपासना कर रहे हैं, लेकिन जाते कहां हैं? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। उसी प्रकार हम सबकी प्रार्थना वो विष्णु, वो नारायण को ही जाती है, एक ईश्वर को जाती है। वो मतपंथ भिन्न हो सकता है, विचार करने का ढंग भिन्न हो सकता है, लेकिन वो सब कल्याणकारी है। यही इस राष्ट्र की मूल भावना है। जी, तो ये जो जिस विषय को मैं कर रहा था, और ये ऐसा सनातन धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कौन उद्घोष कर रहा है? इस राष्ट्र की केंद्रभूत जो विचारधारा है वो यही है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्रसन्न रहे, सभी आनंद में रहे। आज मैं समयाभाव के कारण, क्योंकि महामहिम को सुनने की उत्सुकता हम सबके अंदर है जी, तो ये जो विचार है अपना, ये विचार इस राष्ट्र का मूल भाव है। ये हमें समझना पड़ेगा। हम चाहे किसी मतपंथ को मानने वाले हों, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है और हम सब उसी राष्ट्र के पोषक और पोषित दोनों हैं। उसके द्वारा पोषित भी हैं और उसके हम पोषक भी हैं। हमारे कंधों पर गुरुतर दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि हम उस पर ठीक से विचार करें, हम उसको सोचें। इस सभा का तभी सफलीभूत होगी ये सभा, और ये हमारा संदेश दूर तक जा पाएगा कि हम उसको मन से स्वीकार करें। इस राष्ट्रीय चेतना को, इस राष्ट्र पुरुष को यदि हम ऐसा विचार करेंगे और हम उसकी मर्यादा की रक्षा करेंगे और हम उस दिशा में प्रयास करेंगे, तो आज नहीं तो कल हम उस शिखर पर अवश्य स्थापित होंगे। ये राष्ट्र अवश्य ही विश्व गुरु बनेगा और हम सब के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी। मैं अपनी बात को पूर्ण करते हुए कुछ विषय हैं। सम्मानित अध्यक्ष, भारत के नैयायिक पद्म भूषण पूज्य श्री प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी, जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं और 82 वर्ष की आयु में हैं, मैं उनसे प्रणति पूर्वक निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर करार साहब को दिए जाने वाली उपाधि का घोषित करें। माननीय, बड़े सौभाग्य से आप लोगों के बीच में कहने का यह अवसर प्रदान किया गया है। विश्व शांति विद्या रत्न सम्मान संस्कृत के विशिष्ट अध्ययनरत छात्रों के लिए दिया जाएगा। ये बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि श्री काशी विद्वत परिषद काशी की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार आज यहाँ विश्व शांति विद्या रत्न पुरस्कार रिवर्ड प्रोफेसर विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर को दिया जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इस विचार को
ये सही में हमारा सौभाग्य है कि हम सभी विश्वधर्मी रिवर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर के इस पुरस्कार प्रदान समारोह के आज सहभागी बनेंगे। बट उसके पहले it is important that we understand the views and receive the guidance from His Excellency Honorable Shri Arif Mohammad Khan Sahab. And before we do that, well, first I would like to invite and request the literary and the member of Hindi Salahkar Samiti Nai Delhi, Dr. Yogendra Mishra ji, to read the citation of honor. असितिगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे श्रुतवर्षाधा लेखनी पत्रमुर्वी लिखते अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपितगुणानां ईशपारं नयाति। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रांगण में विश्वनाथ जी के द्वारा अपने इष्ट श्री परमात्मा राम के वशिष्ठ जी गुरु हैं उनके नेतृत्व में श्री विश्वनाथ जी का सादर मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन। भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान विमर्श का जो मूल सूत्र है संगच्छत्वम संवदत्वम समूह मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। हम सब एक मन के हों, एक विचार के हों, वंदन करते हैं मां गंगा के तट पर, स्वागत करते हैं इस कॉरिडोर में। मूलतः यह छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज्य का अभिनंदन है, महाराष्ट्र का अभिनंदन है, लातूर का, रामेश्वर गांव का, ग्रामवासियों का, कुलदैवत का, कुलदेवी का, आनंदी का, इंद्रायणी का, बारकरी भाविकों का, माना गांव का, राजबाग परिवार का, MIT परिवार का, कराड़ कुल का यह सत्कार आए। आज इतिहास आकार ले रहा है, काशी करवट ले रही है। इसी स्थान पर, इसी प्रांगण में श्री रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम का हस्ताक्षर बाबा विश्वनाथ जी ने दिया। रच महेश निज मानस राखा। यही आदि शंकर को अद्वैत सिद्धि मिली। यही संत एकनाथ जी ने भागवत मराठी में भाष्य लिखा। यही रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितली, भगवान रामानंदाचार्य की 12 महाभागवतों को निर्गुण राम और सगुण राम की सिद्धि का ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ। यही बुद्ध को बुद्धत्व मिला। कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास, रसखान और रहीम को, यही नानक को आत्मचेतना की, उदारचेता की सिद्धि प्राप्त हुई। इसी काशी के विश्वेश्वर खंड में नरेंद्र उपाध्याय विवेकानंद अपनी माता भुवनेश्वरी के गर्भ में आए और 8 मास तक इसी काशी में, इसी क्षेत्र में गर्भस्थ रहे। आज कराड़ साहब को श्री काशी विद्वत परिषद द्वारा विश्व शांति विद्या रत्न की उपाधि का मिलना किसी भारत रत्न से कहीं अधिक। इस विश्व शांति ज्ञान यज्ञ की फलश्रुति बाबा विश्वनाथ अपने घर से किसी को खाली नहीं लाते। गाय का गोबर भी कहीं गिरेगा तो जमीन से जब उठेगा तो कम से कम कुछ लेके उठेगा। तो बाबा विश्वनाथ के इस प्रांगण में विश्व शांति विद्या रत्न संत ज्ञानेश्वर, तुकोबा, समर्थ रामदास, संत एकनाथ, गुलावराव महाराज, तुकडोजी महाराज, गजानन महाराज, एक शिल्पकार का, एक शिक्षाविद का, एक चिंतक का, एक दार्शनिक का, एक तपापूर्ण कर्मयोगी का सम्मान देख अभिभूत हैं। राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय नमः। संक्षिप्त में काशी विद्वत परिषद ने यह सम्मान, यह सत्कार, यह उपाधि क्यों दी, उसके पीछे मूल भावना है। मैं संक्षेप में काशी विद्वत परिषद की मूल भावना से आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूं। अज्ञान भांग विध्वंसने विकर्तना निर्विकल्पः जिज्ञासूनां हर्षोत्पत्तिं कुर्वाणः विकृत अविवेक अपाकरणे विशेष विक्रमशालिनः विक्रमादित्यः विघ्न विघाते विघ्नेश इव विचिकित्सा विच्छेदने विचक्षणाः विद्या विनीत विज्ञान स्कंधः अविद्यावितान विदारणे विशेषज्ञः विद्यादाने विद्याधन विधेय इव विधेय विधि विमर्शे विद्याधर इव विपर्यासाय विध्वंसने
विनाता सुनु इव विपश्चित्येषु विभावसुरि श्री विश्वनाथ कराड महोदयाः विजयन्ति तरम। विश्वस्य बोधने दक्षः बोधायन समः सुधीः विततेऽस्मिन् भवे नूनं विश्वनाथो विराजति। प्रोफेसर विश्वधर्मी प्राध्यापक विश्वनाथ कराड, संस्थापक अध्यक्ष MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे भारत। प्रतिगर्वेण प्रदीयते विश्व शांति विद्या रत्न पुरस्कार। काशी विद्वत् परिषद काशी उत्तर प्रदेशस्य कार्यकारिणी समित्याः सर्वे सदस्याः सम्माननीय विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सम्मानितं कृत्वा महान्तं गर्वम् अनुभवित्वा प्रसन्नताम् आवहन्ति। महोदय, विश्व शांति विद्यारत्न पुरस्कार शिक्षा, धर्म, दर्शन, आध्यात्मिकता, विश्व शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, सार्वभौमिक बंधुत्व एवं कतिपय अन्येषां क्षेत्राणां भवतः उत्कृष्ट कार्यं सराहनीयम् अस्ति। श्रीयुत विश्वनाथ महोदयेन प्रायः विगत 40 वर्षैः उच्च गुणवत्तायुक्त उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षेषु छात्राणाम् उन्नयने उद्धर्तुं सहायता कृता। संपूर्ण भारत देशे 4 शीर्ष विश्वविद्यालयेषु एवं अन्येषां कतिपय शैक्षणिक संस्थानेषु संस्थापक रूपेण भवद्भिः शताधिक सहस्र छात्राणां न केवलं भारत देशे अपितु विदेशेऽपि तेषां विशिष्ट स्तर प्राप्त्यर्थम् अवसरं प्रदत्ताः। अयं महोदयाः वारकरी वैष्णव परंपरया संबंधितोस्ति एवं संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, महात्मा कबीर, संत नामदेव, संत रविदास, गोस्वामी तुलसीदास प्रभृतयः एवं अन्येषां भारतस्य महान् संतवर्याणां दार्शनिकानां प्रबल भक्तोस्ति। यही भवति अन्य मनुष्याणां प्रतिभक्ति, विश्वास एवं प्रेमस्य मूल्यं प्रति जागरूकता निर्मिता। भवान् स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिबद्ध अनुयायी अस्ति। अस्य आदर्श शिक्षाधारे भवता अनेक शिक्षण संस्थानेषु नैतिक मूल्याधारे शिक्षा प्रणाली प्रवर्तिता, येन सहस्राधिकं छात्राणां जीवने सकारात्मक परिवर्तनम् अभूत्। माननीय प्रोफेसर कराड, वयं गर्वम् अनुभवामः यत् भवता मानव कल्याणार्थं विज्ञान, धर्म, दर्शन एवं आध्यात्मिकतायाः एकीकरणे अनवरत संवर्धनं कृतम्। इदमपि न पर्याप्तं, तदा भवता आनन्द्याम् इंद्रायणी सरितायाः कूले सुदृढ़ सोपान परंपरा निर्मिता तथा 145 फीट परिमित उच्च गरुड़ स्तंभम निर्माई। अद्वितीय विश्व दर्शनवत् परम मनोहर स्मारकाणां रचना अकार्षेः। श्री विश्व दर्शन देवता मंदिर तथा गत गौतम बुद्ध विहार, विश्वधर्मी श्री राम रहीम मानवता सेतु तथा सर्वोपरि विश्व राजबाग पुण्य नगरे विश्वस्य बृहत्तम तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज शांति शिखरम निर्माई। सा एका आध्यात्मिक केंद्रिता वैज्ञानिक प्रयोगशाला अस्ति। ज्ञाते इतिहासे प्रथम वारं इयान् विशाल स्तूपः न केवलं भव्यतमः स्मारकाः सन्ति अपितु विश्व शांति एवं सद्भावनायाः महान् संदेशम् अपि व्यक्तं कुर्वाणः सुन्दराणि भवनानि सन्ति। श्री काशी विद्वत् परिषदस्य सहस्राधिक वर्षाणाम् इतिहासोऽस्ति एवं अस्मदीये शोधकार्ये वैदिक ज्ञान विज्ञानस्य शोध माध्यमेन विश्व शांति एवं सार्वभौमिक बंधु भावनायाः वर्धापनमस्ति। अस्माकं भारत भूमेः स्वामी विवेकानन्दस्य भविष्यवाण्यानुसारेण विश्वगुरु रूपेण उद्भावनमेव अस्माकं परिषदस्य उद्देश्योऽस्ति। नूनं भावनामपि समान आदर्शानां पुरस्कर्तासि अतः वयं भवते एवं दुर्लभम् अद्वितीयं पुरस्कारं दत्त्वा भवन्तं सम्मान्य मोदादहे। महामहोपाध्याय आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी अध्यक्ष श्री काशी विद्वत् परिषद उत्तर प्रदेश भारत। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये
मैं सभी से विनती करूंगा, माननीय His Excellency and all dignitaries on the dais to please come forward for conferment of this very, very special award, विश्वशांति विद्यारत्न पुरस्कार। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और काशी विश्व परिषद की ओर से जब ये विचार सामने आया तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण की अनुभूति आज हम सभी को यहां मिल रही है। हिज एक्सेलेंसी श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब और उनके हाथों काशी विश्व विद्वत परिषद की ओर से ये सम्मान पुरस्कार आज विश्वधर्मी रिवेरेड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर को दिया जा रहा है। तार लेके सभी इस क्षण का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाए। तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट हो। तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट हो और इस क्षण के हम सभी साक्षीदार बने। विश्व शांति विद्यारत्न पुरस्कार से सम्मानित विश्वधर्मी रिवेयर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर, बहुत ही सुंदर प्रतिमा और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार। भाई भाई सभी से विनती है कि वे अब मंच पर आसीन हो। सभी से अनुरोध है कि वे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। सभी अतिथियों से विनती है कि वे भी मंच पर अब आसीन हो। सर को दूसरा कुर्सी लागे तो वो वाला कुर्सी उठाओ। श्री काशी विश्व परिषद के अध्यक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मान हिज एक्सेलेंसी श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब की हाथों एक महत्वपूर्ण सभी अतिथियों से विनती है कि वे मंच पर आएं। सभी अतिथियों से विनती है कि वे मंच पर आएं। His Excellency is requested to kindly
Once again, let's give a big round of applause to Vishwadharmi, revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir. टाळ्यांचा मोठा कडकडाट होऊ द्या. Thank you. And my friends, now it's time when we hear the views. सभी से अनुरोध है कि आप वे शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें. धन्यवाद. अब इस सत्र में समय हो गया है जब मैं हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब से विनती करूं कि वे अपने विचार मार्गदर्शन हम सभी को दे. पर उससे पहले I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Honorable Shri Arif Mohammad Khan Sahab. While handling such a huge responsibility and sitting in such a prestigious position, he has always been a strong supporter of healthy and non-partial democracy. Our guest today, Shri Arif Mohammad Khan, is a symbol of dedication, leadership and vision. Shri Arif Mohammad Khan is currently serving as Governor of Kerala and the Chancellor of all state universities in Kerala. He is a former Union Minister. He has held several portfolios ranging from energy to civil aviation. Shri Khan started his political career as a student leader. He was the president of the Aligarh Muslim University Students' Union in the year 1973-74 and also its honorary secretary a year earlier in 1972-73. He contested the first Legislative Assembly election from Siana constituency of Bulandshahr on Bharatiya Kranti Dal's party's banner but was defeated. He became a member of the Legislative Assembly of UP in 1977 at the age of just 26. He is the author of the best-selling book of the year 2010, Text and Context, Quran and Contemporary Challenges, published by Rupa and Company. Now, Shri Arif Mohammad Khan is actively involved in writing articles and columns related to Islam and Sufism. He has advocated abolishing the All India Muslim Personal Law Board. We warmly welcome Shri Arif Mohammad Khan. Let's welcome with a big round of applause, my friends. टाळ्यांचा मोठा कडकडाट होऊ द्या as we request and invite His Excellency Honorable Shri Arif Mohammad Khan Sahab to kindly address the gathering. Shri Professor Dr. Vishwanath Karat Sahab, President MIT World Peace University, Pune. सम्मानीय प्रोफेसर श्रद्धेय प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, काशी विद्वत परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष, काशी विद्वत परिषद के सम्मानीय सचिव डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी जी,
हिंदी सलाहकार समिति नई दिल्ली के माननीय सदस्य डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और ISRO के पूर्व चेयरमैन सम्मानीय डॉक्टर AS किरण कुमार, बहन प्रोफेसर स्वाति करार चाटे, सेक्रेटरी मायर्स MIT ग्रुप डॉक्टर मिलिंद पांडे, यहाँ सामने बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति, खास तौर से जिनकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, वो सामने बैठे हुए हैं, और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे धन्यवाद दूं इस आमंत्रण के लिए, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। और यहाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। क्यों है राष्ट्र सर्वोपरि? आदमी सवाल कर सकता है, क्यों? मानवता या और भी बहुत सी बातें हम कह सकते हैं सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि, ये राष्ट्र सर्वोपरि, इस जो मेरी समझ है मैं वो बता रहा हूं कि ये सर्वोपरि इसलिए है कि ये दुनिया, आज आप पूरी दुनिया पे थोड़े से इतिहास पे नजर डालिए, सभ्यताएं और संस्कृतियां परिभाषित हुई हैं। मेरी खाल का रंग क्या है, मैं किस नस्ल से हूं, मैं क्या भाषा बोलता हूं, मेरा संबंध किस फेथ ट्रेडिशन से, यानी मैं उस वो जो भी आप नाम देना चाहें, उसको मैं किस नाम से जानता हूं और अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करता हूं। इंसान अकेले जिंदा नहीं रह सकता, उसको समाज चाहिए, और समाज काहे के लिए चाहिए? ताकि उसके अंदर एकता की शक्ति आ सके। पहले ये शक्ति जरूरी थी, संगठन जरूरी था अपने सर्वाइवल के लिए, हम जिंदा रह सकें, और आज ये एकता की शक्ति जरूरी है ताकि हम समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे जा सकें। तो ये एकता तो इंसान की हमेशा जरूरत रही है। एकता कैसे कायम की जाए? कहा गया मेरा तुम्हारा रंग गोरा है, हमें इकट्ठे होना चाहिए। मेरी तुम्हारी भाषा एक है, हमें इकट्ठे होना चाहिए। हम एक तरीके से इबादत करते हैं, अर्चना करते हैं, हमें एक होना चाहिए। हम एक हो गए। दुनिया, आज की दुनिया जो आप देख रहे हैं, जिसमें बहुधा डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म के लिए स्वीकार्यता पैदा हुई है, इसका इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, और पुराना चाहिए तो 200 साल मान लीजिए। जहां कहा गया कि नहीं, एकता के लिए केवल एक रंग का होना आवश्यक नहीं, केवल एक भाषा बोलने का होना आवश्यक नहीं, केवल एक तरीके से इबादत करना आवश्यक नहीं है। विभिन्न लोगों के बीच भी एकता कायम हो सकती है। पूरी दुनिया में इसका इतिहास 100, 150, 200, बहुत बढ़ा लीजिए तो 200 साल चले जाए। भारत के मनीषियों ने आज से, मतलब हम निश्चित तिथि नहीं जानते हैं, लेकिन 400 साल के ऊपर कोई संदेह नहीं,
जहां 400 साल पहले उन्होंने कह दिया एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। और सिर्फ इतना नहीं कह दिया, ये तो एक ऐसा सूत्र है, आमतौर से इसकी बहुत चर्चा होती। हम भी पुणे में बात कर रहे थे, मेरे मुंह से भी ये बड़ी मेहरबानी है, पर उनकी मेहरबानी इतनी ज्यादा है मेरे ऊपर कि मैं क्या कहूं। तो वो उन्होंने जिक्र कर दिया डॉक्टर करार साहब ने कि मैंने ये कहा। ये तो आमतौर से लोग कहते हैं, ये बात साधारणतया लोगों को मालूम, लेकिन सिर्फ ऋग्वेद में नहीं जहां से ये सूत्र आया, सामवेद में भी। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम। 4000 साल से हमें निश्चित तिथि नहीं मालूम है, लेकिन 4000 साल पे कोई संदेह नहीं है, सब मानते हैं। पृथ्वी सूक्त में मां पृथ्वी से याचना की जा रही है कि हम आपका परिवार हैं, जिसमें हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग हमारी आस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से उन आस्थाओं की हम अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन हम आपका परिवार हैं, आपकी कृपा के लिए हम आपसे याचना कर रहे हैं। हमारे मनीषियों ने इसकी कल्पना 4000 साल पहले की। ये आप इसे जो भी कहना चाहें, आप इसे समझ कहना चाहें, अकल कहना चाहें, बुद्धि कहना चाहें, विजडम कहना चाहें, प्रज्ञा कहना चाहें, ये पाठ हमें आज से हजारों साल पहले पढ़ाया गया। जिसने हमें ये पाठ पढ़ाया, और इस पाठ पढ़ाने का नतीजा क्या हुआ कि हम यहाँ आज हम बाबा विश्वनाथ की नगरी में, आमतौर से क्या, ये तो यहाँ तो सब लोग जानते ही होंगे, माता च पार्वती देवी पिता देवा महेश्वरा, बांधवा मानवा, कहीं कहीं शिव भक्ता भी कहा गया। बांधवा मानवा स्वदेशो भुवन तिरेयम। The whole world, मेरा बाप महादेव है, मेरी मां पार्वती है, और मेरा देश भुवन तिरेयम। तीनों लोग मेरे लिए कोई दूसरा है ही नहीं। जिस देश ने ये पाठ पढ़ाया हो उसे मुझे, मैं उसे सर्वोपरि नहीं मानूंगा, मैं उसी को सर्वोपरि मानूंगा। जिसने मुझे मानवता का ये पाठ पढ़ाया, मुझसे कह दिया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्म। कालड़ी में पैदा होने वाला नौजवान वाराणसी आके शंकराचार्य बना। कैसे बना? यहां सब लोग जानते होंगे, लेकिन दोहराने में कोई बुराई नहीं। चूंकि हमारे यहां एक कल्पना है कि इंसान भूलता है चीजों को। हम यहाँ बैठे हैं, एक अजीब वातावरण, यहां से निकल के सिनेमा हॉल चले जाएं, पूरा मानस बदल जाएगा। इसलिए सुमिरन की जरूरत होती है। शंकराचार्य कैसे बने? बनारस आए, नहाने आए घाट पे, लौट के जा रहे हैं, गलियां संकरी हैं, सामने अद्वैतवाद का प्रणेता, अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश देने वाला, वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, वही मेरे अंदर है। The highest ideal of Sanatan of India is integration of personality, which reconciles the individual to his own self, society, and the supreme spirit.
वो चीज अद्वैतवाद का जो संदेश है, जहां मैं स्वयं अपनी आत्मा के साथ शांति स्थापित कर सकूं, समाज के साथ कर सकूं और उस परमेश्वर के साथ कर सकूं, ये इसी को कहा गया है एकात्मता। तो एकात्मता का संदेश देने वाले शंकर नहा के वापस जा रहे हैं। गली संकरी है, दूसरी तरफ खड़ा हुआ एक उस जमाने में जो कहते थे, नाम लेते थे चंडाल, अपने 5 कुत्तों के साथ खड़ा है। अब संदेश अद्वैतवाद का है, मेरे और तुम्हारे अंदर कोई भेद नहीं है, लेकिन मुंह से निकल गया गच्छे गच्छति, रास्ते से हट जाओ ताकि छू ना जाओ मुझे। वो भी बनारस का चंडाल था। बनारस का चंडाल था। उसने पूछा, महाराज शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं? और शंकर उसके पैरों पे गिर पड़े। शंकर शंकराचार्य हो गए। मनीष पंचकम की रचना उसी वक्त हुई। ब्रह्मेवाहमिदं जगत सकलम चिन्मात्र विस्तार सर्वं चेतद विद्याया निर्गुणाया शेषा मया कल्पितम। जो ये जान गया, अस्य दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मले चंडालोस्तु दुई जोस्तु। जो ये जान गया कि चंडाल हो चाहे द्विज हो, लेकिन सबके अंदर वही एक आत्मा बसती है, वही मेरा गुरु है। चंडालोस्तु द्विजोस्तु गुरु नित्येशा मनीषा मम। और ये शंकर ने पहली बार नहीं कहा। गीता में सिर्फ यही संदेश है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव श्वापाके चा पंडितो समदर्शिना। मेरा भक्त तो वही है जो विद्या और विनय से संपन्न। ब्राह्मण का मतलब यहां जाति नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ब्राह्मण से मतलब यहां स्कॉलर है। विनय और विद्या से भरा हुआ व्यक्ति, गाय हाथी कुत्ता कुत्ते को खाने वाला, जो इनको एक ही दृष्टि से देख सके। अरे भारत की पहचान ही ये, फिर ये मेरे लिए सर्वोपरि क्यों नहीं होगा? भारत, ध्यान रखिएगा, भारत की पहचान, अगर मैं गुरुदेव के शब्दों को इस्तेमाल करूं और मैं उसे फौरन अनुवाद करता हूं। गुरुदेव ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने कहा, इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू इंडिपेंडेंस अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट हर फाउंडेशन इज इन माइंड, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on creating Swaraj for itself. अभी आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, नित नूतन जी, नित नूतन चित पुरातन नित नूतन। डॉक्टर विजेंद्रनाथ सील स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने इसे ही अंग्रेजी में कहा, इंडिया एवर एजिंग नेवर ओल्ड। भारत पुरातन है
लेकिन विरध नहीं है। इसकी उपमा शंकराचार्य की गीता की जो टीका है उसमें आत्मा से की गई, जो न पैदा होती है न मरती, बल्कि अपने आप को नए शरीर में जाने की क्षमता होती है उसके अंदर। तो हम अपनी नई नस्लों के जरिए उस काम को करते हैं कि भारत कभी विरुद्ध नहीं होता। भारत में प्राचीन है, लेकिन उसके साथ एक मृत्युंजयता है, जो अपने आप को लगातार नवीनीकरण करने की जिसके अंदर क्षमता। और ये कब पैदा होती है? आप घरों में देख लीजिए। अगर व्यवहार में सख्ती होती है, जिसे अंग्रेजी में रिजिडिटी कहते हैं, तो परिवार टुकड़े हो जाते हैं। लचक होती है, एक दूसरे को एकोमोडेट करना होता है, परिवार मिलके चलते हैं। अभी अभी आपने इतना सुंदर, इतनी सुंदर दो लाइनें पढ़ी हैं। आकाशात पतितत्वोऽयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेवा नमस्कारम् केशवम प्रीति गच्छति। कहा कि तुम चाहे जिसके नाम से इबादत करो, पहुंचती उस एक को है। और वो एक कौन है? ये बड़ी मजेदार है, बहुत मजेदार बात है। मेरे ख्याल से मैं बहुत डरते डरते बोल रहा हूं, लेकिन मुनि जी सामने बैठे हैं, उनके सामने मुझे इसी के क्या साहब क्या दर्शन दिया, जरा गौर करिए। नाम ही उसको दे दिया अनेकांतवाद। आप एक रास्ता तो बता ही नहीं सकते कि यही एक रास्ता है। जैसे अभी भी कहा, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा शिकागो पार्लियामेंट में, रुचिनाम वैचित्र्या दिव्यकोटिल नानापत्यजाम निर्णामेको गम्यस्त्वंसि पैसा मंडपित। फिर वो जिस तरह विभिन्न नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, हम इंसान भी अपनी अपनी प्रकृति यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति वो करता है जिस प्रकृति पे उसे पैदा किया गया। हम अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हुए टेढ़े मेढ़े सीधे, पर आखिर में जाकर फिर वो तुझे में मिल जाते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जैन बहुत बड़े जैन आचार्य जी, नहीं, बहुत पहले राजा कुमारपाल के साथ जी द्वारका गए। हेमचंद्र आचार्य द्वारका गए और वो इतने विद्वान थे कि कुमारपाल उनसे बहुत प्रभावित था। दरबार में जो दूसरे विद्वान थे वो थोड़ी जलन महसूस करते थे। जब द्वारका गए तो वो बड़े खुश हुए कि अब कुमारपाल आरती करेंगे और ये इन्हें नजदीक में खड़ा करेंगे। अब अगर ये भी आरती करते हैं तो ये अपने रास्ते के थोड़ा अलग जाएंगे उससे, और अगर नहीं करते हैं तो राजा कुमारपाल की नजरों में गिर जाएंगे। वो बड़े खुश थे। लेकिन जब राजा कुमारपाल ने आरती करी, आरती करके और पहले व्यक्ति को जिसको वो थाली उन्होंने पेश की वो आचार्य हेमचंद्र थे। उन्होंने बिल्कुल बहुत ही श्रद्धा के साथ थाली को अपने हाथ में लिया। भव बीजा अंकुर जन्ना रागाद्या क्षेमु पादकायसे ब्रह्मा विष्णु वाहरो जिनो व नमस्तस्मै। मुझे इससे मतलब ही नहीं कि कौन नाम है, ब्रह्म हो, विष्णु हो, शिव हो, जिन हो, मैं वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूं। सर मैंने ऑलरेडी 25 मिनट ले लिए, इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूं और नहीं मैं आपको तो ये भारत
मैं बिल्कुल भी ये कह रहा हूं कि हम बेहतर हैं, नहीं। हमें किसी के बारे में जजमेंट में बैठने का अधिकार नहीं, लेकिन हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति ये है जिसने हमें इसकी इजाजत ही नहीं दी है कि हम किसी को दूसरा समझ सकें। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। इस मानव शरीर में मुझे देव नजर आता है। ये मंदिर है भगवान का, और जिसमें महादेव खुद उसमें स्पिरिट है। तो एक बार अगर मैंने ये मान लिया कि हर किसी के अंदर, स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करूं तो हर किसी के अंदर दिव्य होने की क्षमता, एवरीबडी इज पोटेंशियली डिवाइन, तो फिर मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है आपका रंग गोरा है कि काला है, आप मलयालम बोलते हैं कि तमिल बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं कि अंग्रेजी कि फ्रेंच क्या बोलते हैं, मैं कैसे, मेरे ऊपर क्या फर्क? मुझे तो कहा गया है कि हर एक के अंदर दिव्यता है। दिव्यता है तो मैं तो उसको प्रणाम करूंगा, मैं तो उसका आदर करूंगा, मैं तो उसका सत्कार करूंगा। है कहां वो ब्रह्म? तो हमें बताया गया है कि हर किसी के अंदर वो ब्रह्म मौजूद, अहम की या अज्ञानता की जो परतें हैं उनके नीचे दबा हुआ है। ये जो हमारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई हैं, इनका कारनामा क्या है? हमारे गुरु जी सामने बैठे हैं, मुनि सर, इनका कारनामा क्या है? ये अपने दूसरों को डिसिप्लिन करने के लिए नहीं, दम, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके और उस अहम और उस अज्ञान की परतों को एक एक करके हटाते जाते हैं, तो अंदर छुपा हुआ ब्रह्म उसका प्रकटीकरण हो जाता है। और इसके ये क्षमता हर किसी के अंदर है। मेरी परंपरा मुझे ये बताती, मेरी परंपरा किसी को दूसरा मानने को तैयार नहीं। कहीं दुनिया में हो सकता है, मैं किसी को उसके लिए नहीं कह रहा हूं, अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, तो मैं आपसे सिर्फ विचार करने को कह रहा हूं, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं बस इसे सुनिए, इस पर कुछ एप्रिशिएट मत कीजिए। दुनिया में कहीं पॉसिबल है? पंजाब में अमृतसर है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। हमारे सिख भाइयों के लिए स्वर्ण मंदिर ऐसे ही है जैसे मानिए मुसलमानों के लिए काबा या मक्का या मदीना। भारत में आम तौर से जो धारणा वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, मतलब ये उस तरह का है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज से 500 साल, लगभग 500 साल पहले गुरु अर्जन देव जी, जो खुद इतने बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, उसकी नींव डालने के लिए लाहौर के एक सूफी मियां मीर को बुलाते हैं? ये तो कल्पना कर सकता है? ये वो सनातन दृष्टिकोण है जो हर किसी के अंदर दिव्यता को देखता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, को खरे को बंदे। और हमें गलतफहमी हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने वो 2 लाइनें पढ़ी स्वामी विवेकानंद ने जो कोट की हैं, हम तो मान रहे हैं कि प्रभु हम अपनी प्रकृति के अनुसार टेढ़े मेढ़े सीधे रास्ते लेते हुए आखिरकार आप में ही मिल जाते हैं। वेदांत का स्पष्ट उद्घोषणा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्ये मनसा सहा।
शब्दों की पकड़ में तो उसको लाया ही नहीं जा सकता, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कोई धर्म ग्रंथ हो। ला तुदरिकुहुल अब्सार, वो सबको देखता है, उसे कोई नहीं देख सकता। बेहतरीन, लाजवाब गवर्नर साहब, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, ये वेदांत का की स्पष्ट घोषणा है और इस घोषणा के साथ साथ बिल्कुल यही बात भगवान बुद्ध ने कही। उन्होंने कहा अनक्षर से धर्म से श्रुति का देशना चाका। शब्दों की पकड़ में तो लाया ही नहीं जा सकता। मैं आपका बहुत वक्त ले लिया हूं, एक छोटी सी कहानी सुना के खत्म कर रहा हूं। मैं किसी एक संस्था है लंदन में, उन्होंने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैंने जो मुझे बोलना था, जो सब्जेक्ट था, वो मैं बोला। जब खाने पे गए, मीटिंग खत्म होने के बाद, तो मुझे एकदम से याद आई कोई चीज, और वहां चूंकि इस्लामिक स्कॉलर्स थे, मतलब बड़े स्कॉलर्स थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक रचना की 3 लाइनें याद आ रही हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विचार से ये किसकी रचना हो सकती है। हे प्रभु, मैंने 3 बड़े गुनाह किए, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मेरा पहला बड़ा पाप यह है कि मैंने आपकी प्रशंसा में भजन गाए। आप वो हैं जिसको शब्दों की परिधि में जकड़ा ही नहीं जा सकता। मेरे इस पाप को क्षमा कर दीजिए। मेरा दूसरा बड़ा पाप यह है कि मैं ध्यान लगाकर बैठा, मैंने अपने मन मस्तिष्क में आपकी एक छवि बनाई, और आप वो हैं जिसको छवि दी ही नहीं जा सकती। आपकी उस हस्ती का इनकार किया छवि बनाकर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तीर्थों में ढूंढता हुआ आपको गया, और आप वो हैं जो हर जगह हर वक्त मौजूद। आपकी उस हस्ती का इनकार किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपके ख्याल से ये रचना किसकी हो सकती है? तो तकरीबन सभी जिन्होंने बोला, सबने तो नहीं, जो भी बोले, वो कहा किसी सूफी शायर की है। मैंने कहा महाभारत में अष्टवक्र गीता का चैप्टर इसी प्रार्थना के साथ शुरू होता है। मैं आपसे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा अपनी विरासत को पहचान। आज दुनिया अपनी जरूरत के तहत उस तरफ आ रही है जिसे हम भारतीय जीवन शैली कहते हैं, भारतीय दर्शन कहते हैं, लेकिन वो उनकी जरूरत बन गई है, इसलिए वो बहुता को स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने ऊपर, अपनी संस्कृति पे जितना गर्व करें वो कम, पर हम अपने ऊपर गर्व नहीं कर सकते। हमने उस संदेश को दुनिया में नहीं फैलाया। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उस संस्कृति पर गर्व करने की जरूरत है, गर्व ये नहीं होता है अकेले कि हमने नारा लगा दिया। गर्व ये है कि उसके जो आदर्श हैं, उसके जो मूल्य हैं, उनको आत्मसात करें और उसके अनुसार अपना आचरण करें। आपने इतनी देर मुझे सुना, आपने आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद, जय भारत। आपण आपल्या जागी उभं राहून मुझे आप लोग बैठिए, गायत्री प्लीज बैठिए। शांत, 1 मिनिट शांती।
मुझे बहुत खुशी है कि और मैं विद्वत परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित सेक्रेटरी साहब, उसमें जो और लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय विश्वनाथ करार जी, जिनके बारे में इसलिए नहीं कि मैं इस फंक्शन में बोल रहा हूं, जिनके बारे में मेरा निश्चित मत है कि वो उन्होंने जितनी उनके अंदर क्षमता, जितनी उनकी एनर्जी, जितनी उनकी जो कुछ भी साधन, इस ये व्यक्ति जिसे कहते हैं इस विश्व शांति, उसके लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ और आपने इनको ऑनर किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर विश्वनाथ करार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई से ज्यादा मैं शुभकामनाएं ये देता हूं कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना रखा है कि लोगों के बीच में पुल का बनने का काम करें, करीब लाएं, दूर ना होने दें, वो उसमें कामयाब से कामयाब होते चले जाएं। धन्यवाद। जय टाळ्यांचा मोठा कडकडाट करूया। हम सभी भावुक हैं आपके शब्द सुन के। और इसी के साथ मैं विनती करना चाहूंगा MAEER MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सेक्रेटरी प्रोफेसर स्वाति करार साथी मैडम टू काइंडली प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। Namaskar. I'm really feeling blessed to stand here to propose the vote of thanks to such an eminent personality. I think we all are feeling enlightened. The Honorable Governor of Kerala, Mahamahim, Shri Arif Mohammad Khan Sahab. Sir, I feel you are the embodiment of humanity. Your entire life, what you spoke just now, I think it will be really a guiding force for all who are present here and beyond this, that how do we really attend and understand humanity. We are so grateful to you, sir, for being here and blessing this occasion, and we will really take this forward through all our institutions. On behalf of MIT Group, I really express my gratitude for blessing us, sir. यहाँ पे आज काशी विश्व परिषद के प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी और ऑनरेबल डॉक्टर राम नारायण जी, हम MIT संस्था की ओर से और सभी हमारी जो फैमिली, MIT फैमिली की ओर से, सभी की ओर से हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने डॉक्टर विश्वनाथ करार सर, जो हमारी संस्था के संस्थापक है, आज इस काशी विश्वनाथ धाम में आपने विश्वनाथ करार सर का जो सम्मान किया है, उनके कार्य का जो गौरव किया है, इससे हमारी सबकी एक ऊर्जा बढ़ी है कि हम सब, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेसर जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो इस कार्य को और ऊर्जा से आगे ले जा सके। इसलिए मैं बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद करती हूँ सबकी ओर से। Dr. Kiran Kumar ji, who is present here for today's function. I think this hall itself is a reflection of what our country stands for. When we look around, everyone who is representing, I'll not say religion, but humanity and what India stands for, all the eminent personalities present on this occasion in this hall, this is what our Bharat Mata is. I'm really grateful to everyone who is present here to give this message to the entire world what our country stands for. All the gurus who are present here, who blessed us, and everyone present in the audience, we are grateful to you for being here. The electronic and the press media, all of you are really helping us promote this culture of peace through different mediums. We are grateful to you. Last but not the least, all the Kashi-Vishwanath Dham, all the the officers who really are so helpful to us in organizing this entire event. We are highly grateful. I think this is something really inspirational for everyone
to be present in this such an auspicious place, and it's really inspiring. We are highly grateful to everyone. Thank you. Thank you very much. With this, I request everyone to rise in your seats for national anthem. I request my technical team to kindly read the national. मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। हम 5वें सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूनियन ऑफ साइंस, रिलीजन ऑब्लिक स्पिरिचुअलिटी अलोन विल ब्रिंग द पीस एंड हार्मनी टू मैनकाइंड। I request everyone to kindly accept the chairs, and I would like to invite Honorable Acharya Lokesh Muniji, Honorable Dr. Lobsang Sangye ji, Honorable Firoz Bakht Ahmed ji, Honorable Archbishop Felix Machado ji, Guruji Ben Bhikkhu Sanghasena ji, Kiran Kumar ji, to kindly stay on stage. सभी से विनंती है की वे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। सर्व वारकऱ्यांना विनंती की त्यांनी आपापल्या जागी बसून घ्यावं। Thank you, Professor Gautam ji. Dear audience, we are right away starting session 5. The theme of the session would be Union of Science and Religion, Spirituality alone will bring peace to mankind. May I please request Honorable Acharya Lokesh Muniji, Honorable Dr. Lobsang Sangye ji, Honorable Dr. Firoz Bakht Ahmed ji, Honorable Archbishop Felix Machado ji, Honorable Guruji Ben Bhikkhu Sanghasena ji, and the chairman of the session, Honorable Dr. A.S. Kiran Kumar ji, to kindly occupy the seats. I request all the participants to be seated in the hall. सर्वांना विनंती आहे की हॉलमध्ये कृपया बसून घ्यावे। आपण लगेचच या सेशनला सुरू करणार आहोत। Union of science and religion, spirituality alone will bring peace and harmony to the mankind. I quote Swami Vivekananda. Is the theme of the session. We are here for the 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy,
to promote culture of peace in the world based on the ethos of G20, Vasudhaiva Kutumbakam. We had mesmerizing session today of divine blessings, followed by a session, Ekam Sa Vipra Bodha Vadanti. And now, the very ethos of a culture, union of science, religion, spirituality alone will bring peace and harmony to mankind. We have with us distinguished speakers for the session, Honorable Dr. A.S. Kumar, former Secretary, Department of Space, Chairman of ISRO. We also have Honorable Guruji Vaina Bhikkhu Sankar Senaji, Founder President, Mahabodhi International Meditation Center, Leh Ladakh. We have Honorable Archbishop Felix Machedoji, Bishop of Vasai, Bishop House, Thane. We have Honorable Speaker Dr. Firoz Bakht Ahmed Ji, Chancellor Maulana Azad National Urdu University, New Delhi, former, yes sir, thank you so much. Honorable Dr. Lobsang Sangyeji, former President, Central Tibetan Administration and eminent scholar, USA. We also have a distinguished speaker, Honorable Acharya Lokesh Muniji, founder, Ahimsa, Vishwashanti, New Delhi. And we will be soon joined by Honorable Swami Gyanavatsalji, motivational speaker, social reformer from Akshardham, BAPS, Shri Swaminarayan Mandir, Ahmedabad. Meanwhile, I request all my volunteers, teams, to request everybody to quickly be seated in the hall. आप सभी से विनती है कि सभी श्रोताओं को तुरंत हॉल में आने की विनती करें ताकि हम सेशन शुरू कर सकें. With the kind permission of Honorable Founder Father and Chief Patron of MAEER PUNE, all the distinguished speakers here would like to start our session. May I request my technical team to start the session with Shankar Dhwani, the blowing sound that really enlightens us with divine spirit. Om Shankaraaya Namaha. We also welcome Honorable Swami Gyanavatsalji from Akshardham BAPS. Thank you so much, sir. It's time for Omkar meditation. Om, that is inner self form of our consciousness, and the Nada Brahma. We would start our session with Omkara meditation. I request each one here to close your eyes and wholeheartedly participate in the Omkara meditation. May I now request my technical team to play the Omkara.
feel the bliss and divinity of Omkar. Moving on, we would like to have now the felicitation of the guest. May I request Honorable Dr. Vishwanath Karat sir to felicitate our today's guest speakers. Would like to start with Honorable Swami Gyanavatsalji, motivational speaker, social reformer from Akshardham BAPSC, Swaminarayan Mandir, Ahmedabad. I request the chief patron and founder of MAEER, Dr. Vishwanath Karat sir, to felicitate Honorable Swami Gyanavatsalji. Please put your hands together, dear audience. May I request Dr. Vishwanath Karat sir, founder president MIT World Peace University, to felicitate now Honorable Acharya Lokesh Muniji, founder Ahimsa Vishwa Bharati, New Delhi, Acharya Lokesh Muniji. Now I request sir to present Honorable Lobsang Sangeji, former President, Central Tibetan Administration and eminent scholar, USA. Honorable Lobsang Sangeji, former President, Central Tibetan Administration and eminent scholar, USA. Lobsang Sangeji. May I now request sir to felicitate distinguished speaker Honorable Firoz Bakht Ahmadji, former Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, New Delhi. Honorable Firoz Bakht Ahmadji. Now may I request sir to felicitate Honorable Archbishop Felix Machedo-ji, Honorable Archbishop Felix Machedo-ji, Bishop of Vasai, Barampur, Thane. Followed by distinguished speaker Honorable Guruji Vena Bhikkhu Sanghasena ji. May I request Honorable Dr. Vishwanath Karat to felicitate Honorable Guruji Vena Bhikkhu Sanghasena ji. And the chairman of the session, may I request sir to felicitate Honorable Dr. A.S. Kiran Kumar, former Secretary, Department of Space, Chairman, ISRO. Honorable Dr. A.S. Kumar ji, please put your hands together, dear audience. I would request everybody to keep standing on the stage, and I request everybody of the dais kindly rise in your seats, join your hands, and wholeheartedly participate in World Peace Prayer. I request my technical team to relay World Peace Prayers, please. Guru Brahma, Guru Vishnu,
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you everyone. Kindly be seated. May I now request for the welcome and introductory remarks by the Professor Dr. Vishwanath Karat, sir, Founder, President. Thank you, sir. Now we would like to listen to the first speaker of this session. May I now invite Honorable Guruji Vena Bhikkhu Sangha Senaji, Founder, President, Mahabodhi International Meditation Center, Leh, Ladakh. Bhikkhu Sangha Senaji was born in the Himalayan region of Ladakh. At the age of 17, he joined the Indian Army, where he developed a strong sense of personal discipline and responsibility. 1977 was a particularly significant year in his life. This is when he felt the inner spiritual call and decided to leave army. He left the mountains of Ladakh far behind him and became a committed disciple of renowned Buddhist scholar and a celebrated monk. In 1986, Bhikkhu Sangha Senaji founded the Mahabodhi International Meditation Center, MIMC, in Ladakh. Since then, he has worked tirelessly and selflessly to put the Buddha's teachings on loving kindness, compassion into action, and now it has become one of the leading NGOs in India. We are indeed privileged to hear you and welcome you at this World Parliament on Science, Religion and Spirituality. May I invite sir to address the gathering, please. Dear audience, please put your hands together to welcome Honorable Acharya. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages from all the directions of the universe may kindly look at us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful place, the holy place, Varanasi. Our very dear and very respected Dr. Vishwanath Karat, the founder of MIT World Peace University, the embodiment of world peace, religious harmony, and all the other religious luminaries, distinguished guest speakers on the dais. Forgive me for not being able to mention name of each great luminary speakers here, and all the others respected Swamijis, seekers of truth and lover of peace, and who are present in this beautiful hall. Very, very good morning or good afternoon. It is my great honor and privilege to be part of this historic conference, the 9th World Parliament of Science, Religions and Philosophy to promote culture of peace in the world. That too taking place in a historical, cultural, spiritual, religious, one of the most holy places of our country, Varanasi. It's not only a very significant holy place for Hinduism, but for many other religions, including Buddhism. As you all know, after attending the full enlightenment Buddhahood under the Bodhi tree at Buddha Gaya, Lord Buddha walked towards this holy place in Varanasi, in Sarnath. He delivered his first discourse, Dhamma Chakra Pavatana Sutta. That's why I am so blessed to be here. I had some very tight schedule
just rushed back from Bombay and have to rush back again to Delhi and to Bangkok. But I love our doctors, our dearest and respected Dr. Vishwanath. We love him so much, and we love this subject. Religion, science, philosophy has been my favorite subject since many years, and that's why I have so much respect and regards for our Dr. Bharat, and he is one of my personal mentor, teachers, leaders, especially for world peace, religious harmony, and bringing science and religions together. There are many religious masters, spiritual masters. There are many scientists, but there are not many people like Dr. Bharat who is trying to bring science and religion or spirituality science. This is very, very important, I feel. If we can somehow bring this science and religions together, if we can synthesize these two polarities, wow, that can bring the greatest blessings to mankind, greatest blessings to the earth. If the scientists are little bit spiritually scientists, if the religious leaders also little bit scientifically religious, this world will be different. If you can see this great scientist Einstein walking with Buddha, practicing meditations, yoga, at the same time, doing research and inventing all kinds of things to serve mankind only, not for destruction, not for bombs, but bomb of love and compassion, not the bomb which can throw and then kills, harm, destroy many lives, human lives, animal lives, and Mother Earth. It's so dangerous. If the scientists a little bit spiritually scientists, they will never misuse their knowledge of science for any destructive purpose. If the religious people are also little bit scientifically religious, they will never have a blind faith and they will not use the religious things for any destructive purpose. What a wonderful subject, sir. From the bottom of our hearts, we like to thank you, sir. And also on behalf of all the peace-loving people, on behalf of all the people who are promoting world peace and religious harmony, I would like to congratulate you, sir, for this prestigious award you have received. You deserve much more, many more such prestigious awards, sir, for your exemplary life, exemplary work, sir. Sir, I would like you to hear me, sir. Sir, I would like you to hear me, sir. Okay. So I will not take much time. I have many distinguished speakers, and this morning hearing to Dr. Vishwanath Kharji and especially our Excellency the Governor, wow, I should be sitting there not to come and waste time. It was such a wonderful, learning, thrilling, uplifting speeches this morning we have heard. So wonderful. I already extended invitation to His Excellency to the Ladakh top of Himalaya for a peace conference. So, yes, I always share with others religion and science, materiality and spirituality, inner and outer values, head and heart, physics and metaphysics, psychology and ecology, philosophy and technology, meditation and medication, all must work in balance and harmony. Scientists must learn meditation to avoid misuse of scientific technology. Religious masters must make their religious scientific to avoid any blind faith. Religion must be scientifically religious and science must be religiously science. They must work in consultation with each other. Synthesizing of these two, religion and science, will bring the greatest blessing to the world, sir. So we are very grateful to the Western people, the scientists of the Western countries. They have worked very hard and they have brought immense comfort to humanity through their scientific development, science technology. But I strongly feel, and all of us will agree, that's not enough. Just merely scientific development, technological development, ecological development, no, economical development is not enough.
because we are not just the physical body, we are more than the physical body. If you are just a physical body, then just the comfort, we have material comfort would be enough. But you know, we are more than the physical body. There is something more than this body, because you know, the heart, mind, emotions, and so on. The food you eat can remove the hunger of the body. The drink you take can remove the thirst of the body, but they cannot remove the hunger and thirst of the mind, the soul, the heart. The shower you take in a bathroom can clean the dust of the body. It cannot cleanse the dust of the mind. And the dust of the mind it could be even much more dangerous and destructive. Therefore, inner and outer, as you have all the material things in the supermarket to keep your body healthy and clean, we must need spirituality, meditation, yoga, etc. You know, just your 2G, 3G, 4G is not enough. With 2G, 3G, 4G, 5G must have Guruji. Without Guruji, all your 2G, 3G, 4G useless. And with your all technology, if you have no peace logi, harmony logi, love logi, dharma logi, all your logi will prove to be Bhasmasura dance that will kill itself. So it is time for us, India, under the leadership of such a great masters like Dr. Vishwanath, it is time for India to wake up and prepare themselves to lead the world with their ancient wisdom, yoga, meditation, spirituality, ahimsa, and karuna. Right? The world needs. Look at this war of Russia and Ukraine, nearly 1 year continuously fighting and killing. Our leaders unfortunately failed to stop. Now is the time of India. It is the century of Asia. It is the century of India to stand up and lead the world with their ancient wisdom, yoga, meditation. We need to have more University of Peace, University of Compassion, University of Love, like Dr. Green said, to train our young people. We have many universities, colleges for medical and all kinds of subjects. Now is the time to create so many peace colleges, peace school, peace educational institute, university to train our young people. The greatest strength, power of India is the youth. Now the youth must be trained as yoga teacher, meditation teacher, ambassador of compassion, messenger of peace, and lead the world. Otherwise, merely development of science and technology, sir, will destroy us. This is already happening. And we sometimes talk about to make India Vishwaguru. Sir, I want to tell you, India already has been, is, and going to be even more powerful Vishwaguru. We have one Guru here. I believe Dr. Vishwanath is the real Jagat Guru. I have respect for other Jagat Gurus also. But for us, he is the real Jagat Guru. You know, carrying the message of peace and harmony. Is that the bell is ringing for me to stop, sir? I'm a bit confused. Or is it in honor of my speech? Yes, I am stopping so much. Thank you so much. So what we have to do, sir, we all together under our great leadership, Prime Minister Narendra Modi, Karma Yoga, we have to prepare our young people in such a way that grow physically strong, mentally brilliant, culturally rich, morally lofty, spiritually enlightening, socially harmonious, materially prosperous, globally friendly, environmentally peaceful. That is, we all have to now train the young people. And finally, I would like to thank once again Dr. Bharat and invoke the blessings of the Lord upon you. May you be blessed with good health, long life, so that you can continue your wonderful work. You are our light, you are our delight, you are our guide. Thank you so much, sir. Thank you so much, Honorable Guruji Venbittu Sangasena ji, for that wonderful guiding speech. May I now take this opportunity to introduce the next guest speaker. We have with us Honorable Dr. Lobsang Sangye, former President, Central Tibetan Administration and eminent scholar in the USA. I take this opportunity to introduce Sir in brief. Lobsang Sangye
born September 5th, 1968, is an Indian-born American Tibetan politician who is Sikyong, president of the Tibetan government in exile, officially known as Central Tibetan Administration, CTA, since 2012, and previously served as Kalon Tripa from 2011 to 12. Sir has received his BA honors and LLB degrees from University of Delhi. Sir has also been offered Fulbright scholarship spot to him at Harvard Law School, and his role for his Kushi Gangtok affairs. Sir has also received 2004 Yong K. Kim 95 Memorial Prize for his excellence for his dissertation, Democracy in Distress, Is Exile Polity a Remedy? A case study of Tibet's government exile. We are absolutely honored and privileged to receive you, sir. May I now request Honorable Dr. Lobsang Sangyeji to address the gathering. Dear audience, please put your hands together to welcome Dr. Lobsang Sangyeji. Thank you very much for organizing this event. When I received the invitation, so as soon as I saw Vishwanath Karaji's name, I said, yes, I'm coming. And then later I read the title, World Parliament on Science. I'm not an expert on science. Religion, kuch bhi nahi janta. Spirituality, philosophy, nahi janta, because my background is law. And I said, मैंने ये क्या कर दिया? तो कल यहाँ थे, तो सारे लोग भाषण भी हिंदी में दे रहे थे. मैंने कहा मेरा हिंदी इतना बुरा है, मेरा बदनाम हो जाएगा. तो फिर सोचा इनविटेशन है, क्यों जाऊं? पहले सोचा काशी का घाट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया. मैंने बहुत पिक्चर देखा, जाना ही जाना है. ठीक, आ गया. गंगा का दर्शन हुआ, बहुत खुश. और अमिताभ बच्चन जी ने वो बनारस का पान बहुत मशहूर बनाया, पान भी खा लिया कल. तो ब्रेकफास्ट में मांगा क्या मशहूर है, उन्हें कचौरी है, कचौरी खाया. इनका थोड़ा पूरी अलग होता है, मेरे वो ये अलग है. कहा कि यहाँ का वो एक स्वीट मशहूर है, मिला नहीं आज, शायद लंच में मिलेंगे. जिलेबी कहाँ? हाँ, जिलेबी कहाँ? महाराष्ट्र का जिलेबी अच्छा था कल. हाँ, तो मेरा जो वो है सब पूरा हो गया, क्योंकि मैं आया और वापस आज ही जाना है. मैं यहाँ से दिल्ली जाकर वापस अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्लास पढ़ाना है हार्वर्ड में. तो मैं भारत में सिर्फ 100 घंटा से कम के लिए आया हूँ, क्योंकि विश्वनाथ कारक जी ने मेरे को इन्विटेशन किया. और 10 दिन पहले मेरे एक एक्सक्यूज भी देता राहुल को, कहा कि मेरे को आना है यहाँ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम है ना. वो कहा कि आ जाओ, हाँ, जिलेबी मिलेगा. तो मैं यहाँ हूँ, तो सोचा क्या कहूँ, कि बात क्या करूँ. तो कल सुना ड्युअलिटी के बारे में, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. सुबह बहुत प्रार्थना किया. परम पावन दलाई लामा जी है, थोड़ा वो है, सोच अलग है. मैं भी तिब्बतन हूँ और हम चाइनीज के साथ विरोध करता है. सोचा मैं ये कॉन्फ्रेंस आ गया, उनको विरोधी शायद मैं ही हो जाऊंगा, क्योंकि सब प्रार्थना करते हैं. परम पावन दलाई जी ने कहा कि जब चीन का सिपाही तिब्बत को कब्जा करने के लिए आया था, आपने इतना प्रार्थना किया, मगर नेशनल डिफेंस के लिए कुछ फायदा ही नहीं हुआ. सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अच्छा है, दिल के लिए शांत मिलता है. वही है, सब संडे जाते हैं प्रार्थना करते हैं, फ्राइडे जाते हैं प्रार्थना करते हैं, वेडनेसडे जाते हैं प्रार्थना करते हैं. मगर प्रार्थना करने के बाद मंडे से फ्राइडे हम पाप के जब वो जिंदगी के सामने चले जाते हैं, फिर एक हफ्ता पाप हो जाता है. फिर सैटरडे को रियलाइज हो जाता है मैंने बहुत पाप किया. फिर संडे को भगवान के आगे जाते माफ मांगते हैं, है कि नहीं? तो ये क्यों? अब बहुत लोगों ने कहा, ये मानता हूं, काशी तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत है ज्ञान का सेंटर है. अब ज्ञान का सेंटर तो ज्ञान है, मगर ज्ञान को ये हकीकत हो रहा है, नहीं हो रहा है. प्रैक्टिकल हो रहा है, नहीं हो रहा है. इनका इंतजाम आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि हम तो अभी तक रोज कहते हैं, सब कहते हैं, ईस्ट में हमारा नॉलेज है, विजडम है, वेस्ट मटेरियल है, हम स्पिरिचुअल है.
वेस्ट में बहुत कठिन है, क्लाइमेट क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, यूक्रेन वॉर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जितना भी वॉर हुआ है ज्यादा वेस्ट में हुआ, वो भी है। और मेंटल क्राइसिस है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस सबसे ज्यादा है, इतने लोग सुसाइड कर रहा है। अब क्या हो रहा है, जितने भी मटेरियल डेवलप वेस्ट में हुआ वो एशिया में हो रहा है। हम खुद कह रहे हैं कि एशिया का सेंचुरी आ गया है। एशिया में क्या हो रहा है, वो जो जितने भी वेस्ट का प्रॉब्लम है एशिया में हो रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस एशिया में है, वाटर क्राइसिस एशिया में है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, ताइवान के ऊपर होने जा रहा है, इंडो चाइना का बॉर्डर, इंडो तिब्बत का बॉर्डर है, उसके ऊपर होने जा रहा है, सब आ रहा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एशिया में है, भारत में है। कितने फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहा है, कितने यूथ लोग सुसाइड कर रहा है। जो हम वेस्ट को दिखा के कहते हैं कि मटेरियल डेवलपमेंट है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअल होने से मन का शांत होगा, सुसाइड नहीं होगा। सुसाइड हो रहा है, सारे एशिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो हमारा ज्ञान है, ये जमीन पे क्यों नहीं आ रहा है, सवाल ये है। जमीन पे आना चाहिए। तो परम पावन दलाल जी कहना है कि देखो, हम बुरे लोग ज्ञान के बारे में बात करने से कुछ फायदे नहीं है। बुरे लोग वही करेंगे, संडे में प्रार्थना करेंगे, मंडे से फ्राइडे पाप करेंगे, फिर सैटरडे में गिल्ट होंगे, फिर गिल्ट फील करेंगे और फिर संडे में प्रार्थना करेंगे। ऐसे वो परम दलाल जी कहा है कि नहीं, अब हमें बच्चे को सिखाना है, करुणा क्या है, फॉरगिवनेस क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, बच्चे को सिखाना है। बच्चे का दिल साफ है, अभी उनको हम बना ना सकते हैं। तो हिंदी अच्छा नहीं है, मनाना भी सकते हैं। बुरे लोगों को एक दिन के लिए मनाएगा, पर 5 दिन फिर पाप करेगा। बच्चे लोगों को दिल को मनाने से, दिल को पढ़ाने से उनका दिल ब्रेन को छू लेता है, हार्ट एंड माइंड कंबाइन हो जाएंगे और वो लीडर होंगे करुणा वाला लीडर। देश के लीडर ऐसे होंगे, इंडस्ट्री के लीडर ऐसे होंगे, टीचर भी कंपैशनेट टीचर होंगे। इसलिए उन्होंने सी लर्निंग करके, सोशल, इमोशनल, एथिकल लर्निंग करके करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है। वो इंप्लीमेंट किया है 6 कॉन्टिनेंट्स में, 144 countries in 22 languages. This is taught in high school, primary school. उनको सिखाया है। उसमें क्या लिखा है, अब करिकुलम, फुल करिकुलम, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पैराग्राफ ओनली। उसमें क्या है कि वी मस्ट रिकॉग्नाइज शेयर ह्यूमैनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर डिफरेंसेस। एक्चुअली differences can actually be a source of strength when you approach them through compassion. Or we must teach them, young people, to be active listener, to treat others with respect, to foster love, and to have a sense of purpose in life. अभी जो curriculum education system है वेस्ट में जो है, इंडिया में वही है, एशिया में वही है. They teach you about career, but they don't teach you about purpose of life. आप इस दुनिया में क्यों हो? वो नहीं सिखाता है, उनको सिखाना चाहिए. हम प्रॉब्लम सब बताते हैं, पॉवर्टी है, वो है, सब प्रॉब्लम. Everybody says problem. In teachers, school also they tell you about the problem, but they don't teach you the root cause of the problem. इस करिकुलम में they teach you the root cause of the problem. कहाँ से आया, क्यों आया, उसको निपटना पड़ेगा. That is in this curriculum. And also about equitable society, about compassionate society, or especially responsibility. What you say, what you do will impact others. जो हम करेंगे, कहेंगे, वो दूसरे को impact करेंगे. क्योंकि आजकल की दुनिया में जो भी चाहे कहते हैं, जो भी चाहे करते हैं, सोचते नहीं उसको उनको क्या होगा. This is being taught. So now this C-learning, I'm very glad Vishwanath Karaji has built a dome of peace where all the masters are there, and it's fitting that it's at MIT University, so that all the students can relate to the knowledge. Now we must take this course, and it is already implemented. Actually, Delhi government has implemented this C-learning as well, curriculum happiness. Worldwide is happening, and I hope I've come to convey this message that these
curriculum be also introduced in various parts of India as well. Because soon test is coming. What we talk about the West will happen in Asia. भारत सरकार कहता है हमें भारत in 2047 में number 1 होना चाहिए, क्योंकि when we celebrate 100th anniversary हमें number 1 होना चाहिए. सब मुमकिन है, सब we all agree with that, right? But चीन सरकार भी कह चुका है 1949 में उनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का भी 100th एनिवर्सरी होने वाला है, उनको भी नंबर 1 होना चाहिए. अब देखो नंबर 1 तो एक ही होगा, अभी 2 है एशिया में. अब कैसे निपटी? There will be bound to have conflicts. There will be war in Asia. How does war happen? You study industrial revolution in Europe. Simple logic. पहले पैसा कमाते हैं, you become rich, फिर बंदूक खरीदते हैं क्योंकि पैसा को प्रोटेक्ट करना है. अब उस तरह वो जो आपका नेबर को भी पैसा कमाया, वो भी बंदूक खरीदते हैं. अब बहुत बंदूक हो गया, आप सोचने लगा मेरे पास पैसा उतना, उसके पास ज्यादा है, उससे ज्यादा मेरे को होना है, किसी और को लूट लेता है. कोलोनियलिज्म ऐसे फैल गया, इंपीरियलिज्म ऐसे फैल गया और झगड़ा करते रहा. यूरोप में 30 years war, first world war, second world war. Logic is very simple. You become rich, you buy guns, you fight. अब क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में 40 years ago they discovered oil, they become rich, और बंदूक खरीदा, अब झगड़ा हो रहा है. अब मिडिल ईस्ट से ज्यादा बंदूक कहां खरीद रहा है? एशिया में. एशिया रिच हो रहा है, अब सब बंदूक खरीदता. Number 1 spender of defense, China. Number 2, India. Second largest army in China. Third largest army, India, and Indonesia, Japan. You just name it. क्यों? सब रिच हो रहा है, और सब बंदूक खरीद रहा है. अब झगड़ा करने वाला है कि नहीं? अब हमारा भारत का ज्ञान कहां है? सवाल ये उठता है. ज्ञान है, अब दिखना चाहिए. अभी तक तो हम लोग सब ने कहा वेस्ट, अब you have all the money but you are in the wrong direction, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है. हम तो कहते रहते हैं कि हम काशी से कहूँगा ज्ञान हमारे पास है, और जो वो कर रहा है हम करेंगे. सुसाइड यहाँ है कि नहीं? वाटर क्राइसिस यहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ है. वो कहे कि आपने इतने साल से कहा कि ज्ञान आपके पास है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम रॉन्ग डायरेक्शन किया. आपके पास धन आया तो आपका ज्ञान कहाँ गया? तो हमारा इंतजाम नहीं, let me finish. No. What I'm trying to say is, no, I'm not saying. What I'm trying to say is, yes, suicide rate is high in the West, but suicide rate is increasing in Asia as well. And it will keep increasing if GAN is not implemented. So this is the test. So why it's not happening is because we have not taken the education to the children. They can be educated. Their heart is pure. If they become compassionate, when they become leaders, we will have peaceful Asia, we will have peaceful India, and we will have peaceful world. So that's the direction we must go. With that, I end my speech. I'm staying here less than 100 hours just to convey the message. So Vishwanath Karachi, MITG, and I feel I'm glad I got a side seat, because sitting with all the eminent scholars and learned philosophers and spiritual masters, I'm glad मेरा थोड़ा karma, I get blessed that way. मेरे को जितना भी नजदीक है उससे ज़्यादा blessing होगा ना, blessing हो गया. I go purified. मैं कहूँगा काशी में गया, मैं purified होके आ गया हूँ. Thank you. Thank you so much, Honorable Dr. Lobsang Sangeji, for your kind words. Now it's time to invite distinguished speaker, Honorable Acharya Lokesh Moniji, founder Ahimsa Vishwa Bharati, New Delhi. I take this opportunity to introduce Acharya Lokesh Moniji, a versatile thinker, poet, social reformer, has been continuously making efforts for national character building, development of human values, and establishing non-violence and mutual cooperation in the society for the last 39 years. He has traveled on foot about 20,000 kilometers throughout the country for removing social evils, for the propagating moral values,
Sir has started a strong movement against social evils like abortion of female child, drug addiction, environmental pollution, and so on. Sir is well read in Prakrit, Sanskrit, Hindi, English, Gujarati, and many more such languages. Sir is a writer and has written more than a dozen of books in prose and poetries. Sir has received many honors, to name a few: National Community Harmony Award, Ambassador of Peace Award in 2014, Ethical Honor of Gulzarlal Nanda Foundation, and many more like this. May I now invite, with all my honor, Acharya Shri Lokesh Muniji. Please put your hands together to welcome our distinguished speaker to the dais. MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मंच पर उपस्थित संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, विभिन्न धर्मों के शीर्षस्थ धर्माचार्यगण, उपस्थित बंधुओं और बहनों, चूंकि उद्घाटन सत्र में मैं अपना वक्तव्य दे चुका हूं, इसलिए मैं लंबा समय नहीं लूंगा। समय सीमा में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। अभी मेरे से पूर्व भिक्खु संघ सेना जी ने और अमेरिका से समागत हमारे विद्वान स्कॉलर, उन्होंने बड़ी मीठी हिंदी भाषा में अपनी वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया। जब हम यूनियन ऑफ साइंस एंड रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी along with bring peace and harmony to the mankind, स्वामी विवेकानंद, वास्तविकता तो यह है कि अलग अलग पंथ हैं, धर्म तो एक ही है। धर्म है क्षमा, मैत्री, करुणा, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना। किंतु कठिनाई ये होगी कि हमने धर्म और संप्रदाय को एक कर दिया, जबकि संप्रदाय है लिफाफा और उसके अंदर रखा हुआ मजमून। दूसरी रूपक की भाषा में कहूं, एक फल का गुदा है, एक छिलका है उसकी सुरक्षा के लिए। धर्म और संप्रदाय ये दो अलग चीजें हैं। जब ये स्पष्टता होती है तो जो कहा जाता है ना कि धर्म के नाम पे झगड़े हैं, संप्रदाय के, पंथ के, मेरा पंथ, मेरा मजहब श्रेष्ठ है, मेरा विचार श्रेष्ठ है, जहां ये भाव आता है वहां पर संघर्ष बढ़ता है। और जहां पर अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप सामने आता है वहां पर कभी भी झगड़ा खड़ा नहीं होता है। और जब अध्यात्म होता है तो विज्ञान से भी कोई विरोध नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी। सत्य की खोज का रास्ता अध्यात्म है। वैज्ञानिक लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अनुसंधान करते हैं और हमारे ऋषि मुनि, भगवान महावीर ने तो अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला। और उन्होंने जिस सत्य की खोज की, अभी महान स्कॉलर केरल के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब अभी वक्तव्य दे रहे थे इस सत्र से जस्ट पहले, उन्होंने जिस अनिकांत दर्शन की बात कही, वो उन्होंने उसी अध्यात्म की, सत्य की खोज के दौरान उसे प्राप्त किया। आज अपेक्षा है हम
सबका दायित्व है कि हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, धर्म को विज्ञान से जोड़ें, और बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से धर्म का वो तेजस्वी स्वरूप समाज में सामने आएगा और सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती है वो उस मार्ग के द्वारा संपन्न हो सकता है। और बंधुओं, हार्मनी की बात करें, मैनकाइंड की बात करें, ये सभी तभी संभव होता है जब तक हमें भेद विज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। ये भेद विज्ञान की अनुभूति अध्यात्म के स्पर्श से आती है, और जब अध्यात्म का अवतरण होता है तब स्व और पर की भेद रेखा खत्म हो जाती है। भला कौन किसके प्रति अन्याय करेगा, कौन किसके साथ चीटिंग करेगा, अरे वो तू ही तो है, वो तुम्हारी जैसे आत्मा है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। मतभेद जब मन भेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। और उसका प्रयास मैं समझता हूं भाई विश्वनाथ जी कराड़ जिस रूप में करते हैं। पूना में भी अनेक बार स्टूडेंट पार्लियामेंट में कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। टीचर्स कांग्रेस के कार्यक्रम में दिल्ली के विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में इनका एक ही प्रयास रहता है कि विभिन्न धर्मों को एक साथ से आसन से चिंतन, और इसलिए मैं इनका अभिनंदन करना चाहूंगा और आज इस मंच से एक उद्घोषणा भी करना चाहूंगा। हमारा अहिंसा विश्व भारती संस्थान जो भारत में और भारत के साथ अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन, उन्होंने उनकी पिछली मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया कि डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाए। अब वो कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में होगा या महाराष्ट्र के मुंबई में होगा, वो हम दोनों की सुविधा अनुसार कार्यक्रम को तय करके आपको सूचित करेंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रयास है, इन प्रयासों की निरंतरता जरूरी है, और इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। तो आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के इस महान यज्ञ के अंदर आहुति दें इन्हीं शब्दों के साथ, ओम और हम। Kindly give a standing ovation to Acharya Lokesh Muni ji. Dear audience, a huge round of applause, please. I request everyone to give a standing ovation to Acharya Lokesh Muni ji. Thank you, sir, for your words of wisdom. Thank you so much. Thank you, Acharya ji. May I now take this opportunity to introduce our next distinguished speaker, Honorable Swami Gyanavatsal ji, a motivational speaker, social reformer from Akshardham BAP Shri Swaminarayan Mandir, Ahmedabad. Dr. Gyanavatsal Swami is a motivational speaker and social reformer from Akshardham.
Sir works for BAPS, which is a social organization that improves society by promoting the growth of people. Sir has completed his mechanical engineering from Birla Vishwakarma Mahavidyalaya Vallabh Vidyanagar. Sir has given motivational speeches at different seminars in multiple countries, including but not limited to New Zealand, Europe, Canada, the US, and England. Sir covers a wide range of niches such as stress, work life, career, education, etiquette, attitude, and much more. Sir started off his career as a social reformer at Akshar Purushottam Mandir, a social organization that promotes individual growth, and he has discussed plenty of inspirational topics that has helped many people to grow and succeed in their profession. Sir has traveled to more than 20 countries and spoken on different genres from career to stress. Sir is a vivid reader, and I must note that what he mentions, that reading is only hobby that nurtures. Sir is recognized as a Swami of BAPS Sanstha, and he has not to miss out. Sir had received his training from the Pramukh Swamiji as his guru. May I now, with my honor and privilege, invite Swami Gyanavadsalji to the dais. Dear audience, please put your hands together to welcome Swamiji to address the gathering. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. With prostrations at the divine feet of Bhagavan Swaminarayan, my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, and my Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest namaskar. Good afternoon, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, and Jai Swami Narayan, especially to the founder president of MIT World Peace University, Dr. Vishwanath Karatji, the organizer of this conference, distinguished guests and spiritual luminaries on the dais, and all the science and religion loving people sitting in the audience. Well, the theme of today's conference, the 9th World Parliament of Science, Religion, Spirituality and Philosophy, to promote the culture of peace. Based on the ethos of G20, Vasudhaiva Kutumbakam, the theme has been perfectly selected because today in the 21st century, we need a combination of science and spirituality. As the great scientist Albert Einstein used to rightly say, that science without religion is lame, and religion without science is blind. So we need a combination of both. If we don't have this combination, what happens? As my ex-speaker, he rightly mentioned that right from early childhood we need to teach them the values of spirituality. Only then with the combination of science that they can bring peace and harmony upon this earth. You would be surprised to know that more than 30,000 scientists all over the world are busy in making bombs and missiles. जो बंदूक की बात है आपने बहुत की, जो बात बहुत सही है. 30,000 scientists all over the world are busy, working 12-16 hours a day, making bombs and missiles and weapons of mass destruction. So these weapons are not made by illiterate people. They are made by some of the finest graduates from some of the finest universities in the world. But they didn't have the touch of spirituality, the influence of spirituality and religion in their lives. So they are making bombs and missiles to wipe out human populations from upon this earth. So science needs spirituality. So we have ethical scientists. Imagine if these 30,000 scientists during the times of Corona had left aside their job of making bombs and trying to find some solutions for Corona, the world would not have lost 2 years. But they did not get that ethical sense of helping mankind
just for the reason that they did not have the touch of spirituality during their science graduation days. This conference is meant for that. This thought process is meant for that. Many years back in Pune, more than about 50 vice chancellors of different universities of our country that come together to discuss why we are producing educated monkeys. And the conclusion after 3 days of brainstorming sessions was, that we need to introduce religions, philosophy, spirituality in our curriculums in schools and colleges. So right from early childhood they should be bred like that. But many years back this thought process now has fructified and we see it well in NEP 2020 that would give us ethical education. It's a wonderful step by the government of India which is now very decisive. It is a wonderful step by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi, which will not only accelerate the path of India towards being a developed country by 2047, it will also accelerate the path of India by becoming a Jagat Guru. India will become a developed country, India will become a superpower, and India will become a Jagat Guru because we have those ethos. And we are talking of this from a place, this is Varanasi, Kashi, Banaras, the oldest city, the oldest inhabitation of this world, which the world recognizes. So science and spirituality should have a combination. Great scientists have talked about this. Scientist Werner von Braun, who discovered this, the Saturn rockets which put satellites into space. He writes in his biography, I am quoting him word to word and letter to letter, that only with God reinstated in the hearts and minds of people will He protect us from the dangers of technological revolution. On the other hand, spirituality has a big role to play. Many a times I say that modern science is increasingly proving the methods, the thought process of spirituality right. For example, Shankaracharya ji taught us Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudmate. Chant the holy name of God for peace. The same thing is proved by science. At the University of Philadelphia, at the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg, Dr. H.G. Going, they jointly experimented. Absolutely a scientific experiment on the chanting of the holy name of God, that is Bhaj Govindam. By psychoneurosoftwares, they experimented on 4,000 people. They had their MRIs, they had their mind mapping. They were asked to chant the holy name of God in whichever form of God that they believed in. For about 12 minutes, experiment conducted for 8-10 times, for 5-7 weeks. Again by psychoneurosoftwares version 2.0, again they are chanting, during the chanting of the holy name, they are mind mapping and their MRIs were done, and the conclusion report states that when you chant the holy name of God, the hormones that are released in your body, what advantage do you have? And Dr. Andrew Newberg, Dr. H.G. Going, they say that when you chant the holy name of God, our psychoneurosoftwares, they tell that the hormones that are released in your body, what do they give you? Those children in the age group of 4 to 12, when they chant the holy name of God, there was a surprising, benefiting, and a pleasant experience of 17 to 25% increase in their memory power. The youngsters had an advantage of increase in their willpower and confidence.
The middle-aged people had an advantage that they could increase their buffer capacity, that is the capacity to absorb shocks of life. And the old-age people, surprisingly but pleasantly, they had increase of 25 to 35% in the strength of their immune system. So Shankaracharya ji was right when he said Bhaj Govindam, because this university proved that when you chant the holy name of God, you have such advantages that gives you inner peace, you have advantages that benefits your personality and character. And when you have your buffer capacity increased, you increase the harmony in your family and harmony in the society. So now this is a proven fact. See, what does science tell you when you go into stress? The same thing has been taught by spirituality decades back, centuries back, and ages back. When you go into stress, you are given stress pills that calms you down, that cools you down. When you go into stress, two hormones are released in your body. One is cortisol and second is epinephrine. What does these two hormones do? They increase your heart rate. You start perspiring. The blood pressure increases, perspiration increases. This is what cortisol and epinephrine does. The stress pills, when they go inside your body and go inside your bloodstream, they try to diffuse the effect of both these hormones. Now the scientific experiment of spirituality is, when you are into stress and when this cortisol and epinephrine are high in your body, when you start chanting the holy name of God, Nam Smaran, another hormone called endorphin is produced in your body without the pill, without the medical pill. Endorphin is produced, which suppresses the effect of epinephrine and cortisol, and you feel calmness and goodness. So we need spirituality and science as a combination to bring peace and harmony. Lastly, I would say that this combination of science and spirituality definitely benefits personally, individually, benefits the family, benefits the society, and benefits humanity at large. So our Guruji Pramukh Swami Maharaj, whose centenary celebrations we celebrated. I come from the BAPS Swaminarayan Sanstha, which is one of the largest organizations in the world with a permanent seat in the United Nations. You might all have visited Swaminarayan Akshardham at Delhi. Our Guru Pramukh Swami Maharaj used to define Dharma in very simple words. Paraspar Priti Prasraya Dharma. He used to say, in the good of others lies our own. This is how harmony and peace is achieved through spirituality. In the good of others lies our own. So, science and spirituality, they are not just friends. They are real brothers. Rather, more than that, they are couplets. And when they go hand in hand, it can be peace and harmony upon this earth. We pray on this occasion in this holy city of Varanasi, in the presence of all dignified luminaries, and more importantly, Dr. Vishwanath Karatji and the MIT World Peace University, when they organized this event, that may this message travel far and wide in the hearts and minds of people. Thank you very much. All prayers. Thank you so much, Swami Jnanavasarji, for your pearls of wisdom. We are already short of time, so we won't be able to take up any questions for now, but definitely we would be happy to receive them during the lunch break. Thank you, dear audience, for understanding us. Now, may I take this opportunity to introduce our next guest speaker, Shri Firoz Bakht Ahmed Ji, the former Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, New Delhi. Firoz Bakht Ahmed Ji is a grand nephew of freedom fighter and the first Education Minister of independent India, Maulana Abdul Kalam Azad Ji. Sir was nominated as the Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, MANUU, for a period of 3 years. According to a notification released by the Registrar, MANUU, Honorable former President of India, Ram Naik then, in his capacity as a Registrar of the University, had appointed Firoz Bakht Ahmed Ji as the 5th Chancellor of the University. Sir is a prolific writer. Sir has authored many books in Urdu, Hindi, especially on children's literature. Sir is also a freelance journalist and columnist.
His columns and articles appear regularly in various widely circulated newspapers across India. Sir has also been associated with Madrasa Modernization and Urdu medium schools upliftment. We are indeed honored to hear an academic scholar like Firoz Bakht Ahmed ji. Dear audience, please put your hands together to welcome a distinguished speaker, Firoz Bakht Ahmed ji. देवियों सज्जनों, हजरात ख़वातीन, and very eminent and learned ladies and gentlemen. This is Firoz Bakht Ahmed, former Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, before you, in his personal capacity, welcoming you all to the holiest city of the world. There are other holy cities in the world, places in the world. Mecca is there, Bethlehem is there, then some place in Peking is there, Sarnath. But according to this author, Diana, you can see L. Eck, she has written a book, Banaras, City of Light. She has proved that Varanasi is the holiest of all these shrines. And she was studying in BHU. While she was studying in BHU, she traveled the entire city and she proved that this is the holiest city of all. And if I am given time, my worthy friend, he started, Lobsangji, he started in an informal manner, Banarsi Pan, Banarsi Chandal, Banarsi Ghat, all these. That's wonderful. In the end, I'll say 2 or 3 lines if time permits me. I am also immensely thankful to Professor Vishwanath Dadarao Kararji, who has been conducting all these sessions for bringing world peace and human touch. While Sangsena ji was speaking, he said, this is a historic occasion in Varanasi. But I differ with him because whatever meeting, whatever summit, whatever conference or conclave has been conducted by Professor Karar at his university or elsewhere, it is difficult to decide which is the historical location. Of course, this one is because he himself is a very balanced religious man, loves his Vedantic religion, as at the same time, he also keeps on saying, ye sab khuda ka diya hua hai. Now, one more thing, the problem of the person who comes after many speakers, Lobsangji said so many things, Acharya ji had said so many things, and our Gyanvatsal Sahab also said many things, and above all, the introduction was given by Professor Vishwanath. It's very difficult I'll say something which will connect religion, philosophy, spirituality, creativity, and politics as well, which is also a part of life, maybe dirty politics. Now, why he conducts these conferences? He does it because a very positive message goes through these conferences. As Maulana Abul Kalam Azad once in Taskara in his book said, even if it is a small piece of work, right? Even if it is this small brochure, he brings out wonderful brochures on each occasion, or a spoken word, it reaches somewhere. And having said that, let me also tell you that in his university, monkeys are not prepared. As my friend said, in his university, let me tell you, even, I told this thing to Professor Rahul Karal. He did not know this. You must have heard of Chandrayaan-2. It's a big mission. Chandrayaan-3 is getting ready. There was a student of the Faculty of Science of MIT, Maharashtra Institute of Technology, Pune. Her name is Tessie Thomas. Even he did not know. And she is also preparing on this third, Chandra mission. So what I mean to say is, this university, why he does it? Some of you must be thinking he's advertising MIT and World Peace University. Sorry, sir. Sorry, ma'am. He's not doing it. This university does not need any advertisement. All
the colleges, universities, whether they are under MIT or World Peace University, these are designer and state-of-the-art, best of educational institutions. Whether you compare them to any college, St. Stephen College or Pirolimal College or any other place or Harvard University, these institutions by Professor Karar and his family, both at home and in the university, they have made their dent felt on the educational fabric of the world. Now coming to science, I think a lot has been spoken on this topic, religion, science, spirituality, and Gyan Vatsal ji also spoke very capably. Let me tell you one more thing. In terms of spirituality being connected to science, this is Varanasi. This is also the constituency of our worthy Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Now, how we connected spirituality and science? While some people were saying during COVID-19 in 2020, oh, nothing will be done, he makes false promises. At the same time, the Prime Minister was after doctors, after researchers, and after students like Tessie Thomas from MIT, WPU, and he was coaxing them that yes, you should come up with some medicine, and India came up with two vaccines, Covaxin and Covishield, which not only saved the lives of 140 crore Indians, but we send that vaccine even to 123 countries. And that is done by students, researchers, doctors of the universities like MIT. Right? After I came to know of Tessie Thomas, I really revere and regard this Pune University. Now, having said that, one more thing, spirituality. Every day while, we have all passed, we thank Allah, we thank Bharyata Purushottam Ram, we thank any god or goddess which you believe in. Every day during that terrible phase when we used to sleep at night, no one knew whether we would, get up, we would survive, right? But the way Prime Minister Modi introduced thali and burning of lamp, lighting of lamp, people thought, but he was trying to take away all this pressure from the minds of people. And Allah ka bada shukr hai, thanks God, India came out very nicely. And some people were saying, some expert from Britain, with all due regards to that country, someone said, and we were horrified, that 30 crore people, you are a scientist, you know about it, 30 crore people would die. But India is the land of peace, India is Darul Aman, as Maulana Azad had said. और ये जो है हमारा जो मिशन है हमारा वो क्या है? अभी आपने कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक ही कुछ भी है. And I believe the Governor Sahab spoke very well, and I really thank him the way he gave the story of Shankaracharya ji and Chandal. And this is what we should be. Whether it's a small bird, it's a rabbit, it's a pigeon, whatever it is, we have to revere and regard, even if it is a leaf of a plant. My friend, I think he has left, Acharya Muniji, we have to respect and regard each and every, thing which is living, right? And having said that, lastly, a couple of things. You see, how many of you are from the city of Banaras? Sir, हाथ खड़ा करें. हाथ खड़ा करिए. कुछ लोग हैं. No, I actually, got these lines from my friend Hemant Sharma. उन्होंने एक किताब लिखी है, देखो हमारी काशी. और राम बहादुर राय साहब ने, मेरे दोस्त ने, उस पर इंट्रोडक्शन लिखा है. जरा सुन लीजिए, 2-3 लाइन है. करार साहब आपकी इजाजत से. काशी ज्ञान की शलाका है और बनारस औखोड़ों का ठहाका है. काशी रहस्यों की गहराई है, बनारस किस्सों की अंगड़ाई है. काशी दिव्य है, बनारस भव्य है. काशी मुक्ति है, बनारस शक्ति है. और लास्ट लाइन है इसकी, काशी विश्वनाथ है, और उसी विश्वनाथ में विश्वनाथ करार साहब से हम ज्ञान ले रहे हैं. बनारस रामनाथ है, विश्वनाथ रामनाथ, कोई फर्क नहीं है. अल्लाह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जैनेंद्र, सब एक हैं. और आखिर में एक बात मैं और कहना चाहूँगा. आई थिंक
a couple of days ago. This is something very personal. हाँ, बस हो गया बस. राहुल ने मुझे फोन किया अपनी माँ के बारे में. A couplet for Rahul. हाँ. नहीं बस वो शेर है. माँ ने धागा नजर का बांधा है, कैसे हूँ कैसे छू पाएगी भला तुझको. और आखिर में औरों को बोलना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक शेर आपके लिए भी है करार साहब. मेरी जिंदगी यही है कि सबको फैज पहुंचे, मैं चिरागे रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Honorable Firoz Bakhtaji. May I now invite and introduce Archbishop Honorable Dr. Felix Macedo ji. Archbishop Felix Anthony Macedo is an ordained priest in October 1976 in the Bombay. In 1998 he was incarnated in the province of Vasai. He was appointed as the Archbishop of Nasik and then was ordained in March 2008. He was later transferred to Vasai. He was installed in December 2009. Sir has worked as Under Secretary in the Pontifical Council for Religious Dialogue, Vatican from 2008 and presently served as the Chairperson of Office of Inter-Religious Dialogue for the Federation of Asian Catholic Bishops Conferences. Please put your hands together to welcome Archbishop Felix Macedo ji. So over to you. Thank you very much. I know we are running short of time. I had written this speech, which was very long, but I'm going to take perhaps even less time than which is allotted to me. Mine is a cry for peace. There are many resources of peace, but the principal one I believe are the sacred texts of every religion. And we have many of these spread out here. Dr. Karad यांनी पुण्यामध्ये एका अशाच भव्य समारंभामध्ये हे हाती घेतलं आणि सगळ्या धर्मामध्ये जी धर्मशास्त्र आहेत त्याच्यामध्ये शांतीविषयी आपल्याला काय शिकवलं जातं आणि त्याचा आपण काय उपयोग करून घेऊ शकतो आणि सगळे एकत्र कसे येऊ शकतात. त्याचप्रमाणे काशीला आल्याचा मला आनंद वाटतो, कारण तिसरीमध्ये असताना मराठी शाळेत श्रावण बाळाची कथा आम्हाला सांगितली आणि कसा श्रावण बाळ त्याच्या आई वडिलांना म्हाताऱ्यांना काशीला घेऊन आला. माझ्या अंतःकरणातून ही गोष्ट कधीही पुसली गेली नाही आणि अनेक वेळा मी ख्रिश्चन असून देखील काशीला येतो. मित्रांनो, all religious traditions cherish peace as God's gift. The gift of peace is entrusted to human persons so that believers continue to deepen it in their hearts and collaborate with other believers in order to build peace in their respective society and in the world at large. This is an ongoing responsibility of every believer of every religion and all of the believers of all religions collectively. Individually and together, we must show how religious belief inspires peace, encourages solidarity, promotes justice, and upholds liberty. The challenge before us is to work not just for an individual person's peace, but to work collectively for a world of true and lasting peace, since our globalized world is interconnected. The theme of peace is central in the scriptures of various religious traditions. In fact, I wanted to give you some zhalak of these, but due to lack of time, I will skip that. I think we need to be guided by our scriptures, our respective scriptures, but also it doesn't do harm if we can also, after our scriptures, also get familiarized with scriptures of other religions. Since the contemporary context of our lives is that we are all interconnected, interrelated, and also interreligious, collaboration among us is no longer an option but an urgent necessity. Religion will prosper in this third millennium
only to the extent that we can maintain a sense of community among people of different religions who work together as a human family. This is how I understand Vasudhaiva Kutumbakam, in order to achieve world peace and to establish society of interreligious harmony. And to come to an end, I wish to conclude by these words of Pope Francis. He says, religions must never incite war, never incite hateful attitudes, never incite hostility and extremism, nor must religions incite violence or the shedding of blood. These tragic realities are the consequences of a deviation from religious teachings which the scriptures give us. Human fraternity, which embraces all human beings, is torn apart by policies of extremism and division, by systems of unrestrained profit, or by hateful ideological tendencies that manipulate the actions and the future of men and women. Our society urgently needs to build peace as a single goal and a shared intention by believers of all religions. I am very happy and very grateful to Dr. Karad, not only today, but on and off, at least for me, more than 35 years. He has been organizing these meetings, perhaps even before, but at least since 35 years ago, he invited me from the Vatican. And I said to him, Dr. Karad, I am in Vatican. I cannot travel all the way to India. He says, no, I want you to come. This is Dr. Karad. We need multiplication of such meetings. I wish the tribe of our Dr. Karad increases. And there are many more people who take initiatives, because let us work together to create the culture of living together in peace, values of peace, values of justice, goodness, beauty, human fraternity and coexistence need to be rediscovered by taking recourse to the scriptures in order to confirm the importance of these values as anchors of salvation for all and to promote them everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, Honorable Archbishop Felix Macedo-ji, for your kind words. Now, the time has come to listen to the address by the chairman of this session, Distinguished Speaker, Honorable Dr. A.S. Kumarji. May I take this opportunity to introduce the distinguished and visionary speaker for this particular session. Dr. A.S. Kiran Kumarji is a Vikram Sarabhai Professor at ISRO, Bengaluru, member of Space Commission, Government of India. During 15 to 2018, he had served as a Secretary, Department of Space and Chairman, Indian Space Research Organization. Sir holds MSc degree in Physics, Electronics from Bengaluru University, MTech degree in Physical Engineering from Indian Institute of Science, Bengaluru. Sir has steered the implementation of the applications-oriented Indian space program, which has facilitated rapid development of the country in various aspects, especially the important spheres of Earth observation, communication, navigation, meteorology, and space sciences as well. He has also contributed to the launch vehicles and related technologies for providing assured access to space. He has led design and development of more than 50 electro-optical imaging sensors flown from the various space-borne platforms, starting from Bhaskara in 1979. Further, his role in the success of Chandrayaan-1 mission and Mars Orbiter mission has been very significant. Sir has been the chair of Committee on Earth Observation Satellites, CEOS, in 2012. He has made valuable contribution to coordination group of meteorological satellites, expert team on satellite systems, World Meteorological Organizations, and Indo-US Joint Working Group on Civil Space Cooperation. Sir has authored more than 85 publications in various national, international scientific journals, conferences, and symposiums. Yes, sir, in his recognition of his contribution, he was conferred Padma Shri by President of India in 2014. Other notable honors were conferred on him, including the Rajyotsava Award,
Sir M. Vishwashanti Senior Scientist Award, then Achievement, Lifetime Achievement Award from Karnataka Science, IISc Distinguished Alumnus Award, and various such awards are to his credits. May I now invite Sir to address the gathering. Dear audience, please put your hands together to welcome the Chairman, Distinguished Speaker, Honorable Dr. A.S. Kumarji. Good afternoon to all of you. At the outset, I would like to thank Dr. Vishwanath Karad for arranging this program and inviting me to be part of this. If you look at humanity right from its as the human being started on this planet Earth, it has always been that he makes use of every tool available for him and to gain dominance and in some ways show that he is more capable and he can do many more things. So science provides him a tool, and we have seen that these tools are growing continuously. For example, today man has gone beyond Earth using the rockets and has gone into space. He has built telescopes and looks at universe, and all this has shown, both particularly when you have gone beyond Earth, what it has shown is how insignificantly small you are in this universe. If you look at, in spite of that, human beings think great of themselves and they think they have such a great role, they are such big designers, etc. But I would like to just give two points for this audience so that you can appreciate how things are changing. Today, the humanity or the human beings, we can explain to each other, telling how you as an individual work, what are the basic capabilities that you have, and using this capability, what you can do. At a time when science and technology was not so much evolved, there were great individuals who were able to explore inwards and then understand this. Today when we are building satellites and talking about going to Mars and other places, we are talking about building robots which can do the job for us. When we build these robots and build more and more functionalities into that, what we are doing is we are putting a control system in that, a set of actuators, and then sensing systems based on which they can do the functions we want. When we want to build more functions, we have to build more capability into that instrument. But then it's easy for us to realize that how do we communicate with that, and how do we want to make sure that it works for a long time there. We realize that whatever be our thought process, there is always situations where that robot can encounter in that Mars or any other planet that we have not thought of that solution. So when we want to deal with it, we think we can do it by building more intelligence. Today you are talking about artificial intelligence, and you have already heard how Alexa and other things can build greater capability. So we think about building more capabilities into this robot so that it can find solutions to the problem it faces, because it does not have enough time to communicate with us and survive beyond that. But then one of the designers was challenged, can you design a car which can reproduce itself by using the material which it finds around that? Everybody thought, what is this being talked about? But if you look at life around you, every life form, is it not doing exactly the same thing? Using the Panchabhutas, what we call, the same material in the universe, soil, air, water, fire, it is able to reproduce. But today, scientists and engineers are looking at bringing biological systems and mechanical systems together and trying to grow 3D printed systems, etc. It's all going. But the point of talking about all this is only to show you that individuals like us, human beings, have a certain intrinsic capabilities. If we are not able to tell the individual what those features he has and how he can take advantage of those features so that he can encounter the events in life and do a
live a good life, we are missing the point. This is where, while earlier it was being talked about, today if we were to map the functions of a robot to ourselves, we realize we have panchendriyas for sensing and 5 karmendriyas for our actions. We have a system which runs us, by taking the inputs and then giving signals and controls to our actuation systems and operate. And we also realize that right from our birth, all the information that we have through the sensors are stored inside us in a form which the system does. But then we also realize that this is not the only source of information from which we are run. Through our genetic path, when we are born, there is a huge amount of information which is residing. As more and more technology, brain research and body research is going on, it is showcasing that it is on the basis of all this that our system runs. But then today, all of you are also quite familiar that 2 mobiles can communicate with each other, they can communicate with a cloud system. That means there is a possibility that human beings who are much more evolved than any gadget we can think of also have the capability of communicating with things outside them. Outside them is a universe, and every individual, if you take as an entity, so in principle there are 3 sources of information on which the system which runs us can work. One is what we acquire during our lifetime, one which has come to us through our genetic path, third which we can communicate with this universe. And for communicating with this universe, we as a platform, if you look at, have to train. Like in the mobile, you have to have an antenna, you have to have a decoding system for receiving. It is possible that we also have those mechanisms. But for enabling ourselves to receive information from outside us, we have to prepare, and this is where yoga is supposed to be helping. Yoga is the process by which human beings can reach out to the universe and acquire information. So I can go on, but because of time, I'll stop here just to tell that every individual has this capability and potential. Just knowing is not adequate, but practicing it and bringing it into reality is important. That is where the real struggle occurs, and that is where, if you see rishis and munis, what they did, instead of exploring the external world, what we scientists and engineers are doing today and trying to showcase, they started looking inwards, and what has come to us through the genetic path, if it contains all the information, like Swami Vivekananda is supposed to have said, whatever is there to be known in this world is inside you. But then how to decode that? Today, science and technology may be showing small step by step, but by what time it will reach there, we don't know. But then if you explore yourself inwards, then probably you can reach there much faster, is what all saints have shown. So in the end, every knowledge, every skill that the humanity gains, there are people who make use of it for benefiting others, but there are also those who take advantage of this and dominate on others. And it is only when we realize that whatever we have is actually meant for collaborating, cooperating and living in harmony that we can do a better job on planet Earth. Not only that, we can survive longer. I should compliment Dr. Vishwanath Karad for bringing all the different people on a common platform and showcasing that if the world has to be lived in peace and harmony, it is only when we distinguish that science and all other aspects are not independent. Everything is same. For a long time, this land had that concept, but due to various educational processes, it got separated. But now you are bringing back that concept, and then we have the basic requirement of comprehending ourselves through whatever tools we have and using that for reaching out to, if there is one common entity which is running this universe, understand that. Thank you very much. Thank you sir, thank you so much dear audience. जोरदार तालियों की गूंज हो और खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देकर हम ऐसे सम्मानीय
गेस्ट का अभिनंदन करें, अभिवादन करें। ऑनरेबल डॉक्टर एस किरण कुमार जी, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, चेयरमैन इसरो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमारे बीच आए अपने व्यस्त शेड्यूल से और हमें लाभान्वित कराया। धन्यवाद सर। Now we are heading towards the end of this session. May I now quickly invite Associate Dean, Faculty of Peace Studies, Professor Milind Patre, to propose vote of thanks. Sir, please. Thank you so much. It was indeed a great session. It was the foundational pillar of MIT World Peace University and MITE's group of institutions about union of science and religion of spirituality alone will bring harmony and peace to mankind. And that was the theme session. And I'm extremely thankful to Honorable Chairman of the session, Dr. Kiran Kumarji, for blessing the session. I'm extremely thankful to all other guest speakers of the session, Honorable Swami Gyanvatsalji, Honorable Acharya Ji Lokesh Muniji, Honorable Dr. Loksam Sangeji, Honorable Dr. Firoz Bhakt Ji Ahmad Ji, Honorable Archbishop Felix Machado Ji, and Honorable Guruji, Venerable Bhikkhu Sansena Ji. It was such a wonderful session in the august presence of revered founder Dr. Vishwanath Kararji. Beautiful session. And there are many, many beautiful sessions coming up here also. The next session starts 30 minutes post this session after lunch break. You are all invited for a lunch. Just post this in a pentol outside this auditorium. The next session, the themes of the session is need to attain holistic sustainable development goals in pursuit of world peace, and there are galaxy of speakers in this session. Honorable Dr. Rajendra Shendeji, who is President of Terry Policy Center, Pune. Honorable Dr. Rajesh Dikshitji, he is a Vice Chancellor of Renaissance University, Indore, MP. Honorable Dr. Evelyn Lindnerji, she is from Germany, and Dr. S.N. Pathanji, Dr. Sandeep Upadhyayji, and of course Dr. Vishwanath Karad Sahab. So with that, we come to the end of this session. Please join for a lunch, everyone, just outside this hall in the pentol. Thank you so much. It's also very interesting. Somebody mentioned in the morning that Vishwanath Karad and Vishwanath Karadar is such a coincidence. और जगह व्यवस्था की है, आपको भी दे दो। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, आप चिंता मत करें। हमारा उत्सव में आप नहीं, हमारे उत्सव में आप पधारें।
Germany to please come and occupy the seat on the dais. I also take this opportunity to invite our distinguished speaker for the day, Honorable Dr. Rajesh Dixit, Vice Chancellor, Renaissance University, Indore, AP. Please come and join on the dais. Wholeheartedly, I would like to welcome you for this very, very unique, historic parliament. We are starting with the session very soon. We are waiting for the another speakers to come and join with the next speakers. We have with us Dr. Rajendra Shinde, former director with UNEP and Nobel Laureate awardee, the group Nobel Laureate awardee, Honorable Rajendra Shinde, UNESCO. Paris President Honorable Dr. Vishwashanti will be joining us very soon. Dr. Sanjay Upadhyay. I would also request all of the volunteers to quickly request all the participants to assemble in the hall. We are about to start a session. Thank you. खड्डू प्लीज बाहेर जा आणि लोकांना घेऊन ये. कराड साहेबांना निरोप द्या. खंडू आणि टीम सेशनची सुरुवात झाली आहे. I request all my volunteers to make it sure that all the delegates and participants should join us as early as possible. Dear audience, the theme of this session on day 2, session Vice Chairman ICCR New Delhi, Honorable Dr. Evelyn Lindner, co-founder of the World Dignity University Initiative, Germany. You would also be joined by distinguished speaker Honorable Dr. Rajesh Dixit, Vice Chancellor Renaissance University, Indore, MP. And the chairman would be distinguished speaker Honorable Dr. Rajendra Shinde, President, Chair Policy Center, PUNE. We would start our session shortly as soon as we see the other dignitaries here. Thank you so much, dear audience. I once again request all the volunteers to quickly address all outside and ask them, request them to join us in this Trambakeshwar Hall, the Kashi-Vishwanath corridor. We are about to begin the session. Thank you so much. Shashi, I suggest you to quickly go to the lunch pendulum and announce that session is going to start in a few minutes. Can we play the session film, please? Session film. We can repeat it again. Please play the session film. This session is based on the need to attain holistic sustainable development goals. Sound please. The Sustainable Development Goals define the world we live on. They apply to all nations
can only be realized with strong global partnerships and cooperation. The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. Leaders across the world have a monumental opportunity to reduce inequality, end poverty, protect the environment, and promote justice and peace in implementing Sustainable Development Goals. Goal 16 focuses on peace building, and in this session, we propose to discuss how partnerships, SDG 17, can enhance the opportunities for world peace. I once again all the participants to quickly join us individuals and organizations in the hall, the seminar hall quickly so that we can start the session. Tolerance. I request all the volunteers to quickly rush to dining hall and request all participants to be here so that we can start a session. Shashi, please do one favor. Please go outside and inform everyone. I request my technical team to play the AV of World Peace Zone, please. Honorable Dr. Rajendra Shri, Chairman of this session of Sustainable Development, I request him to please occupy the seat of the dais. काल गणना से पहले भी मैं था और आगे भी रहूंगा। विश्व का निर्माण कैसे हुआ? विश्व निर्मित की प्रक्रिया क्या थी? इस प्रचंड ब्रह्मांड का रूप कैसा है? क्यों इसमें एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीव सृष्टि निर्माण हुई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरी साधना करने पर ही मिलते हैं। गत हजारों वर्षों से बुद्धिमत्ता का वरदान प्राप्त जीवों ने मेरी साधना, मेरी आराधना की है। मेरी खोज करके ही खुले हैं इस विश्व के अनेक रहस्यों के भेद। मैं एक ऐसा अक्षय तत्व हूं जो कहीं भी किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन से ही उसने ज्ञान की साधना आरंभ। पिछले सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर अनेक महान मानवों ने मेरे माध्यम से नए आविष्कारों को जन्म दिया, नई खोज की। इस पृथ्वी पर अनेक देश हैं। I request the volunteers outside to kindly जहां पर पिछले कई वर्षों से encourage all the participants to come to the seminar hall as soon as possible. We are about to start. Thank you. महान ऋषियों ने, संत महात्माओं ने जन्म लिया। ज्ञान तपस्या के माध्यम से विश्व के रहस्यात्मक तत्वों का प्रकटीकरण किया। इनमें से एक है महाराष्ट्र में जन्मे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिनका जन्म आज से 745 वर्ष पूर्व हुआ और जिन्होंने अपने 30 वर्ष के छोटे से जीवन काल में मेरे सत्य रूप को लोगों के सामने रखा। जिस श्रीमद् भगवद गीता को ज्ञान का भंडार माना जाता है, उस भगवद गीता के अंतरंग
संत ज्ञानेश्वर जी ने केवल 16 वर्ष की आयु में भावार्थ दीपिका अर्थात श्री ज्ञानेश्वरी के रूप में मराठी भाषा में लोगों के सामने प्रकट किया। संत ज्ञानेश्वर केवल एक I request Honorable Dr. S.N. Pathan, sir, former Vice Chancellor, Nagpur University, to kindly join us on the stage, sir. मानव जाति को समझाने वाले Dr. अत्यंत S.N. Pathan, sir. दार्शनिक तत्ववेत्ता भी थे। 1400 वर्षों की कठोर तपस्या से प्राप्त ज्ञान की घमंड में हिंसक शेर पर आरूढ़ श्री चांददेव महाराज से मिलने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक अचेतन दीवार को विवेक की शक्ति से चलाकर उनका गर्भहरण कर दिया था। ज्ञान तत्व की शक्ति का शायद ये एकमात्र उदाहरण है। भक्ति पंथ के उद्गाता महान वारकरी संप्रदाय के अन्वेषक सही अर्थ ज्ञान के ईश्वर जिन्हें लोग आज भी माउली अर्थात मां के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे संत ज्ञानेश्वर ने अपनी आयु के केवल 21वें वर्ष में ये कहकर संजीवन समाधि में प्रवेश किया कि उनका जीवन कार्य अब समाप्त हुआ है। इस महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के नाम पर अवतरित हुआ है विश्व का सबसे बड़ा और भव्यतम गुंबद तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्वशांति प्रार्थना सभागृह एवं विश्वशांति ग्रंथालय एक ऐसी वास्तु जो मेरा अर्थात ज्ञान तत्व का सर्वांना विनंती आहे की लवकरात लवकर स्थानापन्न व्हायचं आहे जेणेकरून आपण आपलं सेशन वेळेत सुरू करूया। मानवों की प्रतिभाएं The session मेरी खोज में begins shortly. जीवन व्यतीत किया और वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। 160 फुट व्यास तथा 263 फुट ऊंचे इस विश्व शांति गुंबद में स्थापित है महात्मा तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अखंड तपश्चर्या की यहाँ पर स्थापित है। We are being joined by the UNESCO chairholder Professor Dr. Vishwanath Karat, sir, the founder and chief patron, MAEER Pune, and President World Peace University Pune, Bharat. Dear audience, please welcome with a round of applause Professor Dr. Vishwanath Karat, sir. I also request Dr. Sanjay Upadhyay to please come and join the dais. I welcome Dr. S.N. Pathan sir. Swagat. Chairman of the session, Honorable Shri Rajendra Shinde ji. Thank you so much. The dignitaries have arrived here. Dear audience, please put your hands together to welcome all our esteemed guests for this session 6. Theme would be Need to attain holistic sustainable development goals in pursuit of world peace. I welcome UNESCO chairholder Professor Dr. Vishwanath Karat, sir, founder and chief patron. And now, with the permission, let me begin with the session. May I now request my technical team to play the Shankha Dhwani, the sound that is propitious and eliminates all the weekend noises from our mind and blesses us with the energy. Technical team, Shankha Dhwani, please. Om Shankaya Namaha.
Thank you, my technical team. It's time for Om meditation. I request everyone in the audience, on the dais, off the dais, to close your eyes and wholeheartedly participate in the Omkara meditation. May I request my technical team to relay Omkar sound. Gently rub your palms, create energy, apply on your face, and experience the bliss of Omkara in this holy corridor of Kashi. MIT has always maintained the spirit of Atithi Devo Bhava, and I thank all the dignitaries for being here with us. As a part of tradition, may I now request Honorable Dr. Vishwanath Karat sir, founder and chief patron of MAEER's group of MIT, to felicitate today's guest speaker. So may I request Dr. Vishwanath Karat sir to felicitate, yes, Dr. Rajendra Shende, the chairman of this session. Former director in UNEP, United Nations Environmental Process. A proud winner of Nobel Peace Prize citation. I request sir to felicitate Honorable Dr. Evelyn Lindner, co-founder of the World Dignity University Initiative, Hamelin, Germany. She has traveled from Germany to participate in this World Parliament. Please put your hands together, dear audience. A huge round of applause. May I now request sir to felicitate Dr. Rajesh Dixit, Dr. Rajesh Dixit, Rajesh Dixit ji, Vice Chancellor, Renaissance University, Indore, MP. Please keep clapping, dear audience. Now it's time to felicitate Dr. S.N. Pathan sir. May I request sir to felicitate Dr. S.N. Pathan sir. Former Vice Chancellor, Nagpur University and Vice Chairman of ICCR, New Delhi. And finally, may I request sir to felicitate Dr. Sanjay Upadhyay, the Vice Chairman of this session. Dr. Sanjay Upadhyay, an advisor to MIT World Peace University. Put your hands together. Thank you so much.
Thank you, sir, for doing the honors and felicitating all our guests. Thank you so much, everyone. May I now invite Dr. Sanjay Upadhyay, Advisor, MIT World Peace University, to address us in his welcome address, sir. हेलो, नमस्कार मंच पर उपस्थित सब महानुभाव, और कल भी इसी समय मैं आपके सामने खड़ा था भोजन पश्चात। घड़ी चालू की? अभी का जो चर्चा का विषय है वो भगवान विष्णु की तरफ जाता है। सस्टेनेबिलिटी का जो सवाल है वो उत्पत्ति स्थिति लय में स्थिति के साथ जाता है, और ये स्थिति के साथ जाने के लिए कैसी मनोवृत्ति होनी चाहिए, इसके बारे में भगवद गीता में एक श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये व्यवसायात्मिका बुद्धि जो है वो ये बुद्धि सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, जहां तक मन शांति का सवाल है। दो तरीके की बुद्धि है, व्यवसायात्मिका बुद्धि है और दूसरी है बहुशाखा बुद्धि। और ये जो बहुशाखा बुद्धि है वो चंचल रहती है, और व्यवसायात्मिका बुद्धि है वो दृढ़ रहती है। हम अक्सर आजकल कहते हैं आपका व्यवसाय क्या है, तो वो जो पूछते हैं किसी से आपका व्यवसाय क्या है, उसका मतलब आप पैसे कहाँ से कमाते हो, इतना ही अर्थ हम लेते हैं। सच्चाई ये है कि आपकी एबिलिटी और आपका काम, इन दोनों का रिश्ता क्या है, उस पर व्यवसाय निर्भर करता है। और इसीलिए दृढ़ निश्चय से जो काम किया जाएगा उसे ही व्यवसाय कह सकते हैं। कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ इसका विचार न करते हुए मेरी जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के हिसाब से मैं अगर काम करता हूँ तो ही मैं व्यवसायात्मिक बुद्धि में रहता हूँ। और इसलिए ये हमें समझना चाहिए। आप एवरी ह्यूमन इज वी आर ऑल ह्यूमन क्रॉप्स, मैं कहता हूँ। हर एक आदमी का प्रयोजन अलग अलग है, क्यों बना है हर एक आदमी, उसका कारण अलग अलग है। अगर आप मिक्स करोगे जो आदमी जिसके लिए बना है उसके बजाय और कुछ काम करके ले जाओगे तो सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा। अगर जाड़ा चावल मिलता है और दिल्ली राइस मिलता है, अगर आप बिरयानी बनाओगे जाड़े चावल से तो नहीं बनेगी, लेकिन आपको दिल्ली राइस लगेगा बिरयानी बनाने के लिए। इसका मतलब वो जो बासमती राइस है या दिल्ली राइस है उसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रयोजन जाता है बिरयानी की तरफ, और जाड़ा चावल जो है उसका प्रयोजन जाता है इडली की तरफ। कहने का मतलब ये रहा कि अगर मैं हूँ तो मेरा कुछ तो प्रयोजन है, और मेरा प्रयोजन क्या है जिस क्षण हम जान लेते हैं तभी संत ज्ञानेश्वर का कहना है कि अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन तुझे तुझं ध्यान कळवाले। सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है, तुझे तुझं ध्यान कळवाले। वो सेल्फ रियलाइज होने की आवश्यकता है, और वो होने के बाद सस्टेनेबिलिटी शुरू होती है, तब तक नहीं होती। मेरा प्रयोजन क्या है, ज्ञानेश्वर माऊली में मराठी में बोल रहा हूँ जो वर्ष है वो, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं का साड़ीचा कणू म्हणे मी नुगवे साड़ी पणे। जैसे आसान करने की कोशिश करता हूँ कि आम का बीज है, और आम का बीज अगर हमने जमीन में बोया और जमीन में जाने के बाद अगर आम का बीज कहता है मैं टमाटर करके बाहर आता हूँ, सो दैट इज नॉट अलाउड। आपको आम करके ही बाहर आना है। ये जो नेचुरल कंपल्शन है, आसक्ति है, ये शक्ति नहीं है, ये बाहर से कंपल्शन नहीं है, अंदर से कंपल्शन है। और ये अंदर से कंपल्शन हम स्वतंत्र में जब करेंगे तभी सस्टेनेबिलिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इसलिए हम जब जी रहे हैं आज, तो मन शांति इसलिए नहीं है मनुष्य को क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो क्या है। वो जिस दिन मालूम हो जाएगा तो ये व्यवसायात्मिका बुद्धि से मालूम होगा। 18वें अध्याय में भगवद गीता में दैव चैवात्र पंचमम, ऐसा श्री कृष्ण कहता है अर्जुन से। क्यों कहते हैं श्री कृष्ण ऐसे? क्योंकि कर्ता पहले मैं हूँ,
फिर करण यानी कि प्लानिंग कैसे करना है, फिर 3 नंबर पे आती है कृति एक्चुअल एक्शन, फिर 4 नंबर पे आएगा अधिष्ठान, मतलब मैंने कृति करने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिला फिर भी मैं करता रहा हूँ क्योंकि वो मेरा अधिष्ठान है, वो मेरा कैरेक्टर है। और फिर लास्ट में जो आता है उसमें दैव चैवात्र पंचमम, फिर नसीब का बात है, तब तक नहीं है दैव का। पहले 4 स्टेज पे तो हम ही हैं, मुझे ही सब कुछ करना है। अगर मुझे ही सब कुछ करना है तो उसे कहा गया है तितिक्षा। बहुत बढ़िया शब्द है प्रतीक्षा का और तितिक्षा। सस्टेनेबिलिटी में तितिक्षा की आवश्यकता है, प्रतीक्षा का कोई कुछ उपयोग नहीं है वहां पे। तितिक्षा मतलब क्या है, 5 मिनट है और प्रतीक्षा का मतलब यह है कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, बस की राह देख रहा हूँ और बस चलाने वाला ड्राइवर डेपो में देरी से पहुंचा इसलिए बस देरी से निकली। अब जो मेरा समय मैं वेट कर रहा हूँ वो वेटिंग पीरियड है, दैट इज कॉल्ड प्रतीक्षा। बिकॉज उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता वो ड्राइवर रहा क्योंकि उसके डिले की वजह से मुझे डिले हो रहा है। तितिक्षा का मतलब यह है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं करना चाहता हूँ। मुझे चपाती चाहिए तो मैं बाजार में जाता हूँ, गेहूँ लाता हूँ, वो गेहूँ पीस के लाता हूँ, फिर उसका चपाती बनाने के लिए आटा तैयार करता हूँ, फिर स्टोव चलाता हूँ, फिर चपाती करके खाता हूँ। तो गेहूँ लाने से चपाती खाने तक का जो समय है वो प्रतीक्षा नहीं है क्योंकि कर्ता मैं ही हूँ। सस्टेनेबिलिटी में ये कर्ता जिसे समझ आया उसको वो सस्टेनेबिलिटी समझ आएगी। भगवान विष्णु का कहना वही है, इसलिए संभवामी युगे युगे क्यों, भगवान विष्णु का ही अवतार है, वो वजह वही है उसकी। तो इसलिए ये प्रज्ञा और मेधा का सवाल है। बुद्धि में और 2 तरीके, एक है प्रज्ञा और दूसरी है मेधा। व्हाट इज मेधा? मेधा इज इंस्टिंक्ट एंड प्रज्ञा इज बुद्धि, विजडम। प्रज्ञा मनुष्य के साथ जाती है और मेधा जो है वो जानवर के साथ जाती है। जानवर के पास क्या चीजें हैं? वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स। ये जानवर के पास भी है, वो मनुष्य के पास है, लेकिन पहले मनुष्य आएगा और फिर प्राणी आएगा। तो हम सब लोग क्यों बैठे यहाँ पे? मनुष्य प्राणी। हम प्राणी मनुष्य नहीं है, पहले मनुष्य है फिर प्राणी है। तो ये सस्टेनेबिलिटी की बात आती है। इसलिए गणपति तैयार हो गया। हाथी का शीर्ष है और हाथी का शीर्ष हिलता रहता है बार बार, आंखें ऐसे करता है, कान हिलाता रहता है, सूंड हिलती रहती है। उसका शीर्ष को क्या कहते हैं? थर्व शीर्ष। थर्व मीन्स हिलता हुआ। वो थर्व को शीर्ष निकाल के जब द्विपाद पे लाया, चतुष्पाद से द्विपाद पे मतलब जानवरों से मनुष्य पे लाया गया, तब वो स्थिर हो गया क्योंकि बुद्धि अंदर आ गई। फिर अथर्व शीर्ष हो गया। अथर्व शीर्ष इसलिए हो गया, सस्टेनेबिलिटी का सवाल है अथर्व शीर्ष में। और बस वही चाहिए। हम कहते हैं ना ये सिरफिरा आदमी, सिरफिरा मतलब थर्व शीर्ष है, वो जानवर की तरह काम कर रहा है, उसको मनुष्य में लाना होगा, इंस्टिंक्ट को इंटेलेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना होगा। सस्टेनेबिलिटी की बात जो है वो इस तरह से हमें लानी है। इसलिए ये व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि जो है वो करना है। और वही अर्जुन को कहा जाए, अर्जुन चंचल मन में है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है उसके एबिलिटी की। और मैं तो सभी से कहता हूँ कि डोंट मेक योर एबिलिटी एन एसेट। अपनी एबिलिटी उसको एसेट मत बनाओ। द मोमेंट यू मेक इट एन एसेट यू बिकम ओनर ऑफ योर ओन एबिलिटी। और एक बार ओनर हो गया और एसेट बन गया तो एवरी ईयर बैलेंस शीट में 10% डिप्रिसिएशन। ये जो 10% डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में आता है वो अगर नहीं लाना है अपनी एबिलिटी में, तभी सस्टेनेबिलिटी तैयार होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो वो कोशिश करनी है हमें। आज जो टॉपिक ये बड़े महानुभाव यहाँ पे बात करने वाले हैं, सुना है मैंने ये बेल अभी सुनिए। वो पिछले सत्र में जो स्वामी थे वहाँ भाषण कर रहे, उन्होंने बहुत अच्छा ह्यूमर पकड़ा उसमें। उन्होंने कहा ये बल बज रहे वो मेरे भाषण के एप्रिसिएशन में है या रोकने के लिए है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये अप्रोच की बात है, वही बोल रहा हूँ मैं। द वे यू लुक एट द सिचुएशन, वही तो बात चलती है, हम कैसे देखते हैं इसकी तरफ, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार वो दृष्टि आ गई हमारे पास में, अंतर्दृष्टि है वो, आसक्ति है वो, आशय जो है, शय बाहर का है, आशय अंदर का है, शक्ति बाहर की है, आसक्ति अंदर की है, नंद बाहर का है, आनंद अंदर का है, चरण बाहर के हैं, आचरण अंदर का है, वेग बाहर का है, आवेग अंदर का है। ये आ जो लगता है वो सब अंदर से बाहर चला जाता है। ये अंदर से बाहर जाने की प्रक्रिया जिस क्षण शुरू होगी ना, तब सस्टेनेबिलिटी मालूम होगी, तब तक नहीं होगी। जब तक हम राह देख रहे हैं कि बाहर से कुछ अंदर आए, तब तक गड़बड़ है। फिर बॉबी पिक्चर जैसा हो जाएगा, अंदर से कोई ना बाहर जा सके
एंड बाहर से कोई अंदर ना आ सके, फिर मनुष्य नहीं रहेगा, वो फिर जानवर की तरफ जाता है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि ये जो सेशन हम सुनेंगे वो व्यवसायत्मिका दृष्टि से सुनने की कोशिश कीजिएगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि से सुनने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि अक्सर मैं जब यहाँ घूम रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे हंसी क्यों रहती है। स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता पहली ही जो है। तो खाना हो गया आपका, थोड़ा हंसी लाओ चेहरे पे, तृप्त हो गया है संत, हाँ, गंभीर चेहरा मत करो। Thank you, sir, for beautifully setting the tone of this session. As always described by Honorable Founder Father, it is Sanjay Uvacha. Thank you so much, sir. Now, may I now request my technical team to relay a short film, a curtain raiser video on the theme of this session. Technical team. This session is based on the need to attain holistic sustainable development goals in pursuit of world peace. The Sustainable Development Goals, SDGs, define the world we want. They apply to all nations and mean quite simply to ensure that no one is left behind. The SDGs can only be realized with strong global partnerships and cooperation. The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. Leaders across the world have a monumental opportunity to reduce inequality, end poverty, protect the environment, and promote justice and peace in implementing Sustainable Development Goals. Goal 16 focuses on peace building, and in this session, we propose to discuss how partnerships, SDG 17, can enhance the opportunities for world peace. We will be looking at various individuals and organizations who have created grassroots networks focused on human rights, tolerance, and peace. Thank you, my technical team. It's time to invite the first speaker of the session. I take this opportunity to introduce Dr. S.N. Pathan to you all. Dr. S.N. Pathan has a unique combination of an excellent academic career coupled with outstanding achievements in academic and administration. Started his career as a lecturer and head of the Department of Botany at Varanasi, later served as a principal in Pune for 5 years, and then joined as a principal of esteemed Government College of Commerce and Economics at Mumbai. Later he was elevated to the prestigious position of Director of Higher Education Maharashtra State in 1999 till 2005 July. Sir encouraged over 1,000 colleges to the top terms of the norms of accreditation through NAC, and also had additional charge as a Vice Chancellor status of Deccan College Pune. For the first time in the history of Maharashtra, Dr. Pathan had the privilege of being the Vice Chancellor from the minority community in the 84-old prestigious university, that is Nagpur University. We are very happy and honored to welcome Sir. May I now invite Dr. S.N. Pathan, Sir, to address the gathering. Please put your hands together, dear all. Dr. S.N. Pathan, former Vice Chancellor, Nagpur University, Vice Chairman, ICCR, New Delhi. Sir, over to you. Thank you very much. Most respected Professor Dr. Vishwanath Karad Sahab, Honorable Dr. Shende ji, you might be knowing that Professor Shende Sahab is the member of the Nobel Laureate Committee which has got the Nobel Laureate on environmental protection. So he is one of the very important members and he is chairing the session. Sir, I know that when you are sitting, there is no need to speak, but he will give us detailed information. Honorable speakers and my friends, I will use both the languages, in Hindi or English. My friends,
प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ साहब ने जो ये वर्ल्ड पीस का यज्ञ शुरू किया है कि दुनिया में हम शांति चाहते हैं, उसकी एक दूसरी बाजू है, नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, कि आज हमारे सामने जो हमारे गोल्स है, सस्टेनेबल गोल, आज का जो एक नेचुरल एक सिचुएशन इस पृथ्वी पर है, वो दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है और उसके परिणाम हमें दिख रहे हैं। जैसे मैं एक बात कहूँगा कि से फॉर एग्जांपल वाटर, आपको मालूम होगा कि अपना जब बचपन याद आता है मुझे, तो हम लोग ऐसे जाते थे गांव में और जहाँ पानी मिला वहाँ पानी पीते थे। हमने कभी ये सोचा नहीं कि ये पानी खराब है, ये पानी गंदा है, ये पानी फला है। हम होटल में कभी पूछते नहीं थे कि ये पानी अच्छा है या खराब है। आज हम लोग इतने यहाँ पे है गंगा नदी के किनारे, जो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है, लेकिन पानी हम गंगा जी का नहीं पी रहे, पानी हम बोतल का पी रहे हर एक को, क्योंकि इतना पानी हम लोगों ने खराब कर दिया। There is a survey by the government of India that most of the rivers from India or Maharashtra, the oxygen percentage in the water is hardly 2 ppm या 2 to 4 ppm. अगर वो 0 ppm हो गया तो समझ लो कि पानी मर गया. It is a dead water. Our rivers will have the dead waters. मैंने देखा है Dead Sea in when I had been to तुर्कस्तान. तो Dead Sea में कुछ नहीं है. There is no living organism. कुछ नहीं है, सिर्फ पानी और मिनरल्स. आज भी हम पुणे को जाते हैं, पुणे के ब्रिज के ऊपर से तो इतनी खराब स्मेल आती है. वो नदी का पानी है, नीचे नदी है. हमने हमारे देश का पानी खराब कर दिया. गंगा जी का प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे देश में. मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फिर भी गंगा जी का पानी ये बहुत पवित्र है, इसलिए कि भगवान ने यहाँ पे काशी विश्वनाथ ने ऐसा एक चमत्कार करके दिखाया है कि गंगा जी जो गंगा रिवर है, से फॉर एग्जांपल एक 5 और 10 किलोमीटर लंबी, उसमें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे कोई नदी में नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे है. आई एम टेलिंग यू टेक्निकली, साइंटिफिकली, बिकॉज आई एम एनवायरमेंटल साइंटिस्ट. क्योंकि कुछ भी डिसीज जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया को मारने वाले बैक्टीरियोफेजिस एक वायरसेस है. जैसा अभी कोविड था, एक वायरसेस था. ये सिर्फ गंगा नदी के, ये गंगा के रिवर में 10 किलोमीटर अंतर पे मिलते हैं. वहाँ का पानी पी लो, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है. और पानी लेकर भी गए तो बैक्टीरियोफेजिस है उसमें, वो बैक्टीरिया को मार देंगे. ये भगवान की तरफ से है. इसीलिए गंगा का पानी लोग ले जाते, गंगा जल करके और सबको देते. ये अन्य जगह पे नहीं है. मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा पानी इतना खराब हो गया है कि ये पानी हो सकता है कि आने वाले 10-15 साल में डेड पानी हो जाएंगे. वाटर यानी यूजलेस वाटर. और इसीलिए फिर और वर्ल्ड वार हो जाएगा पानी के लिए. लोग कहते हैं कि थर्ड वार जो होने वाला है वो सिर्फ पानी के ऊपर होगा. इसीलिए अगर हमको प्योर वाटर देना है तो जैसे कहा गया है कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी क्या है, वैल्यूज क्या है जीवन के, नॉट ओनली एजुकेशन. माननीय कराड़ साहब हमेशा कहते हैं कि बुद्धि का सिर्फ विकास नहीं, तो बच्चों को हमको अभी ये भी सिखाना चाहिए कि हमको ये पानी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए. हम गंगा की आरती करते हैं, हम नदियों की आरती करते हैं, नदी को माता मानते हैं, फिर पानी क्यों खराब करते हैं हम? ये हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, और ये सस्टेनेबल गोल है. इसके बगैर वर्ल्ड पीस नहीं आएगा. मैंने देखा हूँ, आई हैड बीन टू ऑल यूरोपियन कंट्रीज, खासकर जिनेवा में जब हम जाते हैं तो जिनेवा की सिटी से, सेंटर से रिवर बहती है. कितना ब्यूटीफुल पानी है. कोई गंदा कोई पानी में नहीं, कचरा नदी में नहीं डालेगा. हमारे यहाँ तो ये
प्रैक्टिस हो गई है। तो अभी हमको वर्ल्ड पीस सेंटर के जरिए और विश्व शांति लाने के लिए ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। ये जापान में किया जाता है। जापान में बच्चों को अप टू 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 1st स्टैंडर्ड से लेकर नदी पे ले जाते हैं। उनको कहते हैं खेलो, बच्चे बहुत खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर पूछते हैं आपको मजा आ गया? बहुत मजा आ गया। फिर ये क्यों मजा आ गया? क्योंकि ये पानी अच्छा है अपनी रिवर का, इसको तुमको बचा के रखना पड़ेगा। हमारे शिक्षा में आज नहीं है। इसलिए करार साहब कहते हैं कि मैकॉले प्रेरित शिक्षा अब भी हम दे रहे हैं। अभी आगे हमारी एक 223 में अभी नई गवर्नमेंट पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है। लेकिन ये वर्ल्ड पीस के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको बच्चों को ये भी शिक्षा देना पड़ेगी। और ये बच्चों का कुछ समय हमको ये काम के लिए निकालना पड़ेगा कि चलो 2 घंटे रिवर पे चलो। ये अपना देश है, ये अपना देश हमको बहुत अच्छा रखना है, सुरक्षित रखना है, प्यारा रखना है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हिमालय फुटहिल की सर रिवर्स ड्राई हो गई है, उसमें पानी ही नहीं है। और जो पानी हमारे यहाँ पे बारिश का आता है वो सब समुद्र में जाता है। वो बारिश नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है। सब पानी नदियों में क्यों जाता है? क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट बहुत बुरे तरीके से कम होते जा रहा है। इट इज कॉल्ड दी डिफॉरेस्टेशन। हमारे यहाँ पे जो फिगर्स बताते हैं, आई एम टॉकिंग यू साइंटिफिकली, वो कहते हैं कि भाई भूभाग यानी जो लैंड कवर है वो हमारे यहाँ फॉरेस्ट का 23% है। दिस इज रॉन्ग। These are all satellite pictures which are also taken of the crops. Actually हमारे यहाँ 11% forest है, which is there in Japan 33% the cover of land under the forest. अभी हमको ये बच्चों को बताना पड़ेगा कि वर्ल्ड पीस के लिए हमको फॉरेस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ए ग्रेट नीड ऑफ दिस वर्ल्ड पीस। आज फॉरेस्ट नहीं रहने से क्या हो रहा है? जितना इस जमीन पर बारिश का पानी आता है पर्वतों पर, हिल्स पर, वो सीधा निकल के जाता है। और वो सीधा जाता नहीं है, जाते वक्त जो फर्टाइल मिट्टी है साथ में ले जाता है। और इसीलिए हमारे डैम भी खतरे में है। सब हमारे डैम मिट्टी से भरते आ रहे। अगर हम वो डैम को 10 साल ख्याल नहीं देंगे तो हमको वो डैम बनाने को जितना खर्चा है उतना डैम में से मिट्टी निकालने को उससे ज्यादा खर्चा आएगा। नहीं तो पानी नहीं मिलेगा हमको, हमारे डैम मिट्टी से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके स्लोप्स पर फॉरेस्ट ही नहीं है। मेरे गांव, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो हम लोग हमारे गांव के हिल्स को जाने को डरते थे बच्चे, इतना फॉरेस्ट था। एनिमल्स थे कुछ वहां पे। आज एक भी पौधा नहीं, एक भी पेड़ नहीं है, नेकेड है सब हमारे हिल्स। अभी ये काम अपने को इंस्टीट्यूशन के जरिए, जैसे कि माननीय कराड़ साहब ने वर्ल्ड पीस का नारा दिया और कहा कि अपने को दुनिया में शांति लाना है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से शांति नहीं आएगी। सुबह कहते थे वो हमारे अमेरिका के ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर, नहीं आएगी। अपने को अभी ये सस्टेनेबल गोल जो है वो अचीव करना पड़ेगा। नहीं तो आपको मालूम है कि पानी कम होते जा रहा है। पानी एक दिन ऐसा आएगा कि बारिश ही बंद हो जाएगी, लोगों को पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। और इंडस्ट्री कौन सी बचेगी फिर? सिर्फ समुद्र का पानी मीठा कर दो, पानी नहीं बचेगा, उतना ही काम रहेगा, सब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और इसी के लिए अपने को ये अभी स्कूल में बच्चों को सिखाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि माननीय कराड़ साहब ने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नाम का एक अभ्यासक्रम हमने बनाया है, सिलेबस, और बच्चों को हम अपने तरीके से, कराड़ साहब कहते हैं गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही ना, चलो अपन कर देंगे। और ये काम शुरू किया है जिसको उनको ये वैल्यूज पढ़ाई जाती है। लेकिन अभी ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आल्प्स पर्वत के
शिखर पर, जो दुनिया में माना जाता है फॉरेस्ट नंबर 1 फॉरेस्ट, यानी स्विट्जरलैंड में, वो ऑटोमेटिक खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है ऑटोमेटिक। अरे वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो गया? बोले वो प्लांट्स की जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड लेने की, उसका अन्न तैयार करने के लिए, वो प्लांट की कैपेसिटी खत्म हो रही है, वो मर जाएंगे अभी कुछ दिन से। और यू विल नॉट बी, आवर फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी सरप्राइज टू सी कि जो लोग, हम लोग आर्स का पर्वत देखने के लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट, कोनिकल फॉरेस्ट और पाइन्स कोन्स, वो सब खत्म होगा। इसलिए अभी से वहाँ शुरू किया है प्रोजेक्ट जर्मनी ने कि वहाँ C4 प्लांट यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले प्लांट्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और उसके जो बीज है वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से छोड़ रहे हैं। साइंटिस्ट आर कॉशियस। हमारे देश में क्या होगा फिर? हमारे देश में तो हमको फॉरेस्ट अभी बढ़ाना है, वहाँ फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट खत्म होने जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ये बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। शेंडे साहब पर उन्होंने काम किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इतना बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि बार बार कहते हैं कि बम्बई की हवा खराब हो गई है, दिल्ली में लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि हवा खराब है। एक टाइम ऐसा है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा कि ऑक्सीजन लेने के लिए हमको वो एक पाउच, ऑक्सीजन के पाउच, सुबह जब हम ऑफिस जाएंगे तो हमको यानी परचेस करके लेना पड़ेगा, या माँ बोलेगी बच्चे को कि ये ऑक्सीजन का पाउच तू लेके जा, और जब स्कूल में बैठेगा तो लगा। मेरे ख्याल से चाइना में कुछ जगह पे है, आज ही उनको लेना पड़ता है वो। और अगर फिर ऐसा हो गया तो फिर हमारे गार्डन में जो हम लोग घूमने जाते आज भी, वहाँ पे ये बड़े बड़े मशीन लगाना पड़ेंगे ऑक्सीजन के, आर्टिफिशियल, और फिर सिर्फ जिनके पास पैसे हैं उनको अंदर मशीन वो पे करके उनको गार्डन में छोड़ा जाएगा, वो ऑक्सीजन लेके बाहर आएंगे। गरीब लोगों का क्या होगा? तो पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। ऑक्सीजन, आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का इतना प्रमाण बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो पृथ्वी के बाजू पर ओजोन लेयर है उसको बड़े बड़े होल्स पड़ रहे हैं। होल्स पड़ने से क्या हो रहा है कि सन, जो सूरज की किरणें हैं जो फिल्ट्रेट होकर नीचे आती थी जमीन पर, वो डायरेक्ट जमीन पे आने लगी, और वो इतनी भयानक है वो रेडिएशन कि उससे स्किन कैंसर ऐसे डिसीज हो गए कि आदमी प्रेडिक्ट किया गया है, 40 साल के बाद में, कि 3 लोगों में से 1 आदमी को कैंसर होगा, यानी 30% लोगों को कैंसर होगा। आज तो परसेंट में हम नहीं बात कर सकते, हजारों में किसी को होता है, और फिर हम वो कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, दवा नहीं है। इतनी भयानक। वो जब सूर्य की किरणें निकलेगी, और वो जब हो गए, टाइम हो गया, ओके, आई एम कंक्लूडिंग। सूर्य की किरणें निकलेंगी और जब वो पड़ेगी हमारे क्रॉप्स पर, तो क्रॉप आएगा ही नहीं, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। फिर हमको ग्लास में गेहूं उगाना पड़ेगा, यानी ग्लास हाउस में, फिर लोग क्या खाएंगे? इतना पानी खराब है कि बंबई के समुद्र के पानी में पॉपुलेट फिश के अंदर मरकुरी यानी पारा मिल गया है, और वो जब हम खाते हैं तो शायद वो आदमी के पेट में जाएगा तो क्या होगा। तो मैं बस इतने ही कहता हूँ, बीइंग ए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, माय फ्रेंड्स, ये हमने, अब मैं क्लाइमेट चेंज पे नहीं बात करूँगा क्योंकि शेंडे साहब है, वो बड़ी अथॉरिटी है। तो आज भी हम देख रहे हैं भूकंप हो रहे हैं, कल तुर्कस्तान में भूकंप हो गया, 10,000 लोग मर गए, 20,000 लोग मर गए, और बहुत एडवांस कंट्री है। मुझे कराड़ साहब ने एक बार भेजा था वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, रिजॉल्विंग मंदिर मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, केस स्टडी ऑफ रामेश्वर रुई, ये कॉन्फ्रेंस में मैं गया था वो पेपर पढ़ने के लिए। तो वहाँ की हालात क्या है आपने देखे हुए, कोई कैसी बिल्डिंग नीचे आ गई। तो मैं यही कहूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से
कि जिस पवित्र नदी के किनारे हम बैठे, प्यूरिफिकेशन ऑफ गंगा वाटर का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हम वर्ल्ड पीस लाने के लिए ये कोशिश करें कि हमारे तरफ से एनवायरनमेंट को कोई खतरा ना हो जाए। हमारे बच्चों को ये शिक्षा हमको देना पड़ेगी, ये घर से हम किसको शुरुआत करना पड़ेगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कराड़ साहब को एज एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कि सर जो आप यहाँ पे काशी डिक्लेरेशन इस कॉन्फ्रेंस के बाद में देंगे, तो भाई दिस थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस एट ए प्री प्राइमरी लेवल, एट ए प्राइमरी लेवल, so we can attain the world peace. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. Thanks a lot, Dr. S.N. Pathan. May I now take this opportunity to introduce our next guest speaker, Honorable Dr. Evelyn Lindner, co-founder of the World Dignity University Initiative, Germany. Ma'am has 2 academic qualifications, PhD in social psychology and PhD in social medicine. 2 types of professional qualification, a medical doctor and clinical psychologist. Her study of psychology at the University of Hamburg includes field of social psychology and clinical psychology, which has a lot of elements which touch our lives, like encounter analytical group therapy, overview over behavior therapy, family therapy, marriage counseling, psychodrama, psychoanalysis, autogene training, and much more. She has also worked on as a professional part in the psychotherapy, which is a part includes group therapy at the Institute of Psychology at the University of Hamburg. She has also taught at various departments at the University of Oslo and Trondheim. To mention an important aspect that the research in the field of dignity and humiliation, expanding the doctoral fieldwork in Europe and Africa to include South Asia as well. Her teaching aids and giving lectures at the university around the world for the developing human dignity and humiliation studies. She is serving as the founding president since 2001. We are very happy to welcome you, ma'am, and I request you to address the gathering. Over to you, ma'am. Please put your hands together, dear audience. Dr. Evelyn Lindner, co-founder, World Dignity University Initiative, Hamelin, Germany. Thank you so very much for having me here. I would first like to thank Dr. Professor Vishwanath Karat for inviting me and for his amazing life work. I did not know so much about his work before, but now I come as the co-founder of the World Dignity University Initiative to the creator of the World Peace University. I think this is an amazing coincidence coming together. Thank you so much for having me here, and I greet the other members of the panel, and I greet the audience. Thank you so much for being here. I'm unfortunately not able to understand Hindi, but so I could not understand the words of many speakers, but I could understand the spirit. And the spirit is very much aligned with my spirit, even though I come from a completely different tradition, the European tradition. When Dr. Karan Singh spoke, he ended by saying we need a completely new social global society with a new level of consciousness. And this is exactly what I come to. This is my conclusion too, from a very different background. When we look at the word mankind, what do we see today? Many men are not kind. Many women are not kind. What we need is men and women coming together to be much kinder. What is lacking is kindness, is dignity. What we do instead of kindness is killing. I come from the Latin tradition, and there we have words like ecocide.
Ecocide means the killing of our ecosphere. Like suicide means the killing of self. Side means killing. We have ecocide and we have sociocide, the killing of the cohesion in our communities globally. So this is where we stand as a world. And if we continue like that, it will end in omnicide, Latin, the killing of everything. So what do we need? What is then peace? If we speak of peace, what is peace? My question to you, what is peace? I would like to share a story with you. As a clinical psychologist, a woman came to me who was depressed. Her social worker told me that her husband beats her regularly. The social worker went to her house and said to the woman, "Don't accept being beaten like that. You are being humiliated. You have a right to rise up. Remember the Human Rights Declaration adopted in 1948 that says all human beings are born free and equal in dignity and rights. It does not say all husbands are born equal and all wives are born unequal. No. So the social worker tries to empower the wife. Yes, thank you. Okay, thank you. The social worker tries to empower the wife to rise up. But of course we know that empowerment can go too far. The social worker should not empower the wife to kill the husband or to become the new oppressor in the house. So therefore, I do not use the word empowerment in my work. I use the word entrustment, because empowerment can go too far. So then comes the husband home, and he meets the social worker, and he is completely angry at the social worker and says, "Get out of my house. You bring conflict into my house. There was peace before. It is God given that my wife needs to be below me. I am the man in the house, the master, and it is my right to beat her. Get out. In this house we have peace until you come." And the wife says, "He is right. Beating me means that he loves me." So the social worker tries to explain to both the wife and the husband what equal dignity means. And I would like to show you what I think dignity is. Because I have heard that the terminology of dignity is not so used in India. It is in the preamble of the Constitution. But what is dignity? And it is very difficult to make an academic definition, perhaps impossible. So let me show you what I think dignity is. Let me invite Dr. Rajesh. Hello. Dignity to me. Hello, mic check. Hello. Dignity to me. Is it working? A bit louder. Dignity to me is unity in diversity. It's non-dualism, what has been talked about here in this conference a lot. Non-duality, it means we are two and one at the same time. This is for me dignity. And what the husband thought was peace, if you go down,
Go down, yeah. The husband thought that peace is the master-slave diet. He thought peace means that somebody is down and somebody is up. And the social worker tried to empower, to rise up the wife. But of course, the social worker did not want to create the opposite, like that the husband is now down. So now the sentence, all human beings are born equal in dignity and rights. Now we are equal. Now we are equal. Is this enough? Is this enough? It is not enough, because now we live in a world which is inspired by what I call the Wall Street mindset or the Wall Street spirit. It means we are like that. We are equal, but we are in competition. Everybody against the other in competition, which means it's not unity in diversity, it's division without unity. This is not enough, so we need to open our arms. This is the next step. However, we have to be careful and not choke the other, because this would be uniformity without diversity. What we need is unity in diversity. So this is my definition of dignity. Thank you. And if we now think of the development goals, do they support dignity? This is my question to you. Goal number 16, peace. I like the goals, except goal number 8. I would really encourage India to stop speaking of itself as developing, because what is developing? What is developed? If you look at goal number 8, you might not remember it. It shows an exponential curve. It's economic growth, an exponential curve that goes up, up, up. Have you ever seen that in nature? Does a tree grow into the sky? Do your sons and your daughters grow after they are 20? In nature, we have a balance at some point. We cannot have exponential growth. So I would say that this, what I call Wall Street spirit that is in goal number 8, has to be rethought profoundly. And I want now to read to you what I have defined as a term. Wherever I go in the world and I talk about communism or capitalism, I risk to be thrown out of the room. In certain contexts, capitalism is the word people get very angry at, and in other contexts is communism and people get very angry at it. These to me are cycles of humiliation from the past. I do not want to do that, to serve them. I want to look into the future. And I coined a new word, dignityism. And I want to read now to you how I define a world of dignity. Dignism describes a world where every newborn finds space and is nurtured to unfold the highest and best, embedded in a social context of loving appreciation and connection, where the carrying capacity of the planet guides the ways in which everyone's basic needs are met. It is a world where unity in diversity reigns, where we unite in respecting human dignity and celebrating diversity, where we prevent unity from devolving into oppressive uniformity and keep diversity from sliding into hostile division. Dignism means ending past cycles of humiliation and preventing new ones from emerging. Dignism means loving care for the common good of
all of humanity as co-inhabitants of one single finite habitat. Dignism weaves together all dignifying aspects of all the world's cultural traditions into one decent, dignified global village. Dignism speaks to the phrase Vasudhaiva Kutumbakam that has been engraved in the entrance hall of the Parliament of India. Vasudha means the earth, which means that Vasudhaiva Kutumbakam means that the entire earth is but one family. All its mountains and plains, its plants and its animals, including the human animal, the species Homo sapiens. Thank you very much. Thanks a lot, Dr. Evelyn, for that wonderful presentation on what you have been doing as a mission to contribute to the sustainable goal developments in the pursuit of world peace. Thank you so much, especially the presentation that was very much vocal. May I now take this opportunity to introduce our next distinguished speaker, Honorable Dr. Rajesh Dixit ji. Dr. Rajesh Dixit ji has completed his Doctor of Philosophy in Hindi, Masters of Philosophy in Hindi, Master of Arts in Hindi, Master of Arts in Economics. Sir has 4 years as a Vice Chancellor's professional experience in the Renaissance University, Indore, 12 years administration experience as a principal of renowned co-ed PG College in Indore, 30 years of experience in the field of higher education. He has been a group head, compliance, Renaissance Indira Group of Institutes. Yes, sir has achieved a gold medal in Faculty of Arts, 1 gold medal, 1 silver medal in Master of Arts, that is Hindi Literature. Sir has authored 4 books in Hindi titled Dr. Dharmavir Bharati ka Sahitya, Mujhe Irsha hai Samudra se, गीली लकड़ी की अनगढ़ आग और खिलाफ। मैं तहे दिल से सर का स्वागत करना चाहूंगा और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वे अपने विचार हमारे समक्ष रखे। डॉक्टर राजेश दीक्षित जी, वाइस चांसलर, रेनेसांस यूनिवर्सिटी, इंदौर। जोर थैंक यू सर। मैं नास्तिक हूँ, आई एम एन एथिस्ट। और हालांकि अब दुनिया में धर्म को त्यागने वाले की संख्या तीसरे नंबर की संख्या हो गई है, लेकिन इस गर्व के बिना मैं ये कहता हूँ हमेशा, या कहता था गर्व से कि मैं नास्तिक हूँ। लेकिन पहले विज्ञान का विद्यार्थी रहा, फिर साहित्य पढ़ा, फिर जब से अध्यात्म को जानने लगा, कहने का मतलब है जब से मोहब्बत को, प्यार को जानने लगा, मुझे ये कहने में भी संकोच होने लगा। क्योंकि आल्दो मैं जानता हूँ कि नेति से भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जो चारवाक्स हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो भी प्रायः नास्तिकों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे जब से अध्यात्म की तरफ गया या उसको जाना, तब से ये कहने में भी संकोच होने लगा। तो इन दिनों मैं दुविधा में हूँ, और मुझे इस दुविधा पर एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ने को मिली। शिव पार्वती की कहानी है, शायद आपने भी सुनी होगी। उन्होंने आंखें खोली तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान, इस बार इससे पहले कि आप फिर से तपस्या में जाएं, मुझे उस दुनिया को देखना है जिसे मृत्युलोक कहा जाता है। ये स्वर्ग की दुनिया है, यहाँ रहते रहते भी मैं समहाउ थोड़ी सी कहना चाहिए एक रस में हो गई हूँ। नीरस तो नहीं कहा एक रस हो गई हूँ। शिव जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा पार्वती क्यों देखना चाहती हो? उन्होंने कहा भगवान, मैं केवल एक बार देखना भर चाहती हूँ कि जिस मृत्युलोक के बारे में इतना कहा जाता है वो कैसा है। शिव जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा ठीक है चलिए। उनका जो वाहन था नंदी, उस पर बैठकर तीनों
चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं उनकी तरफ आ रहे हैं, और उनके पास से जब गुजरे तो कहा कि देखो कितने दोनों हष्ट-पुष्ट लोग हैं, लेकिन एक नंदी पर सवार हैं, क्यों नहीं जानवर को थोड़ा सा आराम करने देते। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती की तरफ देखा और वो उससे उतर गए और साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर बाद फिर और कुछ लोग मिले जो उनके पास से गुजरे हुए मुस्कुराते हुए कहा कि देखो कैसी स्त्री है, ऊपर तनी हुई बैठी है, पति जो है वो साथ में चल रहा है। पार्वती जी थोड़ी सी सकुचा गई, उन्होंने कहा प्रभु आप बैठिए। उन्होंने कहा नहीं पार्वती आप भी नीचे उतर आइए। दोनों साथ चलने लगे। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने आगे चलकर ये कहा कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, दोनों के पास एक वाहन है लेकिन फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। पार्वती जी की तरफ देखा शिव जी ने, शिव जी मुस्कुरा दिए और पार्वती जी अंततः शिव जी की पत्नी थी, समझ गई। उन्होंने कहा भगवान मैं समझ गई हूँ, वापस अपने ही घर की ओर वापस लौटें। मुझे समझ में आ गया है दुनिया क्या है, कि आप जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, जब भी करेंगे, कुछ उंगलियां आपकी तरफ उठी रहेंगी। तो जब मैंने पढ़ा कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे, और अच्छा से एक अनुवाद भी पढ़ा कि साथ ही खाएं, साथ ही खेलें, साथ करें हम अच्छे काम, जब तक न हो सबकी उन्नति नहीं करेंगे हम आराम। तो ये सबकी उन्नति क्या थी? और जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा वसुधैव कुटुंबकम जो महोपनिषद में था, तो पूरी वसुधा एक परिवार है, पूरी वसुधा, केवल आप और हम नहीं, केवल स्त्री पुरुष नहीं, केवल जो तीसरे जो जेंडर है वो नहीं, जो संपूर्ण चराचर है वो हमारा परिवार है। तो तब से मुझे फूल बो तो सकता हूं, उसको पानी भी दे सकता हूं, लेकिन जब फूल आता है उसको तोड़ने में मुझे कष्ट होता है, मैं उस फूल को तोड़ नहीं पाता हूं। और फिर जब मैंने ये पढ़ा कि ये जो मेरी दुविधा है ये पहली नहीं है, और ये पहले भी हो चुकी है। जब मैंने ये पढ़ा कि जापान की एक साम्राज्ञी थी, वो बुद्ध के मंदिर गई और वो खाली हाथ गई। उन्होंने बुद्ध से कहा कि जो तुम्हारी करुणा है उसका जो पाठ है, उसने मुझे ये सिखाया कि वो जो फूल है जो खिला हुआ, मैं उसको अगर तोड़ूंगी तो वो भी अहिंसा है, मैं कैसे तोड़ूं और कैसे लाऊं, इसलिए मैं खाली हाथ आई हूं। तो ये जो दुविधा है, ये जो मेरे अंदर या हम बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो दुविधा है, ये कहीं ना कहीं हमको उस पाथ की तरफ ले जाती है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। मन से, वचन से, कर्म से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों के साथ भी रहें, साहचर्य के साथ रहें, सस्टेनेबिलिटी के साथ रहें, उस करुणा के साथ रहें जिसको धारण करके हम विश्व मानव कहला सकते हैं। और जब मैं यहाँ ऐसे लोगों के बीच में आता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता ये कहने में कि मैं आप जैसा महसूस करता हूँ, मैं भी वो फील करता हूँ जो आप लोग फील करते हैं। मैं भी उन सब लोगों को गले लगाना चाहता हूँ जिनको आप गले लगाना चाहते हैं। और विवेकानंद जब कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, तो ये जो बोध है ये लगभग मैं वैसा ही पाता हूं जैसा मैं आप लोगों के बीच में आता हूं। और जब आप अपनी बात कहते हैं और आपकी बात किसी धर्म के लिए नहीं होती, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी सोसाइटी के लिए नहीं होती, पूरी वसुधा के लिए होती है, सबके लिए होती है, तो मैं थोड़ा सा राहत महसूस करता हूं कि एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। तो ये जो दीवानगी है जो हम सब लोगों को एक जैसी महसूस होती है, वो मुझे एक बात कहने के लिए मजबूर करती है, और जिसका आचार्य तुलसी हुए हैं
अणुव्रत जो एक आंदोलन हुआ है उसके आचार्य थे, और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा व्यक्तित्व, और ये जो इन दिनों ये जो AI का दौर है और चैट GPT का दौर है, इसमें उस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। और महान लोगों की हमेशा ये विशेषता होती है कि वो जब जो कहते हैं वो कालांतर में और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने उससे 40 साल पहले ये कहा था कि आप इस दुनिया में अब आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व की जरूरत होगी। बाहर से आप विज्ञानवादी हों, लेकिन अंदर से आप आध्यात्मवादी हों। तो ये जो अंदर से अध्यात्मवाद है और बाहर से विज्ञानवाद है, हम कोशिश करते हैं कि इसकी तरफ हम जाएं। लेकिन उसके बावजूद मैं एक कविता आपको अपनी सुनाना चाहता हूं, जिससे वो उन लोगों की भावना आप तक व्यक्त हो जाएगी जो आप जैसे बनना चाहते हैं। रोज रात को सोने जाते समय मैं खुद को नास्तिक पाता हूं। रात को सोने जाते समय नास्तिक पाता हूं, सुबह उठता हूं तो अनोखे विश्वास से भर जाता हूं। सूर्य को देवता पाता हूं, हवा, फूल, खुशबू, रंग और रोशनी, भावुक हिंदू हुआ जाता हूं। निकलता हूं घर से दुनिया की चकाचौंध देख घबरा जाता हूं। सादगी, फक्कड़पन से गुजरना चाहता हूं। जिंदगी सादगी और फक्कड़पन से गुजारना चाहता हूं। मुसलमान हो जाना चाहता हूं। इंसानियत की सेवा करके सिख हो जाना चाहता हूं। सूफियों से करता हूं बेहद मोहब्बत, ताउम्र सूफी हो जाना चाहता हूं। यीशु को देखता हूं अचरज से, किसी के गुनाह को माफ करके ईसाई हो जाना चाहता हूं। दोनों तरफ की अतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाना चाहता हूं। किसी को कष्ट न पहुंचे मेरे होने से, महावीर को अपनाना चाहता हूं। गोया कि हर पथ पर कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं, यायावर हो जाना चाहता हूं। लेकिन शाम को दिखने लगती है तलखियां हर मजहबी चेहरे पर। शाम को दिखने लगती हैं तलखियां हर मजहबी चेहरे पर। मैं घबरा कर घर लौट आता हूं। किसी घने जंगल में घुसकर आदिवासी हो जाना चाहता हूं। मरूं तो पारसी की तरह अंतिम संस्कार चाहता हूं। कोई शय मुकम्मल आती नहीं नजर, मैं अपनी नास्तिकता में सुख पाता हूं। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच करार सर का आभार आपका कि आपने इस लायक हमें समझा कि हमें यहाँ आमंत्रित करें। मैं आपको और राहुल सर को जब देखता हूँ, और ख़ास तौर से जब मैंने वर्ल्ड पीस डोम में देखा था, तो मुझे कृष्ण और अर्जुन की छवि नजर आई। मैं चित्रों में देखता हूँ, प्रतीकों में देखता हूँ। और आपके आशीर्वाद का हाथ हम पे हमेशा बना रहे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ डॉक्टर चिटनिस साहब का, जो मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर पांडे सर का, अविनाश जी का, पात्रा सर का, और उस पूरी इंटायर टीम का, जिन्होंने यहाँ पर बुलाकर हमको बहुत अच्छी मेहमान नवाजी दी, जबकि वो लोग खुद पूना से यहाँ पर आए थे। मैं ख़ास तौर से वो जो बच्चा है परम, जो हमारे साथ में है, उसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी मधुर वाणी से, खासकर वो कविता जिसने एक नया आयाम रचा हो। शुक्रिया। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द स्पीच ऑफ द distinguished chairman of this session, Honorable Dr. Rajendra Shende ji. I take this honor to introduce Dr. Shende ji. Sir is the former director in UNEP, United Nations Environmental Program. Sir has been coordinating lead author in IPCC, that is Intergovernmental Panel on Climate Change, that won Nobel Peace Prize. And Dr. Shende is a proud winner of Nobel Peace Prize citation. Sir has also won numerous awards, to name a few. 2 from the USA, 1 from Harvard, 1 from UK industry, lifetime achievement from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Currently, Sir is the director of Green Terre Foundation. Terre means earth in French, dedicated to implementation of SDGs in university campuses under a global smart campus cloud network that has 500 universities
including MIT World Peace University, Pune, and Beijing University. Please put hands together to welcome Honorable Dr. Rajendra Shende ji. Sir, over to you. Namaskar. I want to start with totally different thought. And the thought is very simple. The world is changing. We all know that. Each day is a different day. But here, I can see the real change when you go outside this room, what it was and what the transformation is. We see the same transformation inside the room as well. In the morning, we saw the various religious leaders, the thought leaders, all gathered together, mainly organized well by Dr. Vishwanath Karad, in one podium. That's what the world is changing. It's not changing only in a space which is made available to us outside this room, which was very congested earlier. It's not just a nice, inside the classroom, a nice spacious hall, but also all our minds are charged. What is impossible is becoming possible. And that is the change that is triggering. And I would like to say that it's not only the geographical space of Varanasi I'm talking about the change. I'm talking about the global change. In November 22, 8 billionth baby is born. We are now 8 billion. In January 23, we have become a most populous country in the world. Many will say is it good news or bad news? It all depends on how we make this opportunity into our advantage and benefit. We have also become a 5th largest country in terms of GDP in the world, where we were and where we have come. But it's not only the GDP. Look at our potential of the youth. We are the 3rd largest startup in the world. Startup is mainly the innovations, creativity that we do in order to get an economic benefit. But at the same time, it has been found that those startups, nearly 50% of them are related to the sustainable development and environmental protection. That's the change we are seeing. And remember, out of that startups, we are the 3rd largest startups, unicorns in the world. Unicorns means the startups which have already started getting a revenue of more than 100 billion US dollars. That is something amazing. And normally startups are not done by the people of my age. They are done by the university students, just freshers, maybe in their midlife. But that is the strength we are seeing. And what I am now saying that Dr. Vishwanath Karad is taking advantage of that change, that demographic dividend, to make sure that we transform this world into totally different space. He's heading the Educational Institute. And his institute, MIT WPU or MIT ADT and other schools. His university is a global. He wants to reach his thoughts to the much wider audience. And this is what is today we are needing it. What we need is those who are coming out of, I call it 3 C's: COVID, conflicts, and climate change. We just come out of that 3 pandemics. We didn't go through the one pandemic. There are 3 pandemics. One had a vaccine so we can survive. The other 2, conflicts and the climate change, they don't have vaccines. So our mindset change will be the vaccine. And that is what is being tried here since I have been watching this conference from yesterday onwards.
We are developing a vaccine for the remaining two pandemics, the conflicts and climate change. And those vaccines are going to be developed not in the Serum Institute, not in Oxford, not in Pfizer, but they will be developed in the institute and in the minds of the people like Dr. Vishwanath Karad. Leading to the sustainable development, I have found, and I think Dr. Pathan as well as other speakers have explained it well. And the video which was shown in the beginning of this, I really would like to congratulate the organizers of this session that it explained it well. I don't think I should spend much time in it. And with a limited time, I would like to say that if at all the conflicts, the second C that I talked about, is going to increase if we don't use our natural resources in a balanced way. Well, the definition of sustainable development is that development which satisfies the need of the present generation without compromising the needs of the future generation. In a simple language, it means that we have to use the natural resources in a balanced way so that, like a greed, we don't deprive the future generation from using them. And if we do that, if we deprive it, then there will be more conflicts. Today you take any conflicts, whether it is Ukraine, Russia, whether it is related to Syria or any other country, or whether it is related to even a regional between Maharashtra and Karnataka, is all about natural resource sharing. And like a greed, we want more. We want more energy, more natural gas, more petroleum. So we want Ukraine to be in our hand, so Russia shows the power. Same thing is going to happen. And due to the climate change, these conflicts are going to increase, as Dr. Pathan said. I worked on one of those conflicts, that is the ozone layer depletion. And unlike what Dr. Pathan said, the ozone layer protection problem has been solved. The ozone hole is getting sealed in a progressive way because we took the action. I was leading that global program, and that was one of the reasons why the IPCC put me as a coordinating lead author and get me into the citation. What is the reason? There's a partnership. The whole world entered into a partnership, understood that this is a focus, and did it. And I wish Dr. Vishwanath Karad does the same thing of getting partners along and start action. We talked a lot. We talked a lot in all our presentations, talks, and speeches. The time has come to act, and I'm going to suggest it. I'm going to suggest that if Vasudhaiva Kutumbakam is the theme of G20, this is an unparalleled conference which should make a declaration. I mean, of course, I heard that there will be declaration, but please consider adding into it that we are together, irrespective of our religion and philosophies, we are together to make sure that those who suffer in a war, you may take the name of the Ukraine or something, but we may take the war as one of the ways of telling that we are behind those who suffer. We don't have any other opportunity except this, where all the thought leaders have come together, and we should declare that we would like to make sure that such incidences don't happen in future, and those who are already suffering. And we know that United Nations Secretary General has gone on a record in saying that we don't see a solution to the Ukraine and Russia war. Absolutely. It's going to continue, he says. If it is there, then we need to make sure that the mindsets who are leading these wars need to change. And this is what our solidarity should say. We also should say that, look, we have the traditional knowledge in which we lived in peace with nature. So if at all any help is required, we can do that. We can bring all the thought leaders together and probably inform the similar thought leaders who are engaged in a war. I also would like to say that other actions, and I think one of the speakers yesterday mentioned it,
that we need to develop a network of pilgrim centers which we want to be the knowledge centers of tomorrow. And we should not just declare it, we should start acting on it. And frankly speaking, Dr. Vishwanath Karad has already initiated that. There is a sustainability studies center there and a smart campus cloud network there, which my organization is leading, where 500 universities are already members of that. MIT is already a member of that. And I feel that that should be the way to see the belief in a partnership. Network represents partnership, and that can also accelerate. Finally, I want to say that what we are gaining from this is we have to learn by doing it. We have to accelerate by sharing it. We have to monitor it by measuring it. And we have to speed up by